ಆಕರ್ಷ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವಂತ ಮಿನುಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೀಗ ಓಪನ್ ಜಿಪ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಮುದ್ದಾದ ಮಾತಾಡಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯೋಳು ಮೆತ್ತಾಗ ಮಣ್ಣನು ತೋರಿದ ಜಗವ. ಮುದ್ದಾದ ಮಾತಾಡಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯೋಳು ಮೆತ್ತಾಗ ಮಣ್ಣನು ತೋರಿದ ಜಗವ. ಎದ್ದು ಬಂದ ರಕ್ಕಸ ಕುಲವನೆಲ್ಲವ. ಎದ್ದು ಬಂದ ರಕ್ಕಸ ಕುಲವನೆಲ್ಲವ. ಒತ್ತು ಕೆಡಗಿದ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಗೊಲ್ಲ ನಿವನೇ ಸರಿ. ಯಶೋದೆ ಗೊಲ್ಲ ನಿವನೇ ಸರಿ. ಪುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಕಡಗ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಿಲಕದ ಒಟ್ಟು ಹಣೆಯಲಿ. ಪುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಕಡಗ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಿಲಕದ ಒಟ್ಟು ಹಣೆಯಲಿ. ತಟ್ಟಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರವ ನುಡಿಸೆ ಕೊಳಲಿನಲಿ. ನಿಂತು ಉಡುಪಿಯ ಮಧ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ
Hello, check, check. Hello, hello, check. Hello, check, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, hello. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವು ಆರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕರ ಪಾತ್ರ ಅವು ಈ ಪನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಸೀಸನ್ 5ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪಥಸಂಚಲನ ನೆರವೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಹಸ್ತಲಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೂಟ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಆಟಗಾರರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಳಾಯಿಯ ಆಟಗಾರರು ಇವರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರ ಸೀಸನ್ 5ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು ಕುಳಾಯಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ. ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕುಳಾಯಿಯ ಯುವಕರ ಆಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಯುವಕರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ. ಇರ್ಫಾನ್ ರವರು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮೀಡಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕುಳಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋದ ವರ್ಷದಂತೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲೋ, ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೌತ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೆಪಿಎಲ್ 5ರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭಾರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ಮೊಹಿದೀನ್ ಬಾಬಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವರುಣ್ ಚೌಟ ಮಾನಪ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಕುಳಾಯಿ ಇವರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸೀಸನ್ 5 ಕೆಪಿಎಲ್ 2023 ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿತ್ತುಬಾಡಿ, ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ದು ಅವು ಏನೇನು ಗೊತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕೆಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್, ಮೋಹನ್ ಇವಾಡಿ, ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಗೋಪಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ರವರು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪದ್ಯರು ಸ್ವಾಗತ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾವ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಫಸ್ಟರ ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 5ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಬಂಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಕೆಪಿಎಲ್ ಬಗೆಗಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಂಚನ್ ಇವರು. ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ
ಮುಂಜಾನೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ ಈ ಒಂದು KPL ಸೀಸನ್ 5ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾರಂಭದ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಮಾಲಕರೇ, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು KPL ಸೀಸನ್ 5ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ KPL ಎಂಬ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಇದನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಒಲವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು KPL ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಂದುಬಾಯಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ IPL ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಕುಲಾಯಿಯ 12 ಆಟಗಾರರು, 13 ಆಟಗಾರರು ಪ್ಲಸ್ ಹೊರಗಿನ 2 ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು 15 ಮಂದಿಯ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಬಾಲಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಏನೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಗದಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ. ನಿನ್ನೆ SI ಅವರು ಸಹ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕುಲಾಯಿಯ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಸಹಮತದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ KPL ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂಪೈರ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಅದವರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ KPL ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಡ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾರ್ ಅವರು ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ KPL ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ KPL ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ. ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಸೀಸನ್ 5 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತವರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರ್ ಅವರು. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಸುಶಾಂತ್ ರವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಕುಳಾಯಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಶನೆ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗೌರವವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಣೈ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಭಗವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕುಳಾಯಿ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಇವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಫಯಾಜ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಶಿಯಾನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಭಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ್ರವರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂಥ ವರುಣ್ ಚೌಟ, ಹಾಗೆ ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕನವರ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಂಜನ್ ಅವರ, ಆಚಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ IPL ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಆಗುವಂತೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಈ ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಅವರ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರ ತಂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಕುಳಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಗ್ರೌಂಡು
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಕುಳಾಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಾವು ಈ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಏನು ಪಾನ್ಪರ ಗುಡ್ಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಅವರ ಕೈಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಓನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟಾರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ KPL ಸೀಸನ್ 5 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಬರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, IPL ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ KPL ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗನ್ನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಸೀಸನ್ 5 ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಭರತನ್ನ ಹೇಳಿದರು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ 8 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯುವಕರು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಲಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆದು ಆಟ ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂಥ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಬಹುತೇಕ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ 3 ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಲಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೆಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮಗಾಗಿ KPL ಕಮಿಟಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. KPL ಕಮಿಟಿ ನೀಡುವಂಥ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ, ಇದರ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇವರು ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಳಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತವರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಹಿಯಾಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾರವರಿಂದ ಹಿತನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಈ ಭಾಗದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕುಲಾಯಿಯ 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಸಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ 8 ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರೇ, ಅದೇ ಥರ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆಡಿ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ ಥರ ನಾನು ಮುಂದುವರೆದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಬಹಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡಿ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ನೀವು ಸಮೇತ ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆಡಿ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಆಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಆ ಜಾತಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಯುವಕರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಂಗ್ಲರಿಂದ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆಂಗ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಮೀರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ತರನೇ ನಾನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ತದನಂತರ ಆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ IPLನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ KCR ಅವರು ತಂದಂತಹ KPL ಅಂದರೆ ನಿಂದೆ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಥರ KPL ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು, ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋರಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಿಸಿ ಈ ಭಾಗ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯುವಕರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತನ್ನ ಆ ದಿನದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು KPL ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ KPL ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ 5ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ KPL ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ KPLಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾರವರು. ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾರವರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಪಸರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಇದರ ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 38 ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತದನಂತರ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಲೈಡ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ 6-4 ರಾಕೆಟ್ ಕೇನು ಸೌಂಡ್ ದ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬ್ರದರ್ ಮೂಲನ್ನ ಕೆಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳನ್ನ ಎರೆ ಗೆದ್ದಡು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕುಟ್ಲಾದ ಕುಲೈಡ್ ಬೆರ್ಮೇದ ನಮ್ಮ ಕುಲೈಡ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು 30 ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಪೂರ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತುಡು ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರಂಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಕುಲೈಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ 6-4 ರಾಕೆಟ್ ಕೇನು ಸೌಂಡ್ ದ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬ್ರದರ್ ಮೂಲನ್ನ ಗೆಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳನ್ನ ಎರೆ ಗೆದ್ದಡು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕುಟ್ಲಾದ ಕುಲೈಡ್ ಬೆರ್ಮೇದ ನಮ್ಮ ಕುಲೈಡ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಕೇನು ಸೌಂಡ್ ದ ಬಿಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಕುಟ್ಲಾದ ಕುಲೈಡ್ ಬೆರ್ಮೇದ ನಮ್ಮ ಕುಲೈಡ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ 6-4 ರಾಕೆಟ್ ಕೇನು ಸೌಂಡ್ ದ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬ್ರದರ್ ಮೂಲನ್ನ ಗೆಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳನ್ನ ಎರೆ ಗೆದ್ದಡು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕುಟ್ಲಾದ ಕುಲೈಡ್ ಬೆರ್ಮೇದ ನಮ್ಮ ಕುಲೈಡ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ 6-4 ರಾಕೆಟ್ ಕೇನು ಸೌಂಡ್ ದ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬ್ರದರ್ ಮೂಲನ್ನ ಗೆಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳನ್ನ ಎರೆ ಗೆದ್ದಡು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕುಟ್ಲಾದ ಕುಲೈಡ್ ಬೆರ್ಮೇದ ನಮ್ಮ ಕುಲೈಡ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ 6-4 ರಾಕೆಟ್ ಕೇನು ಸೌಂಡ್ ದ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬ್ರದರ್ ಮೂಲನ್ನ ಗೆಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳನ್ನ ಎರೆ ಗೆದ್ದಡು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕುಟ್ಲಾದ ಕುಲೈಡ್ ಬೆರ್ಮೇದ ನಮ್ಮ ಕುಲೈಡ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಲೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕುಲೈಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್
ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ದಲ ಒಂಜಿ ಓನರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 2 ಜನ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ವಿನ್ ಆಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಓನರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಲ ಓನರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಪಣಿಯರಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪರಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತು ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ಅಂಚನೆ ಓನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಲ್ತು ಬರಡು ಮುಗಿದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬಾರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಭಾಗದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಕುಳಾಯಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಕುಳಾಯಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚರಣ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಲ ಓನರ್ ಸಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಲ್ ತಾಯಿನಾಥ್ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ 6-4 ರಾಕೆಟ್ ಕೇನ್ ಸೌಂಡ್ ದ ಬಿಟ್ ಕುಲೈಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ 6-4 ರಾಕೆಟ್ ಕೇನ್ ಸೌಂಡ್ ದ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬ್ರದರ್ ಮೂಲನ್ನ ಕೆಬ್ಬಿ ಕೊಡ್ದು ಕೇಳನ್ನ ಎರೆ ಗೆದ್ದಡು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕುಲೈಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡು ಟಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ 6-4 ರಾಕೆಟ್ ಕೇನ್ ಸೌಂಡ್ ದ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬ್ರದರ್ ಮೂಲನ್ನ ಕೆಬ್ಬಿ ಕೊಡ್ದು ಕೇಳನ್ನ ಎರೆ ಗೆದ್ದಡು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕುಟ್ಲಾದ ಕುಲೈಡ್ ಬೆರ್ಮೇದ ನಮ್ಮ ಕುಲೈಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದ 2 ಜನ ಓನರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ದಯವಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾರು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಮನಗ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಮೂಲು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಮೇಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಂದು ಮೂಲ್ ದಿವೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡುಪುನ ಮಾತ ಗಾಡಿಲ ಪೂರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡ್ದು ಪಿದೆ ಪೋಡು ಮುತ್ತ ಗೇಟ್ ಬಂದ ಆಪುಣಿತ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಬಂದ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಶಿವಾಜಿನ ಅಂಗಡಿ ದಲ್ಪ ಓಮ್ನಿ ಕಾರಣ ದೀತಾರ ಅವನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ತ ದೆಪ್ಪಡು ಅಲ್ತರ್ದು ಮೀನ್ ಮಾರ್ನ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಅಲ್ತರ್ದು ಓಮ್ನಿ ಕಾರಣ ದೆಪ್ಪಡು ಬಂದ್ ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ
ಬ್ರದರ್ಸ್ ರಾವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆನವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ. ಚಂದುಬಾಯ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಪೋಲೆ ಅವ್ರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಫ್ರಿ ನಾಕಲು.
ಗಂಗು ಗಂಗಾಧರ್ ಗಂಗಾಧರ್ MSCZ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ದಡೆಬಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕುಳಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಳಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡವನ್ನು ಗೊಳಿಸಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಸ್ಗ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಬಲೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬರೋಡು. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚೀಮಿಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನ
ಹಲೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹುತೇಕ ಇದೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾಯುವ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಜೊತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆಗಮಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು, ಸಮಯ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ. ಕುಳೈ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಕುಳಾಯ್ ಪ್ರೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಳಾಯ್ ಪ್ರೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತನ್ನ 11ರ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಳಾಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ. ಕಾಯುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Hello, check. Hello, mic check. 1 2 3. Texting, mic testing. 1 2 3. Check. Hello, check. Mic check. 1 2 3. Mic testing. 1 2 3. So good morning, everyone. Welcome back for the prestigious KPL Kulai Premier League 2023 season 5, in the name of Festival of Cricket KPL season. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಡಿಕೆರೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ. ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಜಿ.
Shri Gurubhyo Namaha. So welcome back once again. Good morning everyone, and back to the festival of cricket. Kulai Premier League back once again for the season 5 2023, and which is proudly organized in this prestigious Venkatamana School Cricket Ground here in Kulai. Chandubai Cricket Stadium, one of the most historical and popular cricket ground here in Kulai. Everything is set now for the match number 1. After that, a grand inaugural ceremony of this prestigious cricket tournament with the ex-MLA and present MLA of this constituency, Bharat Shetty, as well as former MLA of this constituency, Moideen Bhawa, inaugurated this fantastic cricket tournament. And after that, we are witnessing the inaugural match between two very good teams going to take part in the inaugural match. Team Kodikere takes on Kulai Samrat. And the news here is from the center that after winning the toss, captain of Kulai Samrat elected to field first, so that team Kodikere will go into bat first. So just coming back to this particular match, the rules and regulation of this cricket is concerned. Little bit correction. After winning the toss, captain of Kulai Samrat elected to bat first. And a little bit correction there. And very interesting that after winning the toss, they elected to bat first. And that means the team Kodikere will go into ball first. And very interesting decision. Wait and see how this decision will go into work out for Kulai Samrat. Umpires already made their way to the middle of the pitch. They're taking their respective position. Umpire, a very popular umpire, and Mohan Ayadi, and along with Mohan Ayadi in the non-strikers end, it looks like Suresh Mudabidri, one more very, very popular umpire as far as Underarm cricket is concerned in South Kent district. Three umpires altogether at the official for this cricket tournament. Arish Padil is one more very popular umpire, the experienced campaigner, experienced umpires for this particular Kulai Premier League season 5 of this cricket tournament. So, just like I mentioned about earlier, the cricket tournament which is inaugurated, very grand inaugural ceremony with the presence of respected Dr. Y. Bharat Shetty, MLA of Mangalore North constituency, and under the presidency of Shri Moideen Bhawa, the ex-MLA of North constituency, and with the presence of chief guests like Shri Varun Chauta, member of City Corporation, Srimati Vedavati Kulai, member of City Corporation, Charan Shriyan, industrialist Jairam Acharya, owner of Bhagavati Engineering Kulai, and Shri Bharat Shetty, the president of Nagarika Samiti Kulai. So today, the day number 1 of this prestigious cricket tournament, and tomorrow will be the last and final day of this cricket tournament, and where we are going to witness the grand prize distribution ceremony will go into held tomorrow evening at 5 o'clock. So coming back to in our commentary box as usual, and welcome back, and myself Satish Salyan in English, wishing each and every the cricket teams all the very best, and wish you all the very best, and please play with the true spirit of game, because you are the one responsible for the success of the cricket tournament. Discipline is so important as far as success of this cricket tournament is concerned, and the organizer did all the efforts that they wanted to make this cricket tournament very successful one. After that, their fourth season they organized this particular Kulai Premier League successfully, so they are once again looking towards your cooperation for the success of this 5th edition of KPL. I request the extra player of both the teams to be reported here. Kodikere ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. So everyone is present here. Thank you very much.
Pawan is in striker's end, Gokale is in non-striker's end, and Ashok led the correction. Pawan Gokale is in striker's end, and a very good left-hand batter, and he will going to be the striker, and in the non-strikers, and Ashok, one more very experienced and fantastic performer, is in non-strikers, and Riaz, the icon player. The first ball, beautifully balled, starts with the delivery, which is just a little bit outside the line of off-stamp, and the batsman is just going for the drive. Of course, in the first ball, every batsman little bit struggles to get his foot movement is concerned, because when you are playing your first ball, to take a little bit time to adjust to your footwork and condition of the game, and even is never knows how the ball is coming to your way, the face, whether the ball is coming very quickly or not, so that it's take a little bit time to settle down. Quite understandable. First ball, which is outside the line of off-stamp, batsman completely beaten. Riaz balls again, leaning into the drive. This time he got a little bit outside edge of the bat, and before the fielder from the third man to run back to field that one, ample time for the batter to complete the single. Couple of runs here. So with that couple of runs, Kulai Samrat, they open the account with that couple of runs, and even the Pawan Gokale is off the mark with that couple of runs. So 2 without loss of any wickets. Riaz, everybody knows the capability of Riaz. Is one of the top all-rounder as far as present cricket is concerned. One who represents for NM Cricketers Mangalore. Right arm balls, this time off the toes, try to turn that one on the onside region, just wait for the umpire signal. It's from the bat, there is no contact with the leg, but looks like once its ball is just around the legs of the batter, and the batsman able to pick the single for that. With that single, score moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Square leg, now right-handed batsman is on strike, Ashok. For Ashok, there is a short fine leg, one at square leg, one at short mid-on. One fielder in deep mid wicket because the power play is on, and one at a deep long off. Again going for the drive, not quite getting that one right from the middle of the bat, but certain single there, because both the batters has got a very good understanding between the wicket, so no hesitation at all to pick that single there. So Ashok is off the mark with the single, and total score numbers on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. A bright sunny morning, and a typical the month of March. It's that kind of weather condition. Lovely delivery, beaten by the pace once again. Little bit movement, quick little bit movement of the feet. Of course, he's stretching his front foot, but I think it's a bat which is coming very late to the line of the delivery, and that's only because of not the problem of the batsman, but the quickness of the ball. The quickness of the ball, what Riaz has generating that pace in his bowling, that makes a little bit problem for the batsman to get into that line of that ball. And second time that Riaz is able to beat the bat of the left-hand batsman Pawan. This time again they're going for the drive. Again right on the block, old batsman just managed to negotiate even very well the last moment. And fantastic over which is comes in and there from Riaz. A wicketless over, but it's a 4 runs coming from that over. So after completion of first over, winning the toss, Kulai Samrat elected to bat first, and they slow start, 4 without loss of any wicket. So please note, as per the rules and regulation of this cricket is concerned, the 28 minutes, the fielding team, they need to complete their 7 overs quota within 28 minutes. So please note, don't waste the time unnecessarily, because you are the loser, because the umpires will going to take the action if you are not able to complete your 7 overs quota within 28 minutes. Second over, going for the drive, but not quite able to get that one, what he really wanted to do, because he wanted to drive the ball to the cover region because of that ball just coming into the batsman. Gitesh, one more icon player for the side, is balled sharp incoming delivery, and Ashok plays it straight to the hands of fielder. Again, the ball is going to stay to the same fielder, then out down at short mid-off, and before a short mid-off fielder to return the ball, there is no chance at all for any run. Gitesh again bowls third time in this over. Bowler's back drive and is gone. Cotton ball. Gitesh picked up his first wicket, and first wicket for team Kodikere. Gitesh strikes in his third delivery of his first over, and he's justifying this icon player for his team, and he's produced a very important breakthrough. And just coming back to that dismissal, what
Jitesh has got in that particular, I want to see, because he struggled to get the timing behind the stroke. Two deliveries, he played it straight to the hand of a midfielder. So he wanted to break the shackle, and that's why he wanted to play some expansive drive. By doing that, he couldn't manage to keep it down. Then Gitesh takes that wonderful cotton ball and wicket number first, which is back into pavilion of Kulai Samrat. So 4 on the board for the loss of 1 wicket, and the new batsman in is Charan. And Charan is the new batsman, is a very experienced campaigner for the side of the team. Kulai Samrat being the captain of the side, lot of responsibility, absolutely fantastic one. This is the kind of technique I'm really likes whenever the new batsman coming into the middle, not really looking for the drive, the big drive. You know exactly the condition of the game, you know exactly the bowler we is facing. And that's why just a soft hand comes into play. Just the roll of the wrist comes into play to pick the single, and he is off the mark with a single. So with that single, score moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. Gitesh again, right arm over the wicket, nice looking off drive, but again a ball. It looks like it's a ball which is not that much of hard enough to get that much of timing and power to get that one into the deep cover division. Ball is just passing inside the ball, inside the 20-yard circle, but quite enough for Pawan to complete the singles. 6 on the board. So far it's a quiet over there from Gitesh. Right arm over the wicket, balls to Charan. Charan again nicely turns that one down to square leg region. They're running hard, looking for the second. Good pick up and throw, but throw which is not enough. Throw which is not good enough to stop the couple of runs. Absolutely fantastic technique implemented by Charan. 8 on the board after completion of 2 overs. And just way that Charan is a roll of the wrist which comes into play. Absolutely fantastic. Because you know exactly the fielder is almost in the deep. So he played at what soft hand, he can get a couple of runs. Good running bit of the wicket as well. So completion of over number 2, it's 8 on the board, and run rate is 8 on the board, 4 on the board run rate actually, the 4 runs per over, 8 on the board. So new bowler is one more experienced campaigner. Everybody knows the ability of Ajay with a master class leg spin bowler, and he's now bowling the right arm over the wicket to the left hand batsman Pawan. The first ball right on the money, right on the target, but Pawan just covering his stamp and placing the ball quite nicely down to a short mid-wicket region for a single. With that single, score moves on to 9 on the board. The left and right combination is always useful for any team, isn't it? And because it's a headache for the team, opposition team, and every time when the strike rotates, you need to change the field set. Even bowler have to change the line and length. Right arm balls this time, swept that one, appeal for leg before wicket, but not confident I feel because the ball is of course got inside edge of the bat of the batsman of Charan, so that no question of leg before wicket, but there's a 1 run for the batter, and the score moves on to double figure 10 on the board. Again technical, very sound player. Pawan, I am observing in the last 2 seasons in this Kulai Premier League. I really loves to watch him batting. Very cool, calm customer, and you know exactly the kind of condition in this particular morning. Instead of looking for the big shot, both the batsmen are looking for the rotation of a strike here. 11 on the board. Ajay to Charan, improvising by playing that horizontal bat, switch it. One of the most popular cricketing stroke as far as the present cricket is concerned. The Charan picked up a single. Charan is playing absolutely the captain's role here in the middle of the pitch along with Pawan. This time chipped that one quite deliberately. Ball is in the air, but Pawan knows that the fielder is in the deep in the long on region, so he is checking the stroke in the last moment and picked up a single for that. With that single, score moves on to 13 on the board. Ajay, final time in this over. To Charan. Charan nicely driven, beautiful shot, absolutely fantastic use of the feet, and got the placement down to deep long on for a single, and a good over in fact for team Kulai Samrat. They rotate this strike each and every ball, and they got a 6 valuable runs. So with that 6 valuable runs in the over number 3, total score now 14 on the board for the loss of 1 wicket.
So fantastic weather condition, of course, a little bit overcast. It looks like cloudy weather condition. Sun, which is playing a little bit playing a hide and seek game with the clouds. Sometimes it's a bright sunny morning. Sometimes it's a cloudy weather condition. The fourth over starts here. Yeah, beautiful, absolutely perfect. Played by Charan, delicately played. Just opening the face of the bat, just getting the direction, guiding that one down to third man region for an easy single. So with that single, score numbers on to 15 on the board. Guru. The fourth bowler is introduced by the captain of the side, and now is bowling to left-hand batter. Right arm over the wicket. Beautiful, absolutely glorious cover drive. Nice looking drive, beautiful. It's really a fantastic cricketing stroke in that there from Pawan there. Everything is perfect in that cover drive, isn't it? Leaning into the right, front foot stretching, and coordination. This time ball is in there. And the captain of the side, Charan, wanted to get that one over the top of that fine leg fielder, but he did not quite able to get that one in the ground, and he played it in the air. That's the problem what Charan has got. Maybe that extra bounce creates a problem for Charan, that he couldn't manage to keep it down. Ball went straight to the hands of fine leg, the wicket number second, which is back into pavilion. So 16 for the loss of 2 wicket now. Captain departs, and icon player arrives. Harris being the icon player for the side of team Kulai Samrat. Wait and see how Harris will going to contribute from the bat. Just like I'm mentioning about the condition of morning today, is not just like it's a usual month of March. In the yesterday and day before yesterday, it's a bright sunny morning in Mangalore. It's a very hot 40. It is a record temperatures which is recorded in the last 2-3 weeks. Is a horrible condition for in Mangalore. But today, slight a little bit relaxation for the players because of the condition is not that much of off. Appeal for caught behind. They are very, very confident. Only the wicket keeper is very confident. But you will just look at the bowler there. He's not confident. He's not confident. But sometimes it's happening in cricket, isn't it? Sometimes it's happening in cricket, because umpires very much knows that it's just a little bit excitement. Maybe ball is very close to the bat, but ball which is missing the bat completely. They beautifully plays it down to deep fine leg region, but unfortunately Harris will going to get one single for the going for the second. Oh my goodness! The total misunderstanding between the wicket. Of course, Harris starts the run for the second, but that is only just a start. And Pawan thought that Harris is just coming for the second. This is what I'm talking about. Sometime when icon player coming into your way, he doesn't know what are the strategy that icon player will going to implement. So this is a gap between the two players' understanding and the technique of running between the wicket. That's a big problem when you are having the icon players coming to your batsman. Pawan, unfortunately, is back into pavilion in the form of run out. Misjudgment of the second run and costing a huge wicket of Pawan. But he's played a very good innings of 8 runs. Gautam is a new batsman in. For Gautam, one at short fine leg. After that power play fielding spreading out. Deep first square leg is there. Mid wicket is there. Long on is there. Long off is there. Deep cow point. Beautifully bowled. Absolutely perfect one. Very good wicket keeping behind the stumps. Fantastic over which is comes in and there from Guru. And wicket taking over after completion of over number 4 and searching for the right track. Kulai Samrat 17 for the loss of 3 wicket. Have a look at the Guru. Bowled beautifully. Just 3 runs conceded and he picked up 1 wicket. At the same time, he is responsible for the 1 run out as well in that particular over. So altogether good over for team Kodikere. And wait and see how well the team Kulai Samrat will going to bounce back in the remaining 3 hours. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And good morning, Gopi, and welcome back for the Kulai Premier League Season 5 and one of the most prestigious cricket tournament as well as the festival of Underarm cricket. Welcome back.
वेरी गुड मॉर्निंग सतीश एंड वेलकम टू ऑल द स्पेक्टेटर्स। जैसा कि हम जानते हैं कुलाई प्रीमियर लीग 2023 एक प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद तो यहाँ पर मैच नंबर 1 खेला जाता हुआ टीम कोडिकेरे और कुलाई सम्राट के बीच। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ टीम सम्राट, और जहाँ तक सवाल है रन का तो 18 रन बन चुके हैं। 19वां रन इस वक्त बल्लेबाज ने बटोरा। चौथा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। इनफैक्ट 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट्स फॉर टीम सम्राट, इनफैक्ट कुलाई सम्राट। और अगली गेंद ये बार गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड। और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। वाइड लॉकआउट की दिशा में गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 20 रनों पर। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। फुल टॉस, बॉल्ड आउट, just wanted to play that one with a reverse shot, not succeeded. Full toss delivery and he's just got the rid of the batsman at the last moment. और इसी के साथ विकेट नंबर 4 गिर चुका है। 4th wicket is now backing to pavilion. It's 20 for the loss of 4 wicket after being completion of, in fact its 5th over has been came to an end. 5 overs completed, 20 runs on the board and 4 wickets lost for कुलाई सम्राट। और जहाँ तक बचे हुए ओवर्स का सवाल है तो 2 ओवर इस वक्त शेष उनकी पारी में। एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला कुलाई प्रीमियर लीग की शानदार शुरुआती हो चुकी है। कुलाई प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत श्री वेंकटरमणा स्कूल चंदुबाई मैदान पर, और बहुत ही सुंदर सा विशाल सा चंदुबाई मैदान श्री वेंकटरमणा स्कूल का कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है। और यहाँ पर एक बेहतरीन प्रतिष्ठित मशहूर क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। केपीएल सीजन 5 कुलाई प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत। और यहाँ पर 6ठा ओवर उनकी पारी में शुरू होता हुआ और कुलाई सम्राट इस वक्त पहले बल्लेबाजी करता हुआ गेंदबाज रियाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए इस बार स्वीप करना चाहा। गेंद इस वक्त पहुंचे फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंचे और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर और 4 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। रियाज काफ़ी आज के दौर के अंडरआर्म क्रिकेट के प्रतिभान्वित खिलाड़ियों में से एक वो जाने जाते हैं। बेहतरीन ऑलराउंडर्स के रूप में जाने जाते हैं अंडरआर्म क्रिकेट के। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया। गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। दूसरा रन बल्लेबाज लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और इस बार रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रन से ज़्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो रियाज एक बार गेंदबाजी फिर से आगे बढ़ाते हुए गेंद को ऑन साइड पर ऑफ द टोस फ्लिक करना चाहा। नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट। इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। और 6ठा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए रंजीत, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर आरिस इस वक्त मौजूद। इस बार बेहतर गेंद थी रंजीत के लिए, रियाज की गेंद। और इस वक्त आरिस जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज थे काफ़ी हद तक आगे निकल आए लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहाँ पर विकेट कीपर फील्ड कर चुके हैं। और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रियाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर। Can't find the gap as well and because of that the batsman paid the penalty for that and that is the wicket number 5 now. The batsman dismissed is Ranjit. He just hit that one firmly but the placement was too wrong and because of that he paid the penalty for that. और इसी के साथ 24 रनों पर ये 5वां विकेट यहाँ पर गिर चुका है और रंजीत आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। रियाज विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं अपना पहला विकेट और अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी है। सर्ट वैल्यू की प्रस्तुति है ये बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला केपीएल सीजन 5 आज और कल ये श्रृंखला यहाँ पर इस चंदुबाई मैदान पर चलेगी और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक रोचक क्रिकेट आज और कल
हमें और प्रेक्षकों को, दर्शकों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इस श्रृंखला के अंतर्गत। और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रियाज दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए गेंद को वहीं पर पुश कर दिया। रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन ऐन मौके पर देखा कि तेजी के साथ विकेट कीपर गेंद तक पहुंच रहे हैं और अपने इरादे को बदल कर अपने कदमों को क्रीज पर वापस खींच लिए। 24 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 6 ओवर्स पूर्ण हो चुके। 6 ओवर्स कंप्लीटेड, 24 ऑन द बोर्ड एंड 5 विकेट्स लॉस्ट फॉर Kulai Samrat, and still in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी है और काफी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है। बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। सूरज आज सुबह जो कि प्रकाशमान न होकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला रहा था, अब बादलों की आड़ में यहाँ पर छिप चुका है और मैदान पर लगभग बदली भरा वातावरण इस वक्त छा चुका है। लेकिन न क्रिकेट के पर्याप्त वातावरण न इस मैदान पर छा चुका है और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रतियोगिता की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई कुलाई प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत। और कई गण्य अतिथि आज सुबह उद्घाटन समारोह पर पधारे थे और एक बेहतरीन उद्घाटन समारोह यहाँ पर हुआ और उसके बाद एक क्रिकेट श्रृंखला जो कि यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इस प्रतियोगिता का प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का पहला मैच यहाँ पर प्रगति पर। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची तेजी के साथ। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में, फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था कि तेजी के साथ 1 रन न चुरा सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 7th एंड फाइनल ओवर इन देयर इनिंग्स। और इस बीच गेंदबाज इमरान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को स्विंग किया, गेंद पहुंची मिड विकेट पर फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। इरफान की पारी समाप्त। गेंद को ऑन साइड पर पुल तो जरूर किया था, लेकिन प्लेसमेंट गलत था और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ यहाँ पर इरफान का विकेट गिर चुका है। 25 रनों पर 6वां विकेट यहाँ पर खो चुका है इस वक्त कुलाई सम्राट आर नाउ लूज देयर 6th विकेट इन द टोटल ऑफ 25 एंड नाउ जस्ट 4 balls रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त बेद्रा मीडिया द्वारा किया जा रहा है जनाब इरफान इनके सारथी में। और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो कार्तिक इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, तब बाएं हाथ के बल्लेबाज और सामना करेंगे इस वक्त इमरान की गेंदों का। और इमरान इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कार्तिक के लिए फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक चलती हुई, क्योंकि कार्तिक बाएं हाथ के बल्लेबाज है, इसलिए कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली करने के बाद गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई विकेट कीपर चूके और इस बीच बल्लेबाज दौड़कर 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 इन लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई एक और वाइड, अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए गेंदबाज लगातार 2 वाइड फेंक चुके हैं। 3 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में, तोहफे के रूप में वो प्रदान कर चुके हैं। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इमरान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया है गेंद को, लेकिन 2 स्क्वायर और गेंद इस वक्त इशारा इस वक्त अंपायर का सिर्फ 2 रनों का। थोड़ा सा सीधा अगर गेंद को पुल करते हैं तो शायद छक्का उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन ही जस्ट हिट दैट 2 स्क्वायर एंड बिकॉज ऑफ दैट इज गॉट ओनली अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर और 3 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी। और गेंदबाज इमरान इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लेकिन मौका लंगॉन फील्डर के लिए और इस कैच को सफलतम लपकने में सफल। हालांकि सूरज की प्रखर किरणें उनके आंखों को चुभी थी जरूर, लेकिन उन किरणों से अपने आंखों को बचाते हुए अंतिम क्षण में एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपक लिया इस वक्त
फील्डर ने वाइड लॉन्ग ऑन पर 30 रनों पर 7वां विकेट गिर चुका है। 2 गेंदें अब बाकी उनके बारे में। जस्ट 2 balls now remaining in their innings and now they are 30 for the loss of 7 wickets. So 2 balls now remaining in their innings. 2 गेंदें बाकी और नए बल्लेबाज नंबर 9 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। हर्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बोल्ड आउट लेग स्टंप होकर कर गिरता हुआ इस वक्त और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 8 ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए सीधे उनके स्टंप्स को बिखेर कर ले गए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका। विकेट नंबर 8 डाउन इन फैक्ट एंड नाउ दे आर 30 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स विद जस्ट लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। So the last ball of their innings is now coming up और गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, शॉट्स फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ इनिंग्स इज अप फॉर कुलाई सम्राट। दे फिनिश विद 31 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स in their stipulated 7 overs and now the target for team Kodikere is 32. They have to score in their stipulated 7 overs with a required run rate of just over 4 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 4.42 runs per over they have to score for victory. 32 they have to score. That means 4.56 the required run rate for them. And their inning starts now within just short while और उनके पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब टीम कोडिकेरे की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So 32 the target for Team Kodikere set by Kulai Samrat in the inaugural match of KPL Season 5 2023 and their innings now going to start. 32 they have to score in the stipulated 7 overs. The openers are now comes out to the middle. Geetesh and Nihal for Team Kodikere. In fact the bowler is now starts the proceedings is Ranjit and the first ball of
देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज रंजीत इस वक्त तैयार। गितेश सामना करने के लिए तैयार, उनकी पारी की पहली गेंद का। और इस बीच रंजीत दाहिने हाथों पर द विकेट, पहली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला। गेंद पहुंची इस वक्त गली की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का और इस एक रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। इट्स 1 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रंजीत का, तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कुल मिलाकर कहना पड़ेगा पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी, केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लंग ऑन और लंग ऑफ थोड़ा सा वाइडर इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज निहाल के लिए। और निहाल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और रंजीत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, ओह terrific, absolutely terrific at this time, and the batsman completely beaten by that pace, and the ball struck his off stump and the bell has been disturbed. So that is a fantastic delivery from the Ranjit, the bowler, and he's just got rid of निहाल। पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है 1 रन के योग पर और निहाल आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए एक बेहतरीन गेंद पर रंजीत की बोल्ड आउट के रूप में और 1 रन पर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त टीम कोडी करे। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फॉर टीम्स कोडी करे। So Sunil, the number 3 batsman, is now comes out to the middle और इस वक्त गेंदबाज रंजीत की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बैकफुट पर गए, कट किया इस वक्त और जब तक गेंद पॉइंट पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 2 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। टाइटल स्पॉन्सर इस श्रृंखला के लिए सर्ट वैल्यू और हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का इनाम मोबाइल फोन के रूप में प्रदान किया है सर्ट वैल्यू, जो कि टाइटल स्पॉन्सर है इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट के। और गेंदबाज इस वक्त इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद जाते हुए इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट। थ्रो पहुंचा इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो करे गेंदबाज के हाथों में 2 रन का इजाफा हो चुका है। ಸೊ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುಳಾಯ್ ಹಾಗೂ ಕುಳಾಯ್ ಪ್ರೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। तो अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। रंजीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेला लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड द प्लेसमेंट वाज नॉट सो गुड और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। पहला ओवर समाप्त हो चुका, 6 रनों का स्कोर है। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 32 in 7 overs। टीम कोडिकेरे made a mixed start. In fact, they managed to score 6 runs on the board for losing 1 wicket after their completion of first over. So the bowler
Ari starts a fresh proceedings and second over starts in their innings और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया खूबसूरती के साथ into the gap as well. He gets at least couple for that. और गेंद का पीछा करने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्कूप किया था गेंदबाज के सिर के ऊपर से बल्लेबाज सुनील ने और 2 रन यहाँ पर बटोरने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है और गेंदबाज एरिस इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था ना तो ओवर था विकेट गेंद को चेक किया इस वक्त स्ट्रोक को चेक किया था इस वक्त अंतिम क्षण में और गेंद इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से निकलती हुई सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था इस वक्त बल्लेबाज ने और फलस्वरूप यहाँ पर गेंद निकलती हुई एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से भाग्यशाली रहे बल्लेबाज इस गेंद पर एक बार फिर से गेंदबाज एरिस तैयार था ना तो ओवर द विकेट ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला इस वक्त हो सकता है निशाना स्टंप्सों पर टकराता लेकिन निशाना चूका और इस बीच बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापिस फॉलो थ्रू में अपनी दाईं ओर तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए गेंद को फील्ड करके थ्रो तो जरूर किया लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ स्ट्राइकर एंड पर और बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस लौट चुके हैं एरिस एक बार फिर से तैयार ये गेंद बैकफुट पर गए गेंद को कट करना चाहा चुके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन बल्लेबाज को नहीं मिला स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस एरिस की गेंद इस वक्त गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और विकेट कीपर अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करते हुए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला 10 रन पर स्कोर बोर्ड रुक चुका अंतिम बार इस ओवर में एरिस गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाईं तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम जस्ट केप्ट लोअर एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन and there is no possibility of any run. 2 overs completed, 10 runs on the board. Still, the batsmen of team Kodikere are searching for the right track. Royal Strikers and Kulai Predators, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chat. The next match will be played between these 2 teams. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಲಾಯ್ ಪ್ರೆಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೈದಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಲಾಯ್ ಪ್ರೆಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು So 2 overs completed, 10 runs on the board and 22 runs more now they have to score for victory in remaining 30 balls. And the third over starts in their innings. रंजीत अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए अपने पहले ओवर में 6 रन रंजीत प्रदान कर चुके हैं और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार था इन्हें ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके आना पड़ेगा इस वक्त मौजूद और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका है फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं रंजीत की गेंद बेहतर स्ट्रोक इस वक्त गेंद को खेला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर रंजीत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बैकफुट पर गए गेंद को इस वक्त खेलना चाहा लेकिन गेंद की लाइन को परखते हुए गेंद को छोड़ दिया इस वक्त देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज रंजीत इस बार गेंदबाजी करते हुए इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन बल्लेबाज को नहीं मिला स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगेन फुल टॉस पुल दैट वन दिस टाइम it just went over the fielder's head. 1 bounce into the fence और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे जी तोड़ कोशिश जरूर की गेंद को लपकने की लेकिन वहां पर गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलती हुई अंतिम क्षण में एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए
बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर लगता हुआ सुनील के बल्ले से और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रन और लगातार 5 डॉट गेंदें खेलने के बाद इस वक्त एक चौका झटने में सफल है सुनील और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार रंजीत की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी गेंद पहुंचे मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा फील्डर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 18 for the loss of 1 wicket progressing along nicely for team Kodikere and just they have to score 14 more runs for victory in remaining 4+ overs 26 balls left in their innings गेंदबाज एक बार फिर से तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस बार फुल टॉस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर अंतिम क्षण में और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ टीम कोडिकेरे खासकर इस ओवर की बदौलत और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ खाली क्षेत्र चुनते हुए एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है 3 overs completed 20 runs on the board and 1 wicket lost for them Royal Strikers ಹಾಗೂ ಕುಲಾಯ್ ಪ್ರೆಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ so just 12 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries and the situation the equation seems to be much easier for them गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गौतम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई और निस्संदेह यहाँ पर अगर कमबैक करना है तो कुलाई सम्राट के गेंदबाजों को एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा क्योंकि इस वक्त तख्ता भारी रखता हुआ कोडिकेरे टीम कोडिकेरे का खासकर पिछले ओवर की बदौलत जिसमें 10 रन बने 10 रन स्कोर्ड इन द लास्ट ओवर एंड बिकॉज ऑफ दैट लास्ट ओवर टीम कोडिकेरे लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन Just 12 runs more now they have to score for victory गेंदबाज एक बार फिर से तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पहुंचे 1 रन का इजाफा हो चुका है दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 22 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 23 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress अगली गेंद ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज गौतम 2 लगातार वाइड यहाँ पर फेंक चुके हैं और एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट अगली गेंद के लिए ये गेंद बैकफुट पर गए गेंद को कट किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा 25 ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೆಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ तो गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट फुल टॉस पुल किया लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और बेहतर कैच यहां पर लेने में सफल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान फील्डर परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी गेंद को ऑन साइड पर स्विंग जरूर किया था फुल टॉस गेंद को लेकिन गेंद पर खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल और डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान जो फील्डर तैनात थे अपने दाईं ओर दौड़ते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने एक बेहतर कैच को नपका और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट सुनील की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है ही स्कोर्ड 12 रन्स इनटू हिज क्रेडिट आफ्टर बीइंग स्कोर्ड 12 रन्स he is back into pavilion and a good innings came from him नए बल्लेबाज number 4 batsman is now comes out to the middle अजय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज गौतम इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया गेंद एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर के हाथों में और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में यहां पर बल्लेबाज अजय का विकेट गिर चुका है अपने स्ट्रोक को चेक किया था अपने स्ट्रोक को रोक लिया था अंतिम क्षण में लेकिन गेंद को जमीन पर रखने में असफल और आसान सा कैच इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में पहुंचता हुआ और इसी के साथ 25 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है अजय आउट फॉर गोल्डन डक इन हिज वेरी फर्स्ट डिलीवरी एंड अ थर्ड विकेट लॉस फॉर टीम कोडिकेरे इट्स 25 for 3 just 7 more runs now they have to score for victory in remaining 20 deliveries और
This is the last call for the captains of Royal Strikers and Kulai Predators. Please to be reported here for the toss procedure. जासिम नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गौतम की गेंदों का और गौतम इस बार हैट्रिक गेंद लेकर जासिम के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज काफी तेज है, रनिंग बिटवीन द विकेट पर 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। 26 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 26 नाउ for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress in their innings. Still a ball left in this over. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान दोनों फील्डरों के बीच और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है दोनों फील्डरों के बीच से होकर और इस चौके के साथ विजय के और निकट हो चुका है यहाँ पर टीम कोडिकेरे। It's 30 for the loss of 3 wicket, 4 overs completed and just they have to score 2 more runs for victory in remaining 3 overs with a required rate of exactly 0.66 runs per over। ऐसा कहना पड़ेगा अपने विजय के द्वार पर इस वक्त आकर खड़ा हो चुका टीम कोडिकेरे। Just 2 runs they have to score for victory। So Ashok 30 for the loss of 3 wickets. Just 2 runs more now they have to score for victory. 2 runs. The fresh over starts from Ashok. 5th over starts in team कोडिकेरे's innings और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दाहिना ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। जस्ट अ सिंगल रन नीड टीम कोडिकेरे फॉर विक्ट्री और गेंदबाज अशोक का ऑन साइड पर फ्लिक कर दिया और इसी के साथ टीम कोडिकेरे रजिस्टर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री अगेंस्ट कुलाई सम्राट by 7 wickets with the 2.5 overs to spare in their innings and with that 7 wickets comprehensive victory, team Kodikere backed the complete points against Kulai Samrat in the inaugural match of Kulai Premier League 2023 season 5. So the first match of this tournament ended just short while ago और दूसरा मैच यहाँ पर इस वक्त शुरू होगा। रॉयल स्ट्राइकर्स विल टेक्स ओवर कुलाई प्रेडिएटर्स और वो मैच शुरू होगा यहाँ पर चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे यहाँ पर सतीश के साथ जब मैच नंबर 2 की शुरुआत होगी इस श्रृंखला इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So Royal Strikers, after won the toss, they elected to field first against Kulai Predators in the match number 2 of this tournament, and because of that, I request the players of this match, please start the match immediately. Thank you.
So man of the match of this match, the award goes to the man who performed with the bat as well as in the ball. So Gitesh adjudged the man of the match of this match because of his all-rounding performance. He scored 14 unbeaten runs in just 9 balls and captured 1 wicket, and because of that he bagged the man of the match award. So congratulations for him. And we will moving on to the second match of this tournament. Royal Strikers will take over Kulai Predators. Thank you. धन्यवाद. So match number 2 of this tournament is now going to start between Royal Strikers versus Kulai Predators. And in this match, Royal Strikers, after won the toss, they elected to field first. And their innings now going to start. Their openers, Sukesh and Hakim, the openers for Royal Strikers. And the bowler starts the proceedings is Naufal. और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार ऑन साइड पर गेंद को फ्लिक कर दिया ऑफ द टोस गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है इट्स 1 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट ऑफ द सेकंड मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज इस बीच हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और रॉयल स्ट्राइकर्स इस वक्त पहले बल्लेबाजी करता हुआ और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बैकफुट पर गए गेंद को हल्के से पुश कर दिया इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन 3 सिंगल्स पहले 3 गेंदों में बन चुके इस वक्त रॉयल स्ट्राइकर्स की ओर से और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बीच स्वीप किया इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में फिर से 1 रन मिलेगा सिंगल नंबर 4 इस ओवर में बनता हुआ 4 विदाउट लॉस फॉर रॉयल स्ट्राइकर्स और 5वीं गेंद लेकर इस वक्त नौफल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ द टोज it was just flicked out of the bowler's hand in his follow through in fact
and the batsman survived in this delivery. अपने अंतिम क्षण में अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपकना चाहा नौफल ने एक हाथ से अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन गेंद अंतिम क्षण में उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज एक रन इस बीच रन से नहीं मिला और स्कोर रुक चुका 4 रनों पर। अगली गेंद, ये गेंद हल्के से पुश कर दिया इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन का इजाफा, 5 रन बन चुके, 5 विदाउट लॉस. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड इन रॉयल स्ट्राइकर्स इनिंग्स एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर they made a steady start. In fact, 5 without loss after completion of first over. इससे पहले कि दूसरा ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर अब अंग्रेजी में मैं सतीश को आमंत्रित करना चाहूंगा. ये सतीश, धन्यवाद. थैंक यू. ಕೆಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಂಗಾಧರ್ ಭಂಜನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. Thank you very much, Gopi. So match number 2 is in progress, and Royal Strikers, after winning the toss, selected to field first, and Kulai Predators scored 5 runs after completion of first over, and the second over going to start from the highway end. Tanveer will go into ball that second over. One more icon player and a fantastic all-rounder. Right arm over the wicket bowls to Akeem. Akeem this time watching the ball till the last moment, seeing the ball which is going away from the away from the off stump, and he left the ball rightly so. White call by umpire Suresh Mudabidri. Scoreboard 6 on the board for the loss of without loss of any wicket. This time chance of run out in the non-strikers end, but the fielder is not quick enough. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ತಂಡದ ಗೀತೇಶ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ರವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ KPL 2023ರ ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Thank you very much, and congratulations, Gitesh is the one who has won the man of the match in the previous match for his all-round performance, and cert value Kulai Premier League 2023 season. Why is it going on? And it's a beautiful delivery which is nipped back into the batsman. The batsman never looks like he's reading that incoming delivery of Tanveer. Cleaned him up by the beauty of the delivery there from Tanveer. This is one of the speciality of Tanveer. Sometimes he can surprise any batsman with some unbelievable off-cutters and beautiful delivery there. The batsman has no way to survive from that delivery, and he's back into pavilion. The wicket number first is back into pavilion. Tanveer strikes, and over number second is in progress. It's 9 on the board. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ರವರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಗೀತೇಶ್ ರವರೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆ, ಮುಖ್ಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಒಳಗಿದೆ KA 19H7294 ಆ ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಗೇಟಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Thank you very much. Meanwhile, Shakir is one more icon player just came into bat, and straight away he's off the mark with a couple of runs. Quite nice looking lofted off drive over the head of the infield to get the couple of runs there. With that couple of runs covered numbers on to 11 on the board. Both the teams has got some good players, icon players in the side, so that level of competition is going to be very high. This time shot single and a stroke straight to the hands of short fine leg region. This is a huge wicket here for Tanveer as well as his face team. Royal Strikers striking a very huge wicket, absolutely huge wicket. Shakir is known as one of the top all-rounder in the present cricket. Is back into pavilion. Have a look at the disappointment. Why not? He thought it might be the safe shot. He plays it down to fine leg, but it's not that safe enough to reach to beat that fielder at short fine leg. Taken a wonderful catch, a little bit low down to him, but he's reacted very quickly for the catch. And Shakir is an icon player. Is back into pavilion after scoring 2 runs from his bat.
And what a fantastic over comes in and there from Tanvir. Picked up a 2 valuable wickets in his second over, and he's justifying why he's icon player for the side. Now, I think the team Kulai Predators have to rebuild their innings. They have to rebuild their innings, and because of the opening batters are back into pavilion. Little bit correction, opening batter Sukesh as well as Shakir. The two batters are back into pavilion. They are in little bit trouble. Of course, nothing much trouble in that run rate. They got 5.5 runs per hour. But trouble that what they lost a huge wicket of Shakir. So now fall will going to continue, and third over of the innings. Nicely driven that back, came down to deep long on region for a walkable single. With that single score numbers on to it's a 12 on the board, 12 for the loss of 2 wicket in the over number third is in progress, and now it looks like it's a bright sunny morning and very hot, and again nicely driven down to deep long of region for a single. So both the batsmen thus wanted to get the partnership by rotating the strike, because just like I mentioned about the rebuild, the innings is so important here for the team Kulai Predators if they wanted to get a good score here. 13 on the board for the loss of 2 wicket. This time nicely driven off the toes. Beautiful looking drive there from Hakim. One of his favorite shot. He's so good in that stroke. So whenever the ball is around his midline leg stump, he's so good in that particular cricketing stroke and plays it quite nicely down to deep long on. Again drives that one. Like a placement straight to the answer fielder. Blind run. What attempt there from Naufal. Magnificent work. Naufal doesn't know what the really things are going in between the pitch. But after he's collecting that throw, which is wide throw, which is an absolutely wide throw, I just want to see it in a replay that the kind of that collection from the bowler, absolutely unbelievable from Naufal. Have a look at that one, drives that one, lack of placement, straight to the answer fielder, and look at the fielder, he throws the ball, but it's too high. But Naufal, diving effort, absolutely diving effort, collects the ball and uprooted the stumps, and the batsman not in the picture. The one more wicket is back into pavilion. This is a speciality of some players. The Naufal is always, he's a very good fielder on his follow through, on his bowling follow through. But this is not a follow through, but he collects the ball very well. The throw from that fielder from the short mid off. And wicket number 3, which is back into pavilion. 14 on the board. I request the 12th man of batting team, please be reported here. Kulai Predators under the 12th man ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. Meanwhile, they're going for the quick single. And picked up a single there. Is one more opportunity is created for the run out. But luckily that the fielder at short mid wicket couldn't manage to collect the ball properly. So batsman cross off for a single. Now fall again. Right, over the wicket bounce. This time again there's going to be a dead ball called by umpire. Absolutely right. The batsman looks like he's not ready. And umpire rightly so. And umpire, of course, the batsman played that one because the ball is in the playing zone. So that he played that one, but rightly so. This time again, straight to the answer fielder. Chance of run out. The fielder missed it. Both the batsmen targeting that fielder at short mid wicket, seeing that is not quick enough. So Sachin picked up a single then. Over number 3 completed. After completion of over number 3, searching for the right track. Kulai Predators, they wanted to get some good score in this 7 hours game. Just like I mentioned earlier, 28 minutes to be given for the team, the fielding team, to complete their 7 hours quota. So make it fast, because if you fail to complete your 7 hours quota with the stipulated time, then it's a penalty. Penalty in the sense need to keep the fielders inside the ring in the last overs. Umpire will going to notice the time in each and every overs. Harish Padil and umpire Mohan Eyadi, the two duos, very popular duos as far as umpiring is concerned
in South Canara, Harish Padil as well as Mohan Ayadi as officiating as a field umpire for this match. Fourth over. Full toss, full Z1. Down to fine leg region, but they got a couple of runs. Umpire, maybe Hakim is just asking umpire whether the ball is a no ball, but umpire says it's well within the height. So that no question of calling that no ball, just a couple of runs. With that couple of runs, Kobarna moves on to 18 on the board. 18 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Likith, one more good bowler for the side, is brought into attack. And the first match, which is won by team Kodikere, defeated Kulai Samrat. And then Geetesh is the one who becomes the man of the match for his all-round performance. Likith again around the wicket balls. This time again a good technique, absolutely good technique there from Sachin. You know exactly the opposite side we have icon player like Hakim. His job is to pick the single and gives a strike as much as possible. And they're dealing with a fourth over, so they need to have some get some acceleration. Deep square leg is there, mid wicket is there, long on is there, long off is there, deep extra cover. The fielder are in the deep, they're preventing the boundaries. They some nicely place it down to square leg region. They're running hard. Hakim will turn out for the second and fumble from the fielder. This is a good idea. They're going for the third as well, and late reaction, but 3 runs completed. Very good running with the wicket. A good placement there from Hakim. And just a roll of the wrist comes into play. I know exactly the square leg is in the deep. The long way to go for the square leg fielder to come across to his front and to his right. And meantime, because of both the batters are running hard between the wicket, the fielder Kiran started to feel the pressure. He's fumbled and batsman grabbing the opportunity, converting that 1-2 into 3 now. So 3 valuable runs scored. Now moves on to 22 on the board. Again, nicely plays it down to short cover point region for a single by the batsman Sachin. So with that single scored, now moves on to 23 on the board. For the latecomers, you're watching the match number 2 of day number 1 of this prestigious Kulai Premier League 2023. Again, just like I mentioned about Hakim's one of his favorite shot, plays it quite nicely down to deep long on region for a single. So this is a technique we can see in only in overarm cricket regularly. And he's the one is performing in overarm cricket as well. He's got a century behind his name. They played for the second division DKCA tournament, KCA tournament, and again nicely swept that one. I think it's a leg by, no contact with the bat, so leg by called by umpire. One more single added total, and one more over which is completed. And after completion of 4 overs, good comeback in this particular over by Kulai Predators. Managed to got 25 runs, and the first time the run rate is going over 6 runs per over. 6.33 runs per over, almost the run rate progressing here. 4 overs completed, that meant 6.25 runs per over, the run rate for team Kulai Predators. Avinash brought into attack as the bowler, 5th bowler of their side. The captain of Team Royal Strikers on the toss and elected to field first. And equal battle is on. Even after they lost the wicket of Shakir too early. But this batsman really, after that, their partnership is building up very well. This time, wicketkeeper behind the stump. Now ball fails to collect the ball, but this time going to be a suicider. Looks like the wicketkeeper has got a work, but Bales, which is not out, didn't go, uproot it, so that the batsman survives. And that's happening in cricket. Oh, looks like I want to see it in a replay what really happened in that stump. Opportunity for the wicketkeeper behind the stump,
And that ball is balled around the legs. Have a look at that one. And wanted to flick that one off his legs. The wicketkeeper thought that he got a wicket. And that time I think the batsman is so lucky, but not lucky enough to save from the run out, because his partner already, Hakim, came into the striker's end. And the one more wicket is back into pavilion. It's a scoreboard 25 on the board for the loss of 3 wickets. The new batsman in is Prasad, one more experienced campaigner. Hakim single-handed reverse sweep, running hard. Hakim definitely will go into turning out for the second run. Excellent running with the wicket. Good execution there from Hakim. Couple of runs taken that scoreboard into 27 on the board for the loss of 3 wickets. 4 wickets in back into pavilion. Again, Hakim try to work that on onside, chance of run out. I think is Hakim is going back. Absolutely shown that the sportsman spirit. I think it's caught behind the wicket. It's caught behind the wicket. And just looks like it's a batsman is got a nick from the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest. And his partner Prasad wants a run. And I think that time Hakim realizing that he's got nicked that one. And he's walking towards the pavilion. And sometimes it's very good to see the players like the senior players like Hakim and all. They're the absolutely the motivation for the young players. When they're showing the true spirit of cricket, that will go into give lot of knowledge for the young cricketers, how to be in the field. And your body language is so important in cricket. And true spirit of the cricket is absolutely fantastic to watch. Hakim is walking towards the pavilion. Even though the appeal is going behind the wicket, umpire takes his own time to raise his finger, but Hakim is already walks back. Nicely driven down to extra cover region for a single by the new batsman Prasad Ashraf. He picked up a single, score moves on to 28 on the board. Prasad is one more senior most cricketer, fantastic all-rounder, the very good leg spin bowler. He is on strike now. Avinash balls, Prasad drives that one, very good hitter of the ball. Prasad drives that one down to deep long on region for a single. So with that single, score moves on to 29 on the board. 29 for the loss of 5 wickets are back into pavilion. Avinash. Right arm over the wicket to Ashraf. For Ashraf, one at deep square leg, one at deep long on. The long off is there. Deep extra cover is there. Unorthodox, not in the deep. The lovely shot. Beautifully driven down to long off region for a single. With that single, score moves on to 30 on the board. Over number 5 completed. And 5 completed, 30 on the board. Run rate is exactly 6 runs per over. Run rate progressing, but they lost the wicket of Hakim. It might be it was one of the drawback in this particular over, because Hakim is a kind of batsman who can be very handy, particularly in the slog overs. Meanwhile, match number 3 will be played between going to start between Jaya Siddhant versus Bhagavati Friends. So that I request both the teams captain as well as all the players of both the teams to be reported here for the signatures. ಜಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಜಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Nicely driven down to deep long off region for a single by the batsman Ashraf, and with that single score moves on to 31 on the board. So Ganesh, the bowler, one more very good bowler for the side of team Royal Strikers. So far, after winning the toss, elected to field first. The bowler's doing a good job, doing a very good job. Like nicely driven, Prasad off the back foot, tried to cut that one, but at the last moment he's changing his mind, just pushing the ball half a stroke, half a push,
Picked up a single down to short cow point region for a short cow point, and score number was on 32 on the board. 32 for the loss of 5 wickets. Drives that one, lovely looking off drive, but just a single there for Ashraf, because protection has been given in the deep, in the long off region. So with that single, score number was on to 33 on the board. And in my left, we have Santosh Bantwal is enjoying the game of cricket here in our commentary box. Right arm over the wicket, delivers one more dotted delivery. That's what I'm mentioning about the Ganesh. I'm watching him in the last 2-3 seasons. He's a very good performer as far as the bowling department is concerned. It's a Ganesh looking so good in this over as well. Bowling the leg spin, a gentle leg spin, but a lot of varieties and no chance of run out. And Prasad is back into pavilion, not happy with his partner, and the partner thought it might be the ball is went in the gap, but ball went straight to the hands of short mid-on, and Prasad just seeing this partner is coming to the run, he responded for that, but he's just sacrificing his wicket. So over number 6, wicket number 6 is back into pavilion. It's a 33 for the loss of 6 wickets. So friendly atmosphere here, and one more big supporter of Underarm cricket, Nandan Kulshekar, is just arriving here in our commentary box. Welcome Nandan Kulshekar for this prestigious Kulai Premier League Season 5. And nice, looks like it's going to be a delivery which is a dotted one. Fantastic over. A very good over there from Ganesh. Just 3 runs conceded there by Ganesh. Absolutely fantastic over is concerned. The kind of over which is required for the fielding team, especially in the slog overs. And Ganesh has produced that over. And 6 overs completed after completion of over number 6. It's a 33 on the board. In my right, we have, of course, Dinesh Acharya, little correction. One more very popular name as far as overarm cricket is concerned, as a player, as a official, but today is doing a different job as a scorer in our commentary box. And here is the last over, and nicely reverse sweeping that one down to deep backward point region for a single. Tanu is a fielder there in the backward point, runs back, fields the ball, just a single, as Koban was on to 34. Absolutely, in Majir Palla, the Tanvir is a player of that winner team. 3 lakh huge cash prize, and he's been outstanding at that tournament. And nicely driven, lofted that one right in the gap, down to widish long off region. They're coming back for, oh, direct it, it's gone. It's gone. Magnificent throw, absolutely fantastic throw there from Kiran. The same fielder, if you believe me or not, is misfielded from the square leg, so he's been shifted from square leg to deep long on because for that misfield. And the same fielder now is responsible for the run out with the direct hit. This is a cricket, isn't it? Sometimes you cannot underestimate any fielder. And now he's just sending to the message to his captain. That's a part of cricket, the misfield. But sometimes, yes, I am also got the ability of fielding the ball and hitting the stumps, and hits the stump quite beautifully. Have a look at that throw from the fielder. It's not so easy when you're throwing the ball from long way directly into the stumps, and the batsman is out of the crease, and Mohan Ayade has got no hesitation to raise his finger. So one more wicket is back into pavilion. It's a 35 on the board. Lofted that one, ball is in there, one bounce collected by the fielder. They're turning out for the second. In comes the throw, one more wicket is back into pavilion. 2 consecutive runouts taken place because of the outstanding fielding from the fielders of Royal Strikers. Are really having some royal quality fielders. A royal performance which is continues here from the fielders of Royals. Again, that ball is driven down in the long on. This is a little bit wideish long on. Have a look at the throw from the fielder. Right over the bales, and the bad bowler just completing the formalities of making the run out. One more wicket is back into pavilion. 8 wicket is back into pavilion. It's a 36 on the board.
Avinash so far is looking so good. 4 time in this over, but Ashraf drives that one, lack of placement. Bowler's back drive and Avinash on his follow through fields the ball on his follow through and back to bowler. Again Ganesha. Live correction, Avinash. Just as watching the field set and now get ready to bowl to left-hand batsman. Drives that one again straight to the hands of a wide mid-on field region. Looking for the second, but no question of second there. And over number last is in progress and last delivery which is coming up of their innings. So can Kulai Predators will going to finish with them one big shots here. And wait and see. Bharat is a batter. Lofted it. And fielder there in the mid wicket will going to take the go. Second attempt he completes the catch. Once it looks like the fielder Ganesh is missed that one completely. But in a second attempt he's kept the eye on the ball. And that's why he completed the catch in the second attempt. And wicket which is fallen in the last delivery of their innings. And wicket number 9 which is back into pavilion after completion of over number 7. The team Kulai Predators only managed to get 37 runs and they set a target of 38 to win the match for Royal Strikers. And wait and see how Royal Strikers will going to get this 38 in 7 overs. And at the same time, wait and see how Kulai Predators will going to depend this. Not a huge total, but I cannot underestimate that total as well. It's going to be a fighting total. And wait and see how these two teams will going to fight for the victory in their first round of their league matches. So meanwhile, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. And at the same time, the two teams please report to the pavilion to sign the official charts for the next match. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर दूसरा मैच चलता हुआ इस वक्त रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए इस वक्त लक्ष्य है 38 रन, 38 the target for Royal Strikers set by Kulai Predators. At batted first, they managed to score 37 runs in the stipulated 7 overs, and now the target for Royal Strikers is 38. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। तो उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त तनवीर और नौफल मौजूद, जबकि स्ट्राइक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए प्रसाद, और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त प्रसाद तैयार। तनवीर सामना करते हुए और अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत हो, और इसी के साथ उनकी पारी की पहली गेंद लेकर तैयार। 38 द टारगेट इन 7 ओवर्स फॉर रॉयल स्ट्राइकर्स, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट,
ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 0 पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक जमावट करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड ब्रिलियंटली सेव्ड जस्ट इनसाइड द फेंस। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग परफॉर्मेंस शोन बाय द डीप मिड विकेट फील्डर। जैसे ही गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार करे अपने दाहिने हाथ से अंतिम प्रयत्न में गेंद को अंदर की ओर ढकेल दिया और बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन फील्डिंग और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है रॉयल स्ट्राइकर्स की ओर से। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। अगली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ना चाहता वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और 1 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर कुछ ज्यादा नहीं निकल रही थी और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। प्रसाद इस वक्त लेग स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा। गेंद पहुंची इस वक्त ऑफ साइड पर बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन मिल चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। और तनवीर ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। नौफल और जहां तक नौफल और तनवीर का सवाल है, दोनों काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी और निस्संदेह अपार अनुभव है उन्हें अंडरआर्म क्रिकेट में और यहाँ पर आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर दोनों बल्लेबाज इस मैच में रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। ये गेंद स्वीपर करना चाहा, पैरों पर टकराई, अपील लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। शायद गेंद ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलते हुए, क्योंकि क्रॉस एंगल पर इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स यहाँ पर लगाया गया, इसलिए हमें ठीक तरह से इस वक्त जज करना मुश्किल हो रहा है कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है कि ऑफ स्टंप से बाहर की ओर। लेकिन यहाँ पर सही निर्णय अंपायर द्वारा, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 4 रन बिना किसी नुकसान के। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज प्रसाद इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ दिया। पैडल स्वीप करते हुए फाइन लेग की दिशा में 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड in Royal Strikers innings. They made a steady start. In fact, 5 runs they managed to score after completion of first over, just chasing the victory target of 38 in 7 overs. And now 33 more runs now they have to score for victory in remaining 6 overs. So that means in remaining 36 dealers with the required run rate of exactly 5.5 runs per over. Still they got all 10 wickets kept intact. और जहां तक सवाल है अगली ओवर का, तो इस वक्त अगला ओवर लेकर गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए शाकिर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी में और नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए शाकिर अभी भी 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। पावर प्ले के अंतर्गत वाइडिश लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच लॉन्ग ऑफ पर और 7 खिलाड़ी कुल मिलाकर 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। मिड ऑफ इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद, जबकि ऑन साइड पर स्क्वायर लेग शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त मौजूद है। शॉर्ट थर्ड मैन इस वक्त तैनात। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है और तनवीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शाकिर एक चतुर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, क्लेवर क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं शाकिर। इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद चिप करना चाहा, गेंद हवे में, लेकिन शाकिर की दाईं ओर से गेंद इस वक्त निकलती हुई फॉलो थ्रू में और एक टिप्पे के बाद गेंद को वो फील्ड करते हुए अपने फॉलो थ्रू में रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और तनवीर एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 जय सिद्धांत कैप्टन प्लीज टॉस।
7 रन बिना किसी नुकसान के, 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर second in progress. इस बार चिप किया है लॉन्ग ऑन पर and this time it might been cut off just inside the fence. Just lofted that one, just taking the advantage of that power play. और गेंद को इस वक्त उछाला था लॉन्ग ऑन पर, लेकिन गेंद आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद अपने रफ्तार को खोती हुई, और जब तक गेंद को लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया तनवीर ने, गेंद पहुंचे मिड विकेट पर, मिसफील्ड यहां पर गेंद को बैकअप करते हुए डीप मिड विकेट पर फील्डर, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, 10 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर, गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्टीयर किया, इस बार ब्रिलियंट अटेम्प्ट, लेकिन गेंद को लपकने में असफल। निस्संदेह वहां पर बेहतरीन प्रयत्न किया था, डाइविंग एफर्ट, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो लपक नहीं पाए, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। इट्स 11 without loss in the over number second in progress, and the equal battle is now continuing here. गेंदबाज शाकिर एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त स्टीयर करना चाहा, चूंकि गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ओवर नंबर 2 की समाप्ति, 2 overs completed, 11 runs on the board, yet to lose any wicket. And still the equal battle is now continuing here between 2 teams players. रॉयल स्ट्राइकर्स को इस वक्त चाहिए 27 रन, गेंदें बाकी हैं 30, यानी 5 ओवर बाकी हैं, और रिक्वायर्ड रन रेट जो है एग्जैक्टली 5.40 रन्स पर ओवर। दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री एट दिस सिचुएशन इन रिमेनिंग 5 overs, 27 दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और कुछ हद तक बातचीत इस वक्त चलते हुए कुलाई प्रेडिएटर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और बातचीत के बाद इस वक्त देखना यह है कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है। और गेंदबाजी इस वक्त लेते हुए गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए, और तीसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ रॉयल स्ट्राइकर्स की पारी में, और गेंदबाज इस बीच सचिन गेंदबाजी शुरू करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, और पावर प्ले इस वक्त समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए, और इस बीच सचिन अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सामना करने के लिए इस वक्त नौफल, और ओवर की पहली गेंद सचिन की दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहली गेंद नौफल के लिए, गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल, और मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट पॉइंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 26 और रन चाहिए, 28 गेंदें और बाकी उनकी पारी में, और गेंदबाज शाकिर, माफ कीजिए, गेंदबाज सचिन ने इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, तनवीर सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस वक्त ये गेंद जमीन के सहारे ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और 13 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 30 नाउ विदाउट लॉस, और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेल दिया इस वक्त शॉर्ट टर्न पर। पहले सोचा कि रिवर्स शॉट खेला जाए, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद लेग स्टंप पर आ रही है, गेंद पर बल्ला अड़ाते हुए गेंद को अजीब तरीके से इस वक्त खेल दिया, शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन के लिए बल्लेबाज ने 14 रन बन चुके हैं, और सचिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। छक्का इस वक्त लग चुका है तनवीर के बल्ले से, और गेंद के इस वक्त उछाला, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन अंतिम क्षण में अपने ऊपर की ओर छलांग लगाने के बावजूद गेंद को वो रोकने में असफल, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद ड्राइव कर दिया, इस वक्त स्ट्राइट पास दी बॉलर, गेंद को फॉलो थ्रू में अपने हाथ जरूर उड़ाए, हाफ स्टॉप इस वक्त गेंदबाज ने किया, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 21 रनों पर, 21 विदाउट लॉस। दे आर लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन, 10 runs came from this over, and because of this over Royal Strikers are now looking in a good situation.
just 17 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 4.25 runs per hour. Match number 2 of Kulai Premier League Season 5 2023 is now progressing here. Title sponsor for this tournament, Cert Value. और जहाँ तक सर्ट वैल्यू का सवाल है, जो कि इस श्रृंखला, इस प्रतियोगिता, इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर है, हर मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए मोबाइल फोन उन्होंने इस वक्त घोषित किया है और निस्संदेह एक बेहतरीन स्पॉन्सरशिप यहाँ पर देते हुए सर्ट वैल्यू सर्टिफिकेशन सिंप्लीफाइड जो कि स्लोगन है। और तो पहला छक्का इस श्रृंखला का लग चुका है, इस टूर्नामेंट का लग चुका है तनवीर के बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फर्स्ट 6 ऑफ द टूर्नामेंट केम फ्रॉम द बैट ऑफ तनवीर एंड बिकॉज ऑफ दैट 6 दे आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन नाउ। द बाउलर हकीम इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक और इस बीच सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज तनवीर, जो कि पिछले ओवर के 5वीं गेंद पर छक्का जड़ने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए हकीम की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट हकीम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तनवीर के लिए यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर लपके विकेटों पर उन्होंने निशाना दागा लेकिन निशाना चूकता हुआ और इस बीच 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करते हुए जोखिम भरा रन लेकिन यशस्वीतम यहां पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 22 रन बन चुके हैं, 22 नाउ विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज हकीम ओवर की अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम, एक्स्ट्रा क्विक वन। नौफल ने गेंद को ड्राइव करना चाहा चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और सिर्फ 16 रन अब चाहिए विजय के लिए, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। हकीम इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद हल्के से गेंद को डेलिकेट इस वक्त डेलिकेट तरीके से खेल दिया, अंतिम क्षण में बल्ले को गेंद पर लाते हुए फ्रंट फुट पर जाने के बाद घुटनों के बल बैठते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया पैडल स्वीप के रूप में शॉर्ट फाइल लेग पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 23 रन बच चुके हैं तनवीर के लिए। यह गेंद इस बार तनवीर छूके जरूर कैच से लेकिन यहाँ पर रनआउट से भी बच चुके हैं। गेंद वहां पर छूटी थी लेकिन मौका जरूर था रनआउट का, लेकिन थ्रो को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए, शायद थोड़ा सा वाइड थ्रो आता हुआ और गेंदबाज गेंद को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए इस वक्त। और इस बीच बल्लेबाज तनवीर इस गेंद पर दोनों मौकों में बचते हुए रनआउट और कैच के दोनों मौकों से यहाँ पर इस गेंद में बच चुके हैं। और हकीम इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त पैडल स्वीप कर दिया, एक बार फिर से घुटनों के बल बैठते हुए नौफल ने और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर ओवर अब तक हकीम का साबित हो चुका है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद पहुंची 1 रन मात्र बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 नाउ, 5 रन केम फ्रॉम दिस ओवर, इनफैक्ट 5 runs came from this over and 4 overs completed, 26 और यहाँ पर 12 रन चाहिए विजय के लिए, माफ कीजिए 3 ओवर का खेल बाकी। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए प्रसाद स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार तनवीर। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त प्रसाद फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार तनवीर सामना करते हुए इस वक्त। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार गेंद को उछालना चाहता, नॉट क्वाइट मिड लेग इट बट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 27 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंद को पैडल स्वीप करना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में फुल टॉस के तौर पर गेंद आई और गेंद को ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर, 28 विदाउट लॉस। And a fine opening partnership is now building up here for Royal Strikers. ये गेंद तनवीर के लिए उछालना चाहा, not quite mid leg it. Once again he's got a single for that stroke. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है
29 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक बेहतरीन पारी ये दोनों बल्लेबाज तनवीर और नौफल अपने टीम के लिए खेलते हुए, और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट। इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया रिवर्स शॉट के जरिए पंजों पर उछलते हुए, और गली की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 30 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट, and this is the 5th over in progress in their innings. गेंदबाज प्रसाद ओवर की अगली गेंद चिप किया ऑफ द टोज इनटू द गैप, गेंद जाती हुई लंगोन पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दूसरा रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। अंतिम क्षण में अपने दौड़ को रोक लिया था और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। दिस टाइम इज गॉन। पहले क्रीज पर वापस लौट चुके थे लेकिन दोबारा उन्होंने रन चुराना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वापस अपना बल्ला बैट हो क्रीज पर रखे सीधा थ्रो स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तनवीर डिपार्ट्स आफ्टर बीइंग प्लेइंग अ फैंटास्टिक इनिंग्स फॉर देयर साइड ऑफ 19 रन्स, एंड नाउ फर्स्ट विकेट गॉन फॉर रॉयल स्ट्राइकर्स। तो तालियों के साथ इस वक्त प्लेयर्स डगआउट में तनवीर का स्वागत करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी इस बेहतरीन पारी के लिए 19 रन उन्होंने बनाई। स्कोर्ड 19 रन्स इनटू हिज क्रेडिट बाय तनवीर, एंड अ फर्स्ट विकेट लॉस्ट फॉर रॉयल स्ट्राइकर्स। इट्स 31 for 1। जस्ट 7 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। किटी नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर नौफल सामना करते हुए प्रसाद की गेंदों का। यह गेंद इस बार गेंद को खेला शॉर्ट मिड विकेट पर, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट। One more over comes to an end. 31 for the loss of 1 wicket. Royal Strikers are looking in a commanding situation. Just 7 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. And the situation, the equation seems to be much easier for them. हकीम अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए, पहला ओवर काफी बेहतर उन्होंने फेंका था, सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए थे, और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए किटी 2 ओवर में चाहिए इस वक्त सिर्फ 7 रन। 7 runs they have to score for victory in remaining 2 overs with the required rate of exactly 3.5 runs per over. 3.50 the required rate for them at this situation. हकीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, गेंद से लिमिट ऑन फील्डर गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद को पुश किया था, 1 रन का इजाफा। 32 for 1। 6 runs to get from 11 balls. Dot balls badly required now for the bowlers of Kulai Predators to get back into this match. 3 या 4 अगर डॉट गेंद इस वक्त फेंकते हैं लगातार तो शायद कुलाई प्रेडिएटर्स इस मैच में वापस आ सकता है। ये गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त नौफल ने खेल दिया है गेंद को थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वी तम दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। हकीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया इनटू द गैप एज वेल। एक बार फिर से गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, लेकिन इस बार सिर्फ मिलेंगे 1। शाकिर वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 35 now, just 3 more runs now they have to score for victory. 6th over in progress in their innings. और हकीम अपनी ओर की अगली गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल विकेट। क्या इस बार ये विकेट गिर चुका है यहाँ पर, नहीं स्टंप्सों पर गेंद टकराई है लेकिन बेल्स डिस्टर्ब नहीं हुए, और यहाँ पर भाग्य बल्लेबाज का साथ देता हुआ तो धीमी गति से थ्रो पहुंची थी, स्टंप्सों पर टकराई। जब स्टंप्सों पर गेंद टकराई तो बल्लेबाज क्रीज से बाहर थे, लेकिन सौभाग्यवशात बल्लेबाज के लिए कि वहां पर बेल्स डिस्टर्ब नहीं हुए, तो यहाँ पर बल्लेबाज बच चुके हैं। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का। 36 2 रन न सिर्फ चाहिए विजय के लिए। हकीम एक बार फिर से तैयार, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में, रन से नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 36 रनों पर। तो अभी भी अपने विजय से 2 रन दूर, 7 गेंदें बाकी उनकी पारी में। लास्ट टाइम इन दिस ओवर हकीम इज नाउ कमिंग अप, अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर, 1 मोर गुड ओवर
from Hakim came to an end and a fantastic spell also came to an end from him. मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर हकीम इस ओवर में कितने रन उन्होंने प्रदान किए. सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए. 1 रन वाइड. 2 ओवर में 10 रन उन्होंने सिर्फ प्रदान किए. एक बेहतरीन गेंदबाजी का स्पेल उनका समाप्त हो चुका. अंतिम ओवर का खेल बाकी. लास्ट ओवर रिमाइनिंग. जस्ट 2 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. और अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही अब कुलाई प्रेडिएटर्स को इस मैच में वापस ला सकती है. मैच नंबर 2 कुलाई प्रीमियर लीग सीजन 5 2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता. वही सुंदर से विशाल से चंदूबाई क्रिकेट मैदान पर श्री वेंकटरमणा स्कूल का चंदूबाई क्रिकेट मैदान पर एक बेहतरीन श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए केपीएल सीजन 5 2023 के नाम पर. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. नया ओवर प्रारंभ होता हुआ. ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती वाइड एंड दैट सिंगल ब्रिंग्स द इक्वालिटी. स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड एंड जस्ट अ सिंगल रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. 6 balls left in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद नौफाल के लिए. गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और इसी के साथ रॉयल स्ट्राइकर्स रजिस्टर्ड अ विक्ट्री इन द लास्ट ओवर अगेंस्ट कुलाई प्रेडिएटर्स by 9 wickets, and with that 9 wickets comprehensive victory, they backed the complete points. They backed the complete points, in fact. So match number 2 of Kulai Premier League 2023 has been came to an end, and at last Royal Striker become the winners in this match, defeating Kulai Predators and back the complete points. Man of the match of this match, the award goes to, undoubtedly, the man performed with the bat as well as in the... He scored 19 runs of just 16 deliveries and captured 2 wickets. And because of Tanveer of Royal Strikers back the man of the match award in the face of mobile, which will donated by Sergio, the title sponsor of this tournament. Mobile phone, I request Mr. Tanveer to please come on to the stage and receive the man of the match award in the face of mobile from the organizers. So match number 3 of this tournament is now going to start with a short while और एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. Hello. Hello. Once again, welcome back for the presentation ceremony, and a man of the match of the second match of this prestigious Kulai Premier League season 5, and the man of the match, which is goes to Tanveer of Royal Strikers. May I request Mr. Tanveer, please come here to collect your man of the match award. I request Arish Chandra Kulai to present this man of the match award for Tanveer for his outstanding performance. The all-round performance, he not only scored 19 valuable runs, but he picked up 2 valuable wickets, as a man is in a terrific form in this season. So chief guest for this presentation ceremony, we have respected Arish Chandra Kulai. We're going to present this Man of the Match award, one of the most prestigious cricket tournament, KPL Season 5, and Festival of Cricket
in this most beautiful Chandubai Cricket Stadium here in Kulai. And what a fantastic day for cricket. It's a bright sunny afternoon and we are witnessing some outstanding cricket. And the second match, Royal Strikers, they won the match quite comprehensively. And now we are inviting Tanvir of Royal Strikers as the man of the match winner. And I request Harishchandra sir to please come forward and present the medal. And along with the medal, the gift hamper for Tanvir for his all performance. 19 valuable runs and picked up 2 valuable wickets. And congratulations. Thank you very much, Harishchandra. And congratulations, Tanvir. One nimisha. So, Tanvir, ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಪೈಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕುಲಾಯ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ಏನು ಹೇಳೋದು ಅನಿಸಿಕೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಹೇಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ, ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು 38 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಜಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ನೋಡುವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ತನ್ವೀರ್ ಫಾರ್ ಯು, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ and from the ball. And that's it from the presentation ceremony, and we are straight away going into the commentary box. Thank you very much. So welcome back, and Kiran will go into start the proceedings. The first ball, Atif nicely driven down to deep long off region. Sharp incoming delivery there from Kiran. One more very recognized bowler as far as the Underarm cricket is concerned. And the first run comes up here for team. Bhagirathi friends, Kulal off the mark with a single. Nicely driven, beautiful shot. Exquisite timing in that stroke. Beautiful shot. Absolutely glorious extra cover drive. This is a stroke of the day. This is a stroke of the day, number 1 of this prestigious Kulai Premier League. What an outstanding cricketing stroke that's going to be. Absolutely. It just looks like everything is perfect behind that stroke there from Harish. Harris is the one. He's got that one right from the middle of the bat, and he got that one to extra cover and cover region. The magnificent stroke, imperious extra cover right there from Harris. And again, nice looking drive, just growing his confidence. And Harris is the one, is represented for and he's a player of jaunty cricketers Tokur. Harris, and one of the most valuable and technical player for the side. Atif drives that one nicely down to deep long off region for a easy single. So with that single, Governor moves on to 7 on the board. And Atif is icon player for the side of team Bhagirathi friends Kulai. And here is the next one, right arm over the wicket balls. This time going for the off drive, quicker one, beaten by the pace as well as extra bounce here for the bowler Kiran there. And the wicket keeper behind the stump, Santosh, is one more icon player for the side of Jaya Siddhant. Gathers the ball back to bowler. Right arm over the wicket. This time ball is in the hands of mid-on. Miss a fumble from the fielder, so that one more single is added to total. So after completion of first over, searching for that right track, Bhagavati, the friends Kulai, here is a little bit print mistake, and written as Bhagirathi friends. It's not a Bhagirathi friends. In fact, it's a Bhagavati friends
Kulai, and Bhagwat Friends Kulai has got a good start here, and scoreboard is 8 on the board without loss of any wicket. A very good start from these opening batters of Bhagavati Friends Kulai. It's 8 on the board. Arshit, one more icon player for the side, is an icon player. Arshit will go into ball right arm over the wicket to Harris. Harris this time left the ball, seeing the line of that delivery, which is nothing much to do with that one. Left the ball right, so Arish Padil has got no hesitation to signal the wide. With that wide, score numbers on to 9 on the board without loss of any wicket. Ashit ball, beautifully ball, perfect one. Again, extra help here for Arshit, getting some extra bounce as well in this condition. With the direction of the wind, is bowling that one, and beaten by the face and the flight. And wicketkeeper behind the stumps, Santosh once again uprooted the stumps and back to bowler. Nothing much in that delivery as far as stumping is concerned. The batsman is safe at home, so that no chance of getting out. Again, nicely driven down to long off region for a easy single. In fact, it's an extra cover, and with that singles cover Namuzan to 10 on the board, double figure 10 without loss of any wicket. Both the opening batters, they know exactly the condition of this cricket ground, because it's very difficult to get some big score in the behind the wicket, but you can get some runs in the square of the wicket, in front of the wicket, and more than anything else is getting boundaries and sixes is so difficult. And so far I think only one sixes which is scored in this particular tournament, that's only the Tanveer, and 2 boundaries altogether, 2 to 3 boundaries I think so far in this particular day number 1 of this prestigious cricket tournament. That shows it's not a cricket is all about the boundaries and sixes, but it was the sensible batting which is so important in this Chandu Bai Cricket Stadium here in Kulai of Venkat Ramana School. Arshit again back to his bowling mark. Arshit, right arm over the wicket. Atif swings at one, swings it hard to one bounce ball into the deep square leg region. Before the fielder from short square leg to run back to field that one. Ample time for Atif to complete that couple of runs. Against the direction of the wind, hits the ball. So that ball which is just stopped because of that ball which went against the direction of the wind. With that couple of runs, cover Namuzan to 12 on the board. And here is again Ashit. Bowls Atif this time again. Looks like ball is defeating everyone. Ball running down to define like boundary. They're coming back for the second, and they completed 2 runs, 1 wide. That means 3 wides. And gifted runs is really helping the team total of Bhagavati. The Friends Kulai has scored Namuzan to 15 on the board. Again, Arshit balls. This time improvisation down to fine leg region. They're running hard. Atif turning out for the second, but it's going to be very dangerous because of that's something. It's not a long way to go from fine leg because of there is of course the shorter part of that fine leg region. So Atif have to settle for the single. 16 on the board. Outside the run of off stump and going to be a wide. One more extra. And with that extra score, Namuzan to 17 on the board. A lot of supports coming for both the sides. And especially the batting side has got some supporters at the right of our commentary box. Some children's, the students I think so. Some students are really enjoying the game of cricket here. Nicely plays it down to cow pointer. Looking for the second. The fielder wanted to return the ball, but one fielder is coming right in front of the fielder. So he stopped that throw, and batters grabbing the opportunity to come back for the second. The one shot call by umpire Arish Padil, so that the batsmen have to settle for the 1 and 1 run. With that single score, Namuzan to 18 on the board. So it's a very expensive over indeed from Arshit.
Harris went for his favorite extra cover drive, but this time he missed it completely. Then very expensive overseas comes in after completion of over number 2. And it's 18 on the board. And Team Bhagavati friends Kulai, opening batters, they laid the foundation. 18 on the board, 18 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸರಾಸರಿ 9 ರಾಗೆ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಲಾಯ್ ಜಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. The examination is going on in the school behind this cricket ground, so that the little bit sound system, of course, little bit tuned in a low volume, but I think the live telecast is no problem from Bedra Media as far as the sound is concerned. But after 12 o'clock, we'll definitely going to get some good entertainment after that examination. Looks like the crowds will going to enjoy the commentary here in Kulai Chandubai Cricket Stadium of this prestigious Kulai Premier League Season 5. Third over, the leg spinner is in action. Nicely swept that one down to short fine leg region for a single by Atif. With that single scope, moves on to 19 on the board. 19 without loss of any wicket in the over number third is in progress. The experienced campaigner Ishab balls straight to the hands of fielder and fumble from the fielder, so batsman grabbing the opportunity. Harris to pick the single. With that singles cover, moves on to 20 on the board. 20 without loss of any wicket in the over number third is in progress. Ishab, right arm over the wicket, again off the toes, plays it nicely down to square leg region for a single by Atif, and with that singles cover, moves on to 21. Atif is playing a sensible knock actually, intelligent cricket, you know exactly the condition of the ground. It's not so easy to hit the boundaries and sixes, just rotating the strikes as far as the condition of this cricket ground is concerned. Bowler's back drive, off stop by Isav on his follow through. Isav is a very intelligent bowler. I still remember that he's turned some game in the last season, season 4. Especially in the slog overs, he bowled very well. Again, just what I'm talking about, beautifully bowled, and wide call by umpire, but umpire is asking for the third umpire here. Harris might be little bit struggling to drag his leg when wicketkeeper behind the stump completes the job. Now all up to the third umpire to decide. The third umpire here, Mohan Eyadi, will go in to give the decision for this run out. It's out. The umpire says it's out, and of course, as per the rules and regulation of the cricket is concerned, even the batsman is having on the line is out. You need to have a little part of your bat or shoes need to be cross that line, front line, and that was Harris says looks like he's a little bit short of his crease, but he played a very good innings for his team. So first wicket is back into pavilion. It's a 22 for the loss of 1 wicket. So new batsman in is one more popular name as far as the Underarm cricket is concerned. Especially is a local boy, the very popular local boy walking towards the middle. Pratish Achar is walking towards the middle, and very good cricketer and very busy customer. And wait and see the left-hand batsman how he will go in to contribute from his bat. And there is a long off. There's long on. There's a deep mid wicket, the deep cow point, the fielders are in the deep.
Isab has got a breakthrough at last in his leg spin bowling. Pratish wanted to go and get that expansive drive on the onside region, missed it complete, but umpire not missing here. Suresh Mudabidri to signal the wide. So with that excess score, the moves on to 24 on the board in the over number 24 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Isab balls. Oh, that was a tossed up delivery, but Atif knows that quite deliberately that bowler is bowled that line and to inviting the batsman to go for the lofted drive, but Atif is know exactly the condition of this cricket ground, not so easy, and Tanvir is the only one batsman so far. It's 1-6 in this tournament, and that's why he's driven in the ground. Again, a misfield dive by the fielder, they're grabbing the opportunity, coming back for the second, in comes the throw. Pratish is in the strikers and complete that couple of runs. With that couple of runs cover, the moves on to 27 on the board. One more good over which is comes to an end. Isab, even though he got a wicket in this over, but fails to control the runs. 8 runs coming from that, 9 runs coming from that over, and after completion of over number 3, it's a 27 on the board for the loss of 1 wicket. The run rate exactly 9 runs per over for Bhagavati Friends Kulai. Cert value Kulai Premier League Season 5, and the name of a festival of cricket, and cricket for the peace. Is under progress now. The match number 3 is in progress. Santosh brought on the attack. The one more icon player. So icon player to icon, and icon. The players, 2 icon players for each and every teams, and first ball nicely swept that one down to short fine leg region for a single by Atif, and with that single scope moves on to 28 on the board. That brings Pratish into strike now. For Pratish, Santosh got one mid-wicket fielder, one at deep long on and wideish long on. Drives that one right in the gap towards the deep extra coverage, and they're looking for the second fumble from the fielder. Atif responding for that second runs, and they completed that couple of runs quite easily in the end. With that couple of runs, Kobarna moves on to 30 on the board, 30 for the loss of 1 wicket. This time Pratish lofted, and but really not getting that distance what he's really looking for. Of course, the wind which is flowing in that same direction where Pratish is wanted to. But I think the little bit extra power which is required to hit the ball towards the mid-wicket. And highly disappointment dismissal here for Pratish Achar. And Santosh is got the wicket here. So 30 for the loss of 2 wickets. Santosh has got a very important breakthrough, and quite deliberately just tossed that delivery around the legs of Pratish to go for the big shot. You know exactly, kept the fielder in the deep mid wicket for that strokes, and Pratish not realizing that fielder is in that position, lofted that one, and the mid wicket fielder making no mistake at all. The one more icon player is walking towards the middle, Ashwin Taman. And one more popular name as far as underarm cricket is concerned, and is a very good all-rounder, and especially in this condition like this, quite a useful cricketer, especially when your rotation of the strike is concerned. Always seems always considered as a master. And wait and see, he and Atif, 2 big A's in the pack, is in the middle. Again, nicely bowled, beautifully bowled there by Santosh. Quite a different action what Santosh has got. Looks like he's bowling a leg spin bowling, but sometimes he's bowling both off and the leg spin in the same action. Nicely driven down to deep long on region for a walkable single. So with that single, Skubana moves on to 31 on the board for the loss of 2 wicket. Santosh to Atif.
So far, it's a very good over. Much required, quiet over from Santosh. Last time in this over. Atif once again. Oh, good piece of fielding. Absolutely fantastic. But all the efforts which is gone in vain because of the wicketkeeper fails to collect the throw. It's a wide throw. Even wicketkeeper is not expecting that Santosh will go in to return the ball. And good piece of fielding, but overthrow. And one more over which is completed. 4 overs completed after completion of over number 4. Searching for the right track. It's a 32. It's a very good score on the board for Bhagawati Friends by losing 2 wickets at the rate of exactly 8 runs per over. And wait and see how many runs they will go into score in the remaining 3 overs. And for that 3 overs, I once again request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language indeed. Thank you. धन्यवाद सतीश सो the 4 overs completed, in fact 33 now for the loss of 2 wickets at the start of the 5th over. तो इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ अश्विन ने लॉन्ग ऑन के दिशा में और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। तो कुल मिलाकर तीसरा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ भगवती फ्रेंड्स कुलाई और जया सिद्धांत के बीच में इस वक्त मैच खेला जाता हुआ भगवती फ्रेंड्स कुलाई इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ 5वां ओवर शुरू हो चुका है उनकी पारी का। ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त खेल दिया आतिफ ने लॉन्ग ऑन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और फिर से एक बार गेंदबाज ये गेंद ड्राइव किया बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एट दिस टाइम जस्ट वी आर वेट फॉर द थर्ड अंपायर। आई थिंक ही इज इन ट्रबल। आतिफ खुद जानते हैं कि वो आउट है इस वक्त पेविलियन की ओर लौटते हुए और निस्संदेह फॉलो थ्रू में यहाँ पर बेहतरीन रन आउट यहाँ पर किया गेंदबाज दर्शन ने और इस बेहतरीन प्रयत्न की बदौलत आतिफ का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो आतिफ इस वक्त पेविलियन तक लौट चुके हैं। शायद उम्मीद की एक किरण उनमें बाकी है कि शायद मैं वहां पर नॉट आउट हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसा कहना पड़ेगा ही इज इन ट्रबल। ही इज गॉन। He is backing to pavilion. The bat was in the air when the wickets are flicked by the bowler by ball. और यहाँ पर आतिफ का विकेट गिर चुका है और आतिफ का विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त स्कोर है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वर्क ऑन हिज फॉलो थ्रू मेड बाय द बॉलर दर्शन। आफ्टर कलेक्टिंग द बॉल ऑन हिज फॉलो थ्रू, just picking the wickets very quickly and the batsman got just shot out of his crease. अरविंद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और अश्विन ने इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दर्शन दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ड्राइव करते हैं इस वक्त खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंचे जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। स्टिल सम फील्डिंग। तो अरविंद ने सामना करने के लिए तैयार और अरविंद के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए नगद पुरस्कार जासीम इनकी ओर से घोषित किया गया है। अरविंद विल गेट 500 रुपीज कैश प्राइज फॉर एवरी 6 फ्रॉम जासीम। इस बीच गेंद को ड्राइव कर दिया लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट। इन फैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड द बॉल वेंट जस्ट वाइड ऑफ द स्टंप्स और इस बीच बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed, 37 runs on the board. Still they are looking in a good situation. Bhagawati Friends, except they lost their 3 wickets, they managed to score 37 runs in their first 5 overs with a run rate of exactly 7.40 runs per over. और जहां तक सवाल है इस वक्त जय सिद्धांत के गेंदबाज का तो 2 ओवर का खेल बाकी है और 2 ओवर में उन्हें इस वक्त एक किफायती गेंदबाजी करनी है। अगर 50 रनों के आंकड़े के अंदर भगवती फ्रेंड्स कुलाई के बल्लेबाजों को उन्हें रोक कर रखना है। तो देखते हैं इन 2 ओवर में
इन बचे हुए 2 ओवर में किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त करते हैं जय सिद्धांत 11 के गेंदबाज। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस बार विकेट कीपर तेजी के साथ विकेट इस वक्त चटका चुके हैं और यहाँ पर विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो यहाँ पर बल्लेबाज का विकेट गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज अरविंद आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए 37 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है। 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th over in fact. Next match, VR Warriors will take over Sri Hari Friends, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart and also complete the toss procedure before the end of this match. मसूद इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और संतोष इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए और संतोष इस वक्त मिड ऑफ के फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर वो तैनात कर चुके हैं। मिड विकेट इस वक्त मौजूद, स्क्वायर लेग पॉइंट इस वक्त तैनात और एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात। लॉन्ग ऑफ और ओवर की पहली गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। संतोष गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ड्राइव किया। इस बार मौका जरूरत कुछ हद तक मुश्किल का, लेकिन यहाँ पर कैच को लपकने में असफल, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न उन्होंने जरूर किया था। अपने दाईं और डाइविंग लगाते हुए गेंद को लपकना चाहा, जो स्ट्रोक था अश्विन का उस स्ट्रोक को, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपक नहीं पाए, लेकिन एक बेहतरीन प्रयत्न जरूर किया फील्डर ने। शॉर्ट मिड विकेट पर फुल टॉस चिप किया जस्ट ओवर द बॉलर सेट डाउन टू लॉन्ग ऑन, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में बाकी। संतोष गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, इस बार गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ अश्विन ने। लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, स्ट्राइट अवे स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स, बेहतर थ्रो इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर का पहुंचता हुआ विकेट कीपर हर्षित के हाथों में और 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। संतोष अपनी ओर की अगली फुल टॉस पुल किया इस वक्त, नो बॉल का इशारा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर इस कैच को लपक लिया गया, लेकिन यहाँ पर नो बॉल का इशारा हो चुका है। तो काफी ऊंचाई पर बीमर के तौर पर गेंद आई थी और इस गेंद को उछाला था बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कैच को जरूर लपका फील्डर ने, लेकिन नो बॉल की वजह से बल्लेबाज बच चुके हैं। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल इन दिस डिलीवरी और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और संतोष एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अगेन इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडिंग एट द लास्ट मिनट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 44 रनों पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 6 overs had been bowled in their innings and still in overall calculation it's going to be लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में भगवती फ्रेंड्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। दोपहर का वक्त 12:30 यहाँ पर बच चुके हैं। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर रख करते हुए और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई KPL सीजन 5 2023 के नाम पर। इस बीच अश्विन बल्लेबाजी के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने गेंदबाज को रोका, लेकिन गेंदबाज अपनी गेंदबाजी यहाँ पर कर चुके थे, लेकिन डेड बॉल घोषित इस वक्त अंपायर द्वारा। स्कोर रुक चुका है 44 रनों पर। किरण गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और इस वक्त तैयार अश्विन के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला, नहीं गेंद तक नहीं पहुंच पाए अंतिम क्षण में और जब तक वो दोबारा गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का।
हालांकि जीत और कोशिश जरूर की थी उन्होंने गेंद तक पहुंचने की डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच नहीं पाए और 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 46 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें बाकी उनकी पारी में। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला अश्विन ने इनटू द गैप एज वेल। इज गॉट अ कपल फॉर दैट। संतोष जब तक गेंद को फील्ड करें, संतोष बंटवाल जब तक गेंद को फील्ड करें, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन प्लेसमेंट इस बार ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त फ्लिक किया था। गेंद इस वक्त पहुंची थी डीप मिड विकेट पर और 2 रन बल्लेबाज इस बीच दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ पहुंच चुका है 48 रनों पर। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार तैनात तो बड़ा विकेट ड्राइव किया इस वक्त। फॉलो थ्रू में थोड़ी सी मिसफील्ड, बैकअप होता हुआ वहां पर मिड ऑन पर 1 रन का इजाफा और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 कम 50 यानी 49 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और इस बार टाइम जो कि इस वक्त पूरा हो चुका है, निगदित समय जो 28 मिनट का है वो इस वक्त पूरा हो चुका है, स्टिपुलेटेड टाइम। और इसकी बदौलत एक फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर ज़्यादा तैनात किया गया है। 20 गज के दायरे के बाहर जो फील्डर खड़े हुए थे उनमें से एक फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात किया गया। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के इस वक्त हाथ पर गेंद टकराई थी अश्विन के हाथों पर, लेकिन 1 रन इस बीच बल्लेबाज को जरूर मिला और इस 1 रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर भगवती फ्रेंड्स। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं यहाँ पर और कुल मिलाकर 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। जस्ट 2 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद अश्विन के लिए ऑफ द टॉस गेंद को फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची। दूसरे रन के लिए अश्विन दौड़ पड़े, स्ट्राइक खुद अपने पास रखना चाहते हैं, वहां पर गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन यहां पर निशाना लग चुका है और देखना यह है कि यहां पर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं या नहीं। अंपायर ने इशारा किया है तीसरे अंपायर के लिए, तो यहां पर देखना यह है कि तृतीय अंपायर जो है क्या निर्धार देते हैं, लेकिन काफी नजदीकी मामला यहां पर हो सकता है। देखना पड़ेगा यहां पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। तो अश्विन ने स्ट्राइक को खुद अपने पास रखना चाहा था और गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाया नॉन स्ट्राइक रन पर गेंदबाज, लेकिन दूसरे गेंदबाज जब तक गेंद को फील्ड करके निशाने पर स्टंप्सों पर निशाना दागते उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और देखना है कि तब तक बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके थे या नहीं। He's gone और यहाँ पर बल्लेबाज का विकेट गिर चुका है और 51 रनों पर कुल मिलाकर 5वां विकेट गिर चुका है। It's 51 for 5 and just a last ball remaining in their innings. Last ball remaining in their innings and the last ball of their innings is now coming up. अश्विन सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज किरण इस वक्त गेंदबाजी करेंगे अश्विन को उनकी पारी की अंतिम गेंद का दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। अश्विन ने नॉन स्ट्राइकर रन बल्लेबाज को रोका दूसरा रन लेने से और एकमात्र रन से संतुष्ट हो चुके। 52 रन जोड़ चुका है भगवती फ्रेंड एंड भगवती फ्रेंड स्कोर्ड 52 runs in the stipulated 7 overs, losing 5 wickets. And now the target for Jay Siddhant is 53. 53 they have to score with the required run rate of just over 7.5 runs per over. With the help of 10 wicket they have to score for victory in the stipulated 7 overs and let's see can they reach the target or not. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब जय सिद्धांत की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक एंड ऑल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे। थैंक यू, धन्यवाद। My head spinning, no kidding, I can't
So back to cricket now at the 453. Team Jaya Siddhanta being the icon player for the side, you know exactly the kind of start which is required if you wanted to win this match, because 53 in this particular cricket ground is not so easy runs to chase down, but against the caliber of the batsmen like Santosh, it can be chaseable. Oh my goodness, the golden opportunity which is missed out by the fielding team to get the one wicket here. Especially, I think Santosh is struggling in that occasion because he thought his partner came to the run, but all in a sudden Anup is stopped a little bit, and Santosh is absolutely out of the picture. If the throw which is going to be an accurate, then it's going to be all over for Santosh. Lucky escape here for Santosh, and white plus 1, 2 more to the total, and Skoban moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Just coming back to the start, what we are talking about, the 2 hours going to be a very important, very crucial for team Jaya Siddhant to get some score, because they're just chasing a 53 to win this match in stipulated 7 hours. And Atif bowls, and straight away Anup is off the mark by just giving the direction to that ball to the third man, a little bit correction and gully region for a easy single. So with that single, Anup is off the mark, and a total score of Siddhant is moves on to 5 on the board, 5 without loss of any wicket. This time again that ball going down the leg stump. Atif a little bit looking for extra pace. He wanted to generate extra pace. By doing that, I think is just not really able to control the line. Again, the second wide of this over. Skoban moves on to 6 on the board. Atif was this time. Ball is in there. Short fine leg fielder will going to take the catch. It's a huge wicket. Santosh departs. So huge wicket here for Atif, and the batsman Santosh wanted to go for the big swing of the bat on the onside region, but didn't got a connection proper, and leading edge and ball just gone into the hands of a short fine leg fielder, and a huge wicket is back into pavilion. Atif strikes, and they contributed from the bat, now is contributing from the ball. Atif to Ashit, plum, absolutely plum in front of wicket. Ashit is gone, back-to-back 2 wickets. It's absolutely magnificent delivery. It's a peach of the delivery, and it's a Jaffer, absolutely Jaffer. Have a look at that one in a replay, magnificently bowled there by Atif. So back-to-back 2 wickets. Have a look at that one in a replay. And the batsman going for the drive. Oh, that was a plum. That was a absolutely plum. No doubt at all. So here is an announcement of 1,000 rupees for a hat-trick wicket for Atif. Can he able to grab this opportunity? And here is a hat-trick delivery.
Oh, this time looks like batsman has got bat onto that last moment. Absolutely fantastic stuff there from Atif, and just missing 1,000 rupees. But I think that two valuable wickets. Icon player is back into pavilion for two consecutive deliveries, which is bowled there by Atif. Right, arm over the wicket, bounce to Karthik. Karthik drives that one again. They're going for the single. Atif has got the opportunity to make the run out on his follow through, but he misses it completely from his hand. Fantastic over, which is comes to an end. After completion of first over, chasing a huge total of 53 to win this match. It's a 7 on the board, but they lost two icon players back into pavilion. Thank you, DJ. So, first wicket is back into pavilion, and chasing 53 to win this match. Nothing wrong with the run rate, but something wrong with that. Two wickets in the first over, and Atif is the one responsible for that two dismissal. Pratish Achar is brought into attack straight away. The first ball picked up single pick taken there by Karthik. And with that single score numbers on to 8 on the board. News for this next match. The match number 4 will be played between VR Warriors versus Sri Hari Friends, and captain of Sri Hari Friends won the toss. They elected to field first. Two huge wickets, isn't it? Santosh as well as Arshit, the icon player, is back into pavilion of Jaya Siddhant. When he was chasing a total score of 53 to win this match, I think the contribution always expected from the icon players, but unfortunately two icon players, now they are sitting in the pavilion. They wanted to watch in that players dugout the remaining 6 hours how well the remaining batsmen will going to contribute. But Atif is the one is responsible for that the condition for the Jaya Siddhant. They are in a deep in trouble now. Pratish bowls, batsman nicely turns that one down to flicks that one off his legs down to fine leg division for a easy single. Karthik picked up a single, and with that single cover Namuzan to double figure 10 on the board for the loss of Santosh and Arshit's wicket. Anup facing Pratish again. Wicketkeeper Ashwin, very interestingly, stops the ball from his legs, not from the hand. But anyhow, the ball which is stopped, that's very important. And here again, Pratish bowls wanted to stop that one. Chance of run out there. Wicketkeeper Ashwin is not really expecting that from Atif that he will going to return the ball. But probably there is opportunities created for the run out. And the scoreboard numbers on to 11 on the board. Pratish. Anup picked up a single. Pratish bowls. Karthik again, quite interesting kind of cricketing stroke. He wanted to hit the ball on the onside, quickly realizing that's not good enough to go for the square into square leg region. But he picked up a single anyhow. Good over completed after completion of over number 2. Chasing 53 to win this match. Still they are struggling in the middle. Bhagwati Friends against Bhagwati Friends. Kulai is bowling. Jaya Siddhant managed to score only 12 on the board for the loss of 2 wickets. They're going exactly 6 runs per over. 12 which is deducted from 53. That means 41 more runs required for the victory in 30 deliveries. 41 required from 30 balls. Ashwin brought into attack. Ashwin, nicely driven, beautiful shot there from Karthik. Upishly played, but quite deliberately. You know exactly the fielder is in the deep and the long on. So safe stroke to play that one down to deep long on. Litigation tried to long on region. So with that singles cover, Namuzan to 13 on the board for the loss of 2 wickets. Ashwin again.
Nicely swept that one down to fine leg region. They're turning out for the second and they made it quite easily in the end. The couple of runs here for Anup. And with that couple of runs, Kabana moves on to 15 on the board. 15 for the loss of 2 wicket. One at a deep wideish long off and one at deep long on and long on mid wicket is there. Again, this time quite difficult phase there by Anup to read that turn of Ashwin in the delegation. Just blocking the ball the last moment. He wanted to go for the drive, but at last moment he's checking that strokes, seeing that is not having a room enough to play that extra cover drive. But anyhow, he picked up a single for that. With that singles, Kabana moves on to 16 on the board. Beautifully ball, perfect one there from Ashwin. Appeal for stump out. Umpire Suresh Modabidre not interested. Rightly so. Just an excitement rather than the confidence, because the way that Ashwin is given the little bit flight in the delivery, extra pace as well. That one of this master class as Ashwin bowls some deliveries which is unbelievable. Even difficult for the batter. This time going for the quick single and Ashwin misses the stumps. Good backup by the fielder. Just a single. With that singles, Kabana moves on to 17 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Ashwin again. Last time in this over. Balls to Anaf. Swings it hard. And he got the distance. Absolutely right. Magnificent strike. This 6 will going to open the gate. This 6 will going to open the gate here for Jaya Siddhant. What a stroke there from Anup. Magnificently played against the bowling of Ashwin. It's unbelievable strike. What a shot. Thank you, DJ. So after completion of over number 3, it's a 23 for the loss of 2 wicket. And what an outstanding cricketing stroke there from Anup. Absolutely swings that one very hard. And he got the distance as well. Second sixer of the tournament. And because of that second sixer of tournament, in fact, but the first sixer of this match, it's a match is widely open now. It's going to be anybody's game. Now 30 runs required and remaining 24 deliveries. This is what I want to say. The cricket is all about. The one big shot will go and change the complexion of the match. Even they lost the wicket of Santosh. Even they lost the wicket of Ashit in 2 consecutive deliveries. But Anup is the one is taking all the initiative of getting some acceleration. Now that's why Atif straight away. Atif bounced again nicely. Looks like it's going to be a leg by. The ball is just going down the leg stump and the batsman wanted to get that on very fine. And the batter knows that. Karthik knows that his job is to pick the single and wanted to give the strike as much as possible to his partner. And Anup is the one right person, especially in this condition. Very useful condition now for the left-hand batsman because of the flow of the wind really helping that left-hand batsman. This time swept that one by beautifully and right drain the gap. They're running hard looking for the second, but very difficult to get. Ashwin is the fielder going back very quickly. And with that singles, Kabana moves on to 25. 25 comes off. 25 comes off here for Jaya Siddhant by losing 2 wickets. What a partnership is building up between these two. Fantastic partnership of 19 runs between Anup and Karthik after they lost the wicket number 2 too early at the score of 7. Then 19 runs has been added for the wicket number 4. Beautiful shot, but lack of placement. Off stop by the fielder. Fumble from the fielder. And Karthik picked up a single for that. With that single, Kabana moves on to 26 on the board. 53 is going to be a target, and that means 27 more runs required for the victory in 21 deliveries. The match is evenly poised, having Anup in the middle.
I think all the chances here for the team Jaya Siddharth to win this match. Reverse sweeping ball right in the gap. Definitely there is a couple of runs. A very good placement there from Anup there. Even though he lost his bat in the non-striker's end while you try to drag his bat. But still he's got plenty of time to complete a single without having a bat in his hand. He can complete a couple of runs. With that couple of runs, Kobuna moves on to 28 on the board. Very, very brave and gutsy batting from Anup there. It's not so easy when you're playing against the players like Atif in front of you. The way that Anup is handling the pressure is unbelievable. It's not an easy condition when in front of him is just witnessing the 2 wickets. Is back into pavilion. But after that, we can see that all the partnership is growing very well between Karthik and Anup. Atif searching for the wicket. This time beautifully played that one quite deliberately. He played it one over the top of the bowler to pick the single then. With that single, Skobana moves on to 29 on the board. Anup is looking so confident and fearless. And we were not having any kind of nervousness in his face as he looks so confident and so focused on that this condition of the game. Again, Karthik is also handling the pressure very well. Picked up a single, rotating the strikes very well. One more over, good over is completed for the team Siddhanth. And Jaya Siddhanth chasing 53 to win this match after completion of 4 overs. It's 30 on the board. And 23 required from 18 balls. And just under 8 runs per over is the required 100. And wait and see how well the Anup and Karthik will continue their batting. And wait and see how well Bhagavati friends Kulai will going to bounce back here. But so far I think the match is evenly poised. It's going to be anybody's game. But Anup and Karthik, I think Gopi, they're the one is unbelievable comeback after losing 2 wickets for just 7 runs. Then these two players having 23 valuable runs. And especially the Anup is looking so good. And he was the one is definitely going to be a key player if Jaya Siddhanth wanted to win this match. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 2 विकेट 7 रन पर गिर जाने के बाद ये दोनों बल्लेबाज पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाल चुके हैं. अनूप और कार्तिक एक बेहतरीन साझेदारी यहाँ पर निभाते हुए हैं और जब तक ये जोड़ी क्रीज पर बरकरार रहेगी, जय सिद्धांत की उम्मीदें यहाँ पर बरकरार रहेंगे. तो पहली गेंद को इस वक्त खेला था बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और 17 गेंदें इस वक्त बाकी हैं. रन से चाहिए इस वक्त 23. अगली गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को ढकेला इस वक्त 1 रन के लिए. और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त बढ़कर पहुंच चुके हैं 31 रनों पर. इट्स 31 for the loss of 2 wicket at the start of the 5th over in fact. और गेंदबाज एरिस गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग फॉलो थ्रू में. रन्स यहाँ पर बल्लेबाज को नहीं मिला तो अनूप का स्ट्रोक था, लेकिन बेहतर फील्डिंग फॉलो थ्रू में करने की वजह से इस वक्त रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका 31 रन. 15 गेंदें बाकी है, 23 रन और चाहिए विजय के लिए. 23 runs more needed in remaining 15 balls. अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, absolutely fantastic delivery and this is turning out to be a good over in Bhagavati friends point of view. Just a single run conceded by Aris in this over in the first 4 deliveries and now equation seems to be stiffer a little bit now for Jai Siddhant. 23 required of 14 balls. Again off the toes, just over the fielder, set it long on. In fact he gets on a single for that stroke. और लॉन्ग ऑन फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके गेंद को लौटा है, गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 32 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. एक बार फिर से गेंदबाज आरिस एक बेहतरीन ओवर उनका इस वक्त प्रगति पर. इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद. ये गेंद एक बार फिर से रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन एंड. Just 3 runs conceded by Aris in this over and after 5 overs, completion of 5 overs at this situation Bhagavati friends looking just little bit of in top लेकिन वापसी करने का मौका जरूर है जय सिद्धांत के लिए.
33 20 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 12 बॉल्स और पहली गेंद लेकर इस वक्त प्रतीश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। अपने दूसरा ओवर प्रारंभ कर चुके इस वक्त प्रतीश एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए 19 रन बनाने हैं, गेंदें बाकी है 11। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए प्रतीश इस वक्त राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज अनूप सामना करने के लिए इस वक्त तैयार और देखना यह है कि अनूप किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इनफैक्ट ही स्कोर्ड अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 35 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। 10 balls left, 18 more runs now they have to score for victory। और गेंदबाज प्रतीश की ओर की अगली गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल एक बार फिर से सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए कार्तिक वो जानते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्राइक अनूप को मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा। तो हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट इस वक्त करते हुए कार्तिक और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त बढ़कर पहुंच चुके हैं 36 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज की है गेंद, इस बार गेंद को ऊंचा उछाला है लेकिन मैंने समझता हूं गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन यहां पर गेंद को लपक लिया गया है। तो अनूप की बेहतर पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है। 18 रन उन्होंने बनाए, 14 गेंदों का सामना किया। अनूप स्कोर्ड अ वैल्यूएबल 18 runs in just 14 deliveries and after being playing a good knock for their side he is back to pavilion। नए बल्लेबाज प्रकाश का आगमन हो चुका है। 8 गेंदें बाकी, 17 रन और चाहिए विजय के लिए। 17 to get from 8 balls now। और गेंदबाज प्रतीश दाहिना हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन नहीं मिलेंगे। 7 गेंदें 17 रन और लक्ष्य इस वक्त कठिन हो चुका है। और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, अब 1 या 2 छक्के और चौके की उन्हें सख्त जरूरत इस मैच में वापसी करने के लिए। ड्राइव किया इस वक्त गेंदबाज की दाईं ओर से, मिड ऑन पर सिर्फ एकमात्र रन। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट and 6 overs completed and 16 to get from last over। तो यहां पर 16 रन और ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम ओवर में चौके या छक्के ही इस वक्त जय सिद्धांत को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और अंतिम 2 ओवर में बेहतर कमबैक कर चुके हैं गेंदबाज एरिस और प्रतीश और उन 2 बेहतर ओवर की बदौलत इस वक्त तख्ता भगवती फ्रेंड्स का भारी लगता हुआ 16 रनों की दरकार अंतिम ओवर में विजय के लिए। द लास्ट ओवर रिमाइनिंग 16 रन्स टू गेट। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए मसूद और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद और सामना करते हुए प्रकाश 16 रन अंतिम ओवर में बनाने हैं। और ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस पुल किया इस वक्त लंबॉन पर, लेकिन अगेंस्ट द विंड स्ट्रोक और कैच को लपक लिया गया है यहां पर।
Nishad, number 6 batsman, is now comes out to the middle. Quite difficult equation now. 16 to get from 5 deliveries. और गेंदबाज इस वक्त तैयार था इन हाथों पर द विकेट इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा चूंकि और बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद 16 रन अब बनाने हैं गेंदे बाकी हैं सिर्फ 4 और चौकिया छक्के ही सिर्फ अब जय सिद्धांत को इस मैच में विजय दिला सकते हैं तो इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज मसूद और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था इन्हें हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यही गेंद इस बार गेंद को उछाला है मिड विकेट पर एक और विकेट का पतन हो सकता है यहां पर और आसानी के साथ गेंद को लपक लिया गया है 16 to get from 3 deliveries, 2 sixes and a boundary required in the last 3 deliveries. इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद सही गेंद घोषित और इसी के साथ अब 16 रन बनाने दो गेंदों पर और गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो उनकी टीम की विजय इस वक्त निश्चित है इस बार चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी फैंटास्टिक बॉलिंग एंड जस्ट अ लास्ट बॉल रिमेनिंग 16 runs to get absolutely impossible task now in front of Jay Siddhant and the last ball of the match is now coming up. And a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Bhagawati Friends in the last 2+ overs. 16 needed from last delivery. और गेंदबाज मसूद इस वक्त तैयार था इन्हें तो बढ़ता विकेट फुल टॉस नो बॉल इस वक्त घोषित है और गेंद को इस वक्त खेल दिया है सीमा रेखा से बाहर स्क्वायरली और कुल मिलाकर 2 रन उनके खाते में प्राप्त होंगे 39 now and now 14 needed from last ball. 13 needed in fact last ball और चूंकि रन के लिए दौड़ पड़े but that is not enough for them. They are now 41 and now they are lost the match by 11 runs. 11 runs victory for Bhagawati Friends against Jay Siddhant and with that 11 run victory they back the complete points in fact and next match VR Warriors will take over Sri Hari Friends and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to start within just a short while. And now it's time for announce the man of the match. And now it's time to announce the man of the match and the man of the match goes to the man who performed the bat with the bat as well as in the ball. Atif, who scored 12 runs in 11 balls with the bat and he got 2 wickets in his 2 overs got and because of that all-rounding performance they backed the man of the match award. So I request Mr. Atif to please come onto the stage and receive the man of the match award from Mr. Usman Khana. And I request Mr. Satish to please continue the man of the match distribution procedure to Mr. Atif who adjudged man of the match.
Hello, hello, hello. Welcome back once again for the presentation ceremony of the Man of the Match award of this prestigious cert value Kulai Premier League Season 5, and the Man of the Match which is goes to the all-rounder performance from Bhagavati, the friends Atif, the big hand for Atif for his all-round performance, and Usman Khan will going to present the Man of the Match award with the medal. Usman Khana, little bit correction. Usman Khana will going to present the Man of the Match award. Usman Khana is also one of the wonderful cricketer. He's a legend player, and he will going to present a gift hamper for Atif for his all-round performance. 12 runs from the bat and 2 wickets in this match. Atif, congratulations first of all. ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಆತಿಫ್? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರಂಭ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆ ಈ 53 ರನ್ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಯು ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ಸೇ ಆಡಿತು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಈ ಗ್ರೌಂಡೇ ಹಾಗೆ ನಾವು 2-3 ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Atif for the future match, and here you go Atif, the man of the match, winner of the match number 4 of this prestigious cricket tournament, and that's it from the presentation ceremony, and we are straight away goes into the next match. Thank you very much. Thanks a lot. ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ VR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚುಮಿಗೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಗೋರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿ. 8 ತಂಡಗಳ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ KPL ಪಂದ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಷಾದ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ರವರಿಗೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಆವಡಿ ಓಟದ ಸಂಪಾದನೆ ಕೂಡ ದೀಪಕ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೀಪಕ್, ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ರವರಿಗೆ ಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಷಾದ್ ಟು ದೀಪಕ್, ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಹರ್ಷದ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗಾಗಲೇ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ VR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ 4ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್. ಬಾಯಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗನ ದಾಂಡನ್ನು ಚೆಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಎಸೆತಬಾಣ, ಸುಂದರತೆಯ ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಬಾಣ, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡು. ದೀಪಕ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುರೇಂದ್ರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಮ್ಮೆ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಈ ಬಾರಿ ಕುಳಾಯಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಬಂತು. ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ದೀಪಕ್ ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ದೀಪಕ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರರು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸಂಪಾದನೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಸೆತಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಬ್ಬ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ರವರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಟರ್ನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಲತೇಶನ ಮುಖೇನವಾಗಿ
ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10-3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಂದ್ರರವರಿಗೆ. ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬರೆ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಸೆತಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಭರಾಟೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಆರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಸುರೇಂದ್ರ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ 2 ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯ ಜೊತೆ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ಜನ ಮಾಲಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 8 ತಂಡಗಳ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ 2 ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರು, ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ತದನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಚಂದುಬಾಯಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡ್ತಾ ಇವೆ 8 ತಂಡಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ದೀಪಕ್ ಗೋರಿ ದಾಂಡು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಸೆದಂತ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಉಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಕೊಂಡೆ ನೆಲಕ್ಕರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬರಲಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿಯ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ
ಲೋಕಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರತಿಭೆ ಶಿವರಾಜ್ ಗೋರಿ, ದೀಪಕ್ ಗೋರಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಿವರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಫುಟಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಈ ಟರ್ನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಕೊಂಚದರಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಶಿವರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಎಂಬ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಡೇಂಜರ್ ಆಟಗಾರ. ಈ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅರಿತಂಚ ಆಟಗಾರ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ 3 ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತಗಾರ, ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. 2 ಶ್ರೀಹರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಆರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ. 12ನೇ ಆಟಗಾರರು, 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಮುಟಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದೀಪಕ್ ಚಾನ್ಮೆಯ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷದ್ ಅವರ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾನ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಹರ್ಷದ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಶಿವರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಚುರುಕಿನ ಓಟ ಶಿವರಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪಕ್ ರವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಅರ್ಷದ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ರವರಿಗೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಅವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷದ್ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಪಂಚಮ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ. ಸುಂದರತೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಾದಂಥ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಶಿವರಾಜನ ದಾಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹರ್ಷದ್ರವರ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರದ ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ದಾಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ, ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯ 5ನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೋಡಿಕೆರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ್. ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 28 ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಅನ್ನೆಸೆಯಲು ಲೋಕಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಿಗ್ಗಜ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ದೀಪಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಉದ್ದರಿನ ಒಪ್ಪಿಸಿ
ದೀಪಕ್ ರವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು, धन्यवाद दीक्षित। तो जहां तक सवाल है इस वक्त 5वां ओवर प्रगति पर और वीआर वॉरियर्स इस वक्त जोड़ चुका है 29 रन, 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर वीआर वॉरियर्स। दिस इज द 5th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन पिछले गेंद पर नहीं मिला। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची वाइड स्लॉग ऑफ की दिशा में और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। मैच इस वक्त जारी है श्री हरि फ्रेंड्स और वीआर वॉरियर्स के बीच। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। तो पर विकेट रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद शॉर्ट कवर की दिशा में। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ड्राइव करते हैं। इस बार फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची वाइड स्लॉग ऑफ पर। एक बार फिर से नॉट मोर देन अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 6th over has been games 5th over in fact 5th over has been games to an end. So 2 overs left in overall calculation in their innings. 2 ओवर का खेल बाकी है। और जहां तक अगले मैच के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो टीम कोडिकेरे का मुकाबला होगा जय सिद्धांत 11 के साथ अगले मैच में, मैच नंबर 5। और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए और टॉस प्रक्रिया को भी पूर्ण करें कृपया इस मैच से पहले। तो जहाँ तक सवाल है वीआर वॉरियर्स का, तो 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 6th over is now going to start. लतीश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए शिवराज के लिए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद तक पहुंचना चाहा, चूंकि कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। हालांकि शिवराज ने मांग जरूर की लेकिन अंपायर ने कहा कि जी नहीं, गेंद कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही है। अगली गेंद के लिए तैयार, बॉल्ड आउट, जस्ट वांटेड टू प्ले द रिवर्स शॉट एंड ही जस्ट प्लेड अप विद द रॉन्ग लाइन। So Anil, the new batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज लतेश की ओवर की अगली गेंद का, तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट लतेश इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस गेंद 3 नो बॉल का इशारा इस वक्त अंपायर द्वारा। गेंद पहुंचती हुई शॉर्ट कवर की दिशा में, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, यहाँ पर रन आउट का खतरा और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। नो बॉल का भी इशारा इस वक्त हो चुका है अंपायर द्वारा।
So विराज, the next batsman is now comes out to the middle और इस वक्त वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर माफ कीजिए स्ट्राइकर एंड पर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद लतेश की गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाह, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मूव बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज लतेश गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। रक्षात्मक तरीके का खेल इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में है। गेंद को इस वक्त पुश करना चाहता स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट कवर पर, लेकिन गेंद गई इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद उछाला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 in progress. Just wanted to play a reverse shot this time, not connected that one properly. In fact, they're looking for the second but won't get it. और 1 ही रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 38 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 38 for the loss of 4 wickets. 6th over has been came to an end. Just the last over remaining in their innings. तो इस बार पहली गेंद और यहाँ पर प्रताप इस वक्त आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए बोल्ड आउट के रूप में। एक और विकेट गिर चुका है। नाउ इट्स 38 for 5. So Kaushik, the new batsman, इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार। सिर्फ 5 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और गेंदबाज इस वक्त रोशन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, गेंद पहुंचे सिली डाउन की दिशा में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। डॉट गेंद बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है। बेहतर 2 गेंदें इस ओवर में रोशन यहाँ पर फेंक चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट गली की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला और इसी के साथ यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। Shivanand, the new batsman, is now comes out to the middle. Just 3 balls left in overall calculation in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार रोशन गेंदबाजी, bowled out, 1 more wicket fallen.
Wicket number 7 down, and Shivanand departs in his very first delivery for Golden Duck. "39. So after the departure of Shivanand, the new batsman Nitin is now comes out to the middle as a number 9 batsman, और स्ट्राइकर रन की ओर इस वक्त नितिन कदम बढ़ाते हैं. सिर्फ 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी. Just 2 balls remaining in their innings, और गेंदबाज रोशन इस वक्त तैयार. दाइनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए चिप किया. इस बार गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में. फील्डर वहां पर मौजूद है. एक रन, दूसरा रन नहीं मिलेगा. एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 40 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, और अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर इस वक्त रोशन तैयार. 40 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, एंड द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ड्राइव किया. इस वक्त उछाल दिया कहना पड़ेगा लॉन्ग ऑफ की दिशा में. फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए एक रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. बेहतर थ्रो, एब्सोल्युटली स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स, and 8th wicket fallen in the final delivery of their innings. And now we are Warriors finished with 41 for the loss of 8 wickets in the stipulated 7 overs, and now they set a victory target of 42 for Sri Hari friends. 42 they have to score in the stipulated 7 overs with the required run rate of exactly 6 runs per over. With the help of 10 wicket, the present equation shows for them. देखते हैं 42 रनों का लक्ष्य, 42 the target for them. किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं श्री हरि फ्रेंड्स के बल्लेबाजी इस 42 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए. तो उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब श्री हरि फ्रेंड्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक, ऑल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे.
Thank you, DJ. So, welcome back. Good afternoon, cricket lovers. We are straight back into this game after that lunch break, and we are witnessing some very good match. We are Warriors versus Sri Hari Friends. After winning the toss, captain of Sri Hari Friends selected to field first, so that they restricted the VR Warriors for 41 runs, and they set a target of 42 to win the match for Sri Hari Friends. And now we can see that Bedra Media having a live telecast of this prestigious Kulai Premier League. And good news here is for the cricket lovers is that Bedra Media just right now they crossed 95k subscribers. It's been an outstanding achievement and they are almost cruising towards the century. In the sense 100k or just the 5k subscribers need to subscribe and then of course Bedra Media will going to reach the milestone of 100k subscribers. It's been an outstanding journey for Bedra Media. It's not so easy journey for Bedra Media under the leadership of Irfan Bedra. Of course, he started his journey with the small mobile in his hand. He is having a live telecast of the tournament, and slowly and steadily he is just grabbing the place in the heart of the cricket lovers with this excellent live telecast. And now he has been one of the most popular YouTube channel as far as Underarm cricket is concerned. Here is the first ball. 42 is the target. Ashad going for the big swing of the bat, but missed it completely. But umpire not missing the opportunity here. Suresh Mudabidi to get the afternoon exercise, and he just signaled as a wide. The first one comes up here for team Sri Hari. And first next ball again that identical mirror display of the previous delivery, the same line and length, and Deepak a little bit struggling to get his line and length, and scoreboard now moves on to 2 on the board without loss of any wicket. Sri Hari Friends chasing 42 to win this match. Deepak this time again the third wide of this over. Absolutely disaster and disappointment start here from Deepak. Deepak is a very good all-rounder, and he's got some runs from his bat. Scored 18 valuable runs from just 16 deliveries with the help of 1 sixes, rare sixes in this particular tournament because of the nature of the ball which is used for this particular cricket tournament is Dunlop, which is not that much of hard. At the same time, the ground, the condition of this cricket ground is not that much of easy for the batter to get the big shot. And Ashar is off the marks, and after that 3 consecutive wide deliveries, then that ball is almost around the legs of Ashar. Is so good in so good in that particular cricketing stroke, and whenever the ball is just passing around his legs, he nicely flicks that one of his legs down to square leg region for his first run. So scoreboard now 4 on the board, just one delivery which is bowled in this over, and already 4 runs scored by Sri Hari Friends. That's a big contribution from extras. Deepak bowls again. That ball is going far outside the line of off stamp. This is not a good start there from Deepak. They are not depending a huge total. Just a 42 runs. Asking run rate is 6 runs per over for Sri Hari Friends. All that we can see that these extras will going to help them. Again, one more wide. The 5th wide of this over. Can you believe this? 5 wide deliveries bowled there by Deepak. And 6 already on the board in just a single delivery. Again, it's nice bit of change of pace. Slower one tried there attempted by Deepak, and Tazuddin not ready for that. That's a slower one, and he played it defensively. No, exactly, got runs. No need to panic at all. And again, leg spinner, lofted that one. Fielder is underneath it, and is gone. Can you believe this? This is what you call the cricket. Sometimes you're not getting a wicket for some good delivery. This is a juicy lollipop, short pitch delivery outside the line of off stamp, and Tazuddin lofted that one. Unfortunately, that ball is landed straight to the hands of Defect Sakawar. The wicket number 1 is back into pavilion. So first wicket is back into pavilion, and wicket number first is back into pavilion. Latish is the batter. He just came into middle, and Deepak after is trying for his regular bowling action of
up spin action, he struggled so that he bowled a gentle leg spin ball. That's also short pitch delivery, but he got a wicket for that. And again, nicely bowled outside the line of off stump, and the batsman wanted to go for the drive, but missed it completely from the bat. The wicketkeeper behind the stump did the rest and back to bowler. Again, Deepak bowls. Again, the short pitch delivery. This time, a placement is so good indeed. Magnificently played there by the batsman Latish in that occasion. And Deepak really struggling to get his line and length, and have a look at that stroke, a little bit outside the line of off stump, and going after that one, up and over, and the placement this time so good there from Latish, and over the top of that backward point and cover point, and he got a very important boundary for that. This time better line there from Deepak, but there is a single there after over number 1 which is completed. After first over, after completion of first over, chasing 42 to win this match, is 11 on the board for the loss of 1 wicket. Time for DJ. Thank you, DJ. So I request two teams captain of team Kodikere as well as Jaya Siddhant, please be reported here immediately for the tossing ceremony. So Viraj brought into attack, right arm over the wicket, balls to Latish going for the drive, wicket keeper behind the stump. Oh my goodness, he's gone. Latish is gone. What a wonderful work done by this Shivaraj behind the stump. It's a fumble, absolutely a fumble, but recovery is so good there from Shivaraj. Have a look at that one, pick that one, and returns the ball quickly to the hands of the bowler, and bowler completes the formalities, and Latish is finding himself short of his crease. The wicket number 2 is back into pavilion. I think is the right time for team Sri Hari Friends, for we are Warriors to back into this game. So 2 wickets back into pavilion, the run out taken place. 11 on the board, still they have to get another 31 runs to win this match. If we are Warriors wanted to back into this game, I think is a perfect way to back into this game is to pick the wickets in the frequent intervals. If you're able to pick wickets in each and every overs, they can put some pressure onto the batsmen of Sri Hari Friends. But this man is a danger man, is back on strike now. Shawan is a new batsman, he's in non-striker's end, but the man who's got a bat in his hand, Arshad Bajal, one of the most popular name as far as the left-hand batsman is concerned. The dominator is known as the killer of the ball, will go into face Viraj. Again, he wanted to swing that one in the onside region, but have a look at the wind in the ground. Absolutely, the strong breeze is passing in the middle of the ground. It's even as very difficult for the umpires to keep their hat in their head because of the huge wind. And Arish Padil finding this difficulty to hold the cap in his head. And that's sometimes happening in this the month of March, the afternoon in Kulai, the places where you're having a lot of wind in the ground. This time, chip that one, ball is in there. What, oh my goodness, he drops the catch. Would you believe this? Absolutely looks like the fielder is underneath it. I think it's a Deepak there in the deep mid-wicket region is charging to the catch, and have a look at the effort that looks like he's got the catch in his hand, but ball just slipping out of his hand, unfortunately. And if you're able to hold it, this catch, it's going to be a turning point of this match. You can't give the life to the batsman like Arshad Bajal. And when you're depending a total score like 42 to win the match for the opposition, you need to grab these all opportunities. Again, they're going for the single. One more opportunity of run out is missed out. So we are Warriors missing some opportunities of getting a wickets. And what could be a certain chance of run out in that occasion? Again, the fielder is not up to the mark. The bowler on his follow through misses his opportunities. The runs are conceded. 14 on the board for the loss of
2 wickets. Viraj to Arshad, beautifully ball, absolutely perfect line to ball. And this is not one of the strongest zone of the batter. Outside the line of off time, Bajal wanted to cut the ball, but he completely missed the ball from his bat. Again, going down the leg stump. This is the one area where Warriors have to work hard. Already the first over they considered so many runs in the form of extras. Again in the second over, the one more wide, and Skobar Namuzan to 15 on the board. Viraj. Arshad tries that and tried to pose the ball, but the ball couldn't. No, I think Arshad couldn't manage to get that one from the middle of the bat. The ball went straight to the hand of short mid wicket. In fact, the very closing fielder actually mid on and mid wicket very close together. And here is again Arshad tries that one again, lack of placement straight to the hands of mid on, the busy custom that mid on fielder. Fantastic over there from Viraj. The kind of over is badly required. And the good over there from Viraj. So after completion of over number 2, chasing 42 to win this match. It's 15 for the loss of 2 wickets. It's a time for DJ. Thank you, DJ. So welcome back once again. And straight away, Pratap is brought into attack. Rightly so, because no way waiting for one good bowler to come to this condition, because the opposition team is also already got 15 runs on the board. That means 27 more runs required for the victory in the remaining 5 overs. That means possible 30 deliveries remaining, excluding wides and no balls, and they have to get another 27 runs to win this match. One good over is badly required for VR Warriors, but sensible batting which is badly required for Sri Hari friends to win this match. And straight away for the right hand batsman, I want to see the field set. One fielder is the deep cow point, one fielder at deep long off, mid wicket is there, deep long on is there. There is no fielder, of course one fielder is in the deep square, like behind the square. And first ball quite nicely place it down to deep long off region for a single by Shravan. With that single, his individual score now moves on to 2, and total score of their team goes on to 16 on the board. 16 for the loss of 2 wicket, chasing 42 to win this match. Arshad Bajal. And Arshad Bajal, of course, bowled well, but he didn't pick the wicket in his 2 overs. And is a very good all-rounder. And wait and see. It's a good contest between these two bats. This time, helicopter shot comes into play, but I don't think we're going to get the distance. But the fielder is just waiting for that one. This is a huge wicket, absolutely huge wicket for VR Warriors. This is what I want to say, that this man will going to change the complexion of the match, and he's back into pavilion. That means VR Warriors are strongly back into this game. Thank you, DJ. This is the wicket I want talking about. Arshad Bajal. Actually, just I'm talking about this is a tournament which is not easy for the batsman to hit the big shots. Even the batsmen like Arshad Bajal finding difficult to get the distance. But I think there's nothing wrong with the stroke. He's implemented that helicopter shot. A lot of wrist work comes into play, but it's not good enough. Especially for in this particular cricket ground, especially for the ball which is used for this particular cricket tournament. It's not that much of hard enough to get that helicopter shot to get the distance, but he's getting a fielder in the deep long on region. So it's a very good contest I am talking about. The Pratap is the one who's got a very, very big wicket. Oh my goodness, automatically done. Automatically done, and Balakrishna is back into pavilion. The back-to-back 2 wickets. That means VR Warriors are back into this game.
Thank you, thank you. What an outstanding comeback here by Pratap. Picked up one more wickets, back to back 2 wickets. It's a 16, 16 for the loss of 4 wicket. Change in the complexion of this game with 1 over. That's like I mentioned about Pratap. I just mentioned when he came into ball, no way to waiting for to bring the wicket-taking bowlers in this situation. And I think it's a very good move from the captain of VR Warriors, asking Pratap to come and ball. And he picked up 2 huge wickets, and that means he is on hat-trick. So far, there is no hat-trick in this KPL season 5, and this man has got a golden opportunity to get the first hat-trick of this tournament. Pratap, it's hat-trick delivery. Dinesh is on strike. What a move wicket ball. Hold him! Clean him up! This is a first hat-trick of this KPL season 5. And here he go. The man has got a first hat-trick. Pratap, he's got the first hat-trick. Congratulations. And man with the golden hand. Thank you. Well. What a dramatical collapse. Unbelievable, isn't it? 3 wickets and 3 balls. And hat-trick picked up by Pratap. Magnificent performance. And 1,000 rupees, which is announced for hat-trick, which is announced by Devraj. Devraj is announced the 1,000 rupees for Pratap. Oh, 4th wicket! This is a 4th wicket. Can you believe this? He's really dismantling the batting department of their opposition. It's called as a double hat-trick. Thank you, DJ. As far as a perfect cricketing language is concerned, whenever the bowler picked up 4 wickets in the 4 deliveries, is called as a double hat-trick. And his man, he's got a double hat-trick. And here is Pratap. Can he pick up 5th? Oh, 5th one! Just imagination. Can he got the 5th wicket? He got the 5th wicket. It's unbelievable. This is going to be a record of KPL season 5. The bowler picked up 5 wickets in the 5 consecutive deliveries. What a fantastic day he's having. Definitely, Pratap will going to remember this day for a lifetime. Surely he will going to remember this day for a lifetime of 5 wickets in a 5 deliveries.
Thank you, DJ. What an outstanding achievement here by Pratap. And it was a rare achievement, isn't it? It's a rare achievement in cricket, picking up 5 wickets in 5 deliveries and a double hat-trick. As far as the double hat-trick is concerned, in international level, only 5 times it's happened in international cricket. But I think it's Lasit Mahalinga of Sri Lanka, the former bowler, is got a double hat-trick twice in his career, and here is the next one, and going for the try, chance of run out. There is going to be wicket number 6 on the 6 consecutive deliveries, but this time I think the batsman safely back, otherwise it's going to be wicket number 6 in the 6 deliveries, but I think it's absolutely disappointment performance from the batters of Sri Hari friends. Right arm over the wicket balls, the batsman drives that one, but not quite getting that placement right, but probably there is a single there with their single scoreboard Namuza, and after a long time scoreboard is moving, and from 16 to 17, and for that 16 to 17 journey, the journey of 1 run costing us 5 wickets, it's unbelievable. And here is the next one, right arm over the wicket ball, lovely delivery indeed, the batsman going for the drive, but beaten by the pace of the bowler Shivanand in irrigation, and there is no chance at all for any run there. Shivanand once again back to his bowling mark, right arm over the wicket to the right-hander batsman. Oh, one more beautiful identical mirror display of previous delivery, the same line and length. Have a look at that Shivanand, the leg spinner, is bowling so good, and quickness in his bowling is unbelievable. It's not so easy to leg spinner to bowl that kind of quick, the fast and quick, and this time batsman pedaled that one down to a square leg region for a single. With the singles cover Namuzan to 17 on the board, 18 on the board, 18 for the loss of 7 wickets. This time lofted at one down to deep long on region for a single. With that singles cover Namuzan to 19 on the board. So 5 overs completed. After completion of 5 overs, chasing 42 to win this match. Struggle time continues here for team Sri Hari friends. 4 overs completed, and in remaining over 3 overs, I think is a long way to go. And scoreboard is 19 on the board. I think still they have to get another 23 runs to win this match. 23 runs required from 18 balls. And before the next over going to start, it's a time for Gopi to take over the microphone. And Gopi, it's a rare achievement, especially in Underarm cricket. 5 wickets in the 5 deliveries. Pratap is a man. Can he able to finish with 6 or 7 wickets in this particular match? It's an outstanding achievement, isn't it? And double hat-trick is always going to be a rare achievement by any bowlers, especially in Underarm cricket. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया डबल हैट्रिक लेना उतना आसान नहीं है, और अंडरआर्म क्रिकेट में इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट। और जहाँ तक ओवरआर्म क्रिकेट का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सवाल है, तो जैसा कि आपने कहा 4 या 5 बार डबल हैट्रिक लिया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जहाँ तक आपकी जानकारी है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो इस वक्त रन्स मिलेंगे 2, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका है 22 रनों पर। और जहाँ तक देखिए प्रताप का जो स्पेल दिखा रहा है, पिछले ओवर के पहले गेंद पर सिंगल लिया गया था, दूसरे चौथे तीसरे चौथे पांचवें छठे गेंद पर 5 विकेट उन्होंने प्रदान किया। अब देखना है कि छठा विकेट जैसा कि आपने फरमाया सतीश, प्रताप प्राप्त करते हैं या नहीं। यह गेंद जब किया गेंद इस वक्त 2 स्क्वायर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इसी रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 now for the loss of 7 wickets in the over number 5 in progress। और फिर से एक बार गेंदबाज प्रताप अपने छठे विकेट की तलाश में गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर विकेट ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, तक गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन इस पिच मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर टारगेट है 42 गेंदे बाकी हैं, 14 रन से चाहिए 18। और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, कुछ ज़्यादा कठिन रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है इस वक्त, लेकिन सवाल उठता है विकेटों का। 7 अपने बहुमूल्य विकेटों को इस वक्त खो चुका है। ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को बोलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। श्री हरि फ्रेंड्स के लिए
इस वक्त एक दिलेर भरी बल्लेबाजी की जरूरत है, गट्सी बैटिंग जिसे कहते हैं, इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। दाहिने हाथों पर था विकेट, ये गेंद इस बार उछालना था, पैरों पर टकराई, विकेट नंबर 6 for प्रताप। 8th wicket fallen and Pratap got his 6th victim. So over completed and now it's 24 for the loss of 8 wickets. 5 overs had been bowled. So 6 wickets for Pratap, 2 overs, no maiden, 6 runs and 6 wicket. What outstanding spell came to an from him. और इस वक्त मैच में 12 गेंदों में 18 रन बनाने हैं इस वक्त। ये गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज कुछ हद तक आगे निकला है, लेकिन रन से यहाँ पर नहीं मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है श्री हरि फ्रेंड्स का, तो इस वक्त 11 गेंदें बाकी हैं और 18 रन चाहिए विजय के लिए। कम से कम एक चौके या छक्के की इस वक्त सख्त जरूरत वापसी करने के लिए इस मैच में श्री हरि फ्रेंड्स को। और जहां तक सवाल है इस वक्त वी आर वॉरियर्स का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए डॉट गेंद और विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि एक बार फिर से डॉट गेंद थी। 10 गेंदें बाकी हैं इस वक्त, 18 रन और चाहिए विजय के लिए। और हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट उनके लिए बढ़ता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर शिवानंद, दाहिने हाथों पर विकेट, गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए चिप किया इस बार, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक गेंद को फील्ड करे, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। हल्के से गेंद को स्कूप कर दिया था इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 2 रनों के लिए। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर, 26 ना फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त ये गेंद पैर पट गेंद टकराई, इस वक्त अपील को नकार दिया, शायद गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए। और रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 26 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर में 5वीं बार इस वक्त गेंदबाज शिवानंद तैयार था, इन्हें तो पर विकेट गेंदबाजी करते हुए बेहतर गेंद इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, प्रताप वहां पर मौजूद है, रन से नहीं मिलेंगे। एक और डॉट गेंद, अब रन से चाहिए 16 गेंदें बाकी है 7, 16 रन टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स नाउ। और एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछाल दिया, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, रन स्ट्राइक बिट अबव, मिस फील्डिंग देयर, इनफैक्ट द बैट्समैन कम बैक फॉर दिस सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। तो 2 रन यहाँ पर मिलेंगे और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 28 रनों पर। लास्ट ओवर रिमाइनिंग and 14 runs to get from last over for Sri Hari friends. Just they got 2 wickets in their hand.
So last over starts in their innings. 14 required of last over. First ball, full toss, pull that one. But I don't think it's gone all the way. And the fielder getting underneath it. और इसी के साथ नवा विकेट यहाँ पर गिर चुका है. Got a top edge on that, and finally Whitey's long on fielder made no mistake. 9th wicket fallen, and now 14 required in the remaining 5 deliveries, and just a last wicket in their hand. So 14 required of last 5 deliveries and last wicket in hand. और विनोद इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट की दिशा में गेंद जाते हुए, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 29 रनों पर. It's 29 for the loss of 9 wickets. 13 needed in remaining 4 balls. और विनोद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, प्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ Srihari friends bundled out for just 29 runs before the 4 deliveries of their stipulated quota. They were bowled out for 29 in 6.2 overs. 13 runs victory for VK Warriors. And good 4th match of this tournament is now came to an end. And now it's time for announce the man of the match. So man of the match of this match award goes to Pratap, undoubtedly in this match, who picked up 6 wickets for conceding just 6 runs in his 2 overs quota. I request Pratap, please come on to the stage and receive the man of the match award. And I request Mr. Satish to please continue the distribution procedure, man of the match distribution procedure. Thank you. And we'll be back after the man of the match distribution procedure with Satish in English, when the match number 5 of this tournament is now going to start between Team Kodikere versus Jai Siddhant 11. And now it's time for man of the match distribution procedure. Thank you. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. Hello. So welcome back for the presentation ceremony of this prestigious cert value Kulai Premier League 2023 season 5. So now I would like to invite the man of the match winner of this previous match, and which is goes to man, he really broken the record in Underarm cricket, who picked up 6 wickets and 5 wickets in 5 consecutive deliveries. It's none other than
It's none other than one and only the Pratap. Pratap of VR Warriors will go in to collect. Yes, man of the match. I request. I request Gangadhar Banjan, the president of KPL. I request Prithviraj to please come forward. Prithviraj to please come forward to present this man of the match award. Prajwal, I request Prajwal. So Prajwal to come forward. So welcome sir for the presentation ceremony. And Pratap is a man with the golden hand. Picked up 5 wickets. The 5 wickets in 6 wickets altogether in 2 overs since the 6 runs he conceded. And he's broken the record and he will go in to collect a gift hamper from Prajwal. The wonderful performance and it's a record. Of course, in international cricket, only Gary Sobers of West Indies in 1964 who picked up 5 wickets in the 5 consecutive deliveries. And in underarm cricket, once again began for Pratap who picked up 5 wickets in 5 consecutive deliveries. Congratulations. And along with that, I request the president of Kulai Premier League, Gangadhar Banjan, to please come and present that purple cap for Pratap for highest wicket so far in this tournament. And thank you very much, Prajwal sir, for your appearance for this presentation ceremony. Now, our president presenting the purple cap for Pratap for his outstanding performance. Pratap, just a minute, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. 2 ಬಾಲ್ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೊ there is 1,000 rupees is announced for you, and Devraj of Gori Young Boys announced there's 1,000 rupees. So on behalf of Devraj, our one of the greatest follower of underarm cricket, Nandan Kulshekar, will go in to present 1,000 rupees for Pratap. The big hand for Pratap. Thank you very much, Devraj, for your wholehearted support. And just coming back to the question what we are want to say, Pratap ಅವರೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 5 ವಿಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಬಾಲ್ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿತಂತ ಎನಿಸ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ವಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಗಾಟ್ ಅ ವಿಕೆಟ್. ನಿಮಗೆ ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ, ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ತೆಗೆದಿದ್ದಾನಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬಾಲ್ ಸಹ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ, ಲೈನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ? ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತೆಗೆದಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ? ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, 5 ವಿಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಬಟ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅದು ರ್ಯಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಸಿತ್ ಮಲಿಂಗ 2 ಸಲ ಅವರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ 5 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So that's it in the presentation ceremony. And now I request the orange cap. I request Tanveer to please come forward. And of course, so far I think Tanveer is the one who got a orange cap in this particular tournament, and that cap will go into present after this match. Thank you. It might be changed after this match. Wait and see. So welcome back once again, the match number 5 between team Kodikere versus Jaya Siddharth. Both the teams are playing their second match of the league.
And as far as the result of these two teams is concerned, both the teams are, of course, Team Kodikere, they won the match, the first match, they won the match against the Kulai Samrats, and even Team Siddharth, they're also, I think, they lost their first match. So very important here for Siddharth to open the account in the points table. And Santosh picked up a single here. The over number 2 is in progress. Scoreboard is 12 on the board, 12 for the without loss of any wicket. Jigresh balls this time. Nicely swept that one. Anup down to fine leg region for an easy single. Anup has played a very good innings in the previous match, but unfortunately he couldn't manage to finish the match for his team because they're chasing a huge total of 53 in the first match. This time, lofted that one. Santosh will going to be out. Santosh once again disappointed. He couldn't manage to perform in this match as well. And Riaz is a man in the mid-wicket region, taking a wonderful running catch. Once the ball is left the bat of Santosh, looks like it's going to be the maximum. But I just mentioned earlier, this is not an easy wicket. This is not an easy tournament to get the big shots like a 6. The ball which is carried to the wicket for the fielder. The wicket number first is back into pavilion. And again, after getting a good start, Santosh couldn't manage to convert that start into big innings. Again, he disappointed. He's back into pavilion. Thank you. As the new batsman just came into middle, Karthik is back into the crease after this dismissal of Santosh, who was caught at deep mid-wicket by Riaz. And nicely place it down to the mid-wicket region. Riaz is a busy customer there. In the mid-wicket, they're going for the second run. In comes the throw from the deep. Chance of run out and it's gone. You can't do that mistake. You can't do this mistake. But Riaz has got a little bit fumble. And they wanted to grab the opportunity. Karthik wanted a second. And he is not happy with his partner. Have a look at that. His disappointment. That because might be is a fumble which is not a big fumble. Ball which is almost in the hands of Riaz there. But his partner Anup wanted to come back. But I think nothing wrong with that run. Anup is running towards a dangerous end because Riaz have to throw that ball into the striker's end. But it's too late for Karthik to regain his crease and wicket number 2 which is back into pavilion. Thank you. 14 for the loss of 2 wicket. Hari Prasad is a new batsman just walking to the middle, towards the middle. After getting a good start, the 2 wickets which is back into pavilion in a 2 consecutive deliveries. Again, nicely place it down to mid-on region. The vacant area, there is no mid-on. And the fielder Riaz have to run towards his front to collect that one. But Gitesh is the one, he is running towards his right to field the ball. Ample time for the batter Hari Prasad to pick the single. With that single, score numbers on to 15 on the board for the loss of 2 wicket. After that, got a very good start from Santosh as well as Anauf. And again, disappointment. And again, the ball is in there for a while, but out of the reach of that fielder after 2-3 rebounds collected by the fielder out down at short third man region. So Anup will going to keep the strike wicket after completion of over number 2, searching for the right track. Team Jaya Siddharth has managed to get only 16 at the score of 8 runs per over.
Thank you. Welcome back again. Nothing wrong with that run rate. It has got a very good run rate, 8 runs per over, 16 runs which is scored in a 2 over the power play. But they lost two valuable wickets back into pavilion. Karthik as well as Santosh is the two batsmen are back into pavilion. That's why it is very important from these two experienced batsmen, Anup as well as Hari Prasad, to anchor the innings because 5 overs remaining in their innings. They need to bat sensibly after getting 16 runs in 2 overs. If they goes on to rotate the strike, they will going to get a very good total score. And Ajay is brought into attack. The first ball nicely swept that one down to square leg region for a single. With that single score, moves on to 17 on the board for the loss of 2 wicket. Ajay, so experienced campaigner, is a man. He's got experience of more than 25 years. It's outstanding career he has got. Very popular leg spin bowler, and he's bowling right arm over the wicket. Full toss delivery. The batsman going for the switch hit. The ball is hitting the branches of the trees, but looks like it's going to be in the declared area. The couple of runs which is declared by umpire. So with that couple of runs, Kautam was on to 19 on the board. A juicy full toss and the premeditated switch hit which is attended by Hari Prasad, and a ball which is landed out of the ground for the declared couple of runs. And with that couple of runs, score 19 on the board for the loss of 2 wickets. So strong breeze is passing in the ground, and here is again Ajay balls swept at one, nicely down to square leg region for a walkable single for Hari Prasad. With that single score, but moves on to 20 on the board. 20 for the loss of 2 wickets are back into pavilion. So sensible batting from these two batters so far, and needed to get kind of sensible batting for Siddharth. Again, the wicket keeper behind the stump faces the ball completely. The opportunity of run out which is created for the backstop fielder. The bye called by umpire. One more addition to total with the addition of that single score. Moves on to 21 on the board for the loss of 2 wicket. This time the wicket keeper fails to collect the ball because Anupis wanted to get that one down to fine leg region. Went for the reverse sweep. Again, wicket keeper missed it. Chance of run out, but again the completed single. Have a look at that. Frustration, leg by call by umpire. This time I think the ball which is hitting the leg of the batsman, and Ajay is not impressed with that effort of the wicketkeeper and the fielder in the behind the wicketkeeper, and there always is a frustration for the bowlers sometime when runs are coming in the form of extras. The score moves on to 22 on the board. Ajay changing the angle round the wicket, and again swept that one. Again the misfield by the fielder. Again they coming back for the second, and they made it quite easily in the end. Couple of runs here. The fielding is not up to the mark, and a couple of runs has been taken. Team Kodikere, and after completion of over number 3, it's a 24 on the board. Run rate is so good for team Jaya Siddhant, and 11 has got a 24 valuable runs at the rate of exactly 8 runs per over. So they're continuing that run rate. That's very important. Even they lost the wicket of Santosh and wicket of Karthik, but I think both the batsmen are really concentration, has got a concentration over that run rate required, and they got 8 runs per over. The 24 on the board for the loss of 2 wickets. And before the next over going to start, it's time for Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 24 for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs. Jay Siddhant, 24 for the loss of 2 wicket in the over after the completion of 3 overs. In fact, 4 overs left in overall calculation in their innings. जहां तक सवाल है चौथे ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए रियाज, जो कि अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार, और ओवर की पहली गेंद, जबकि सामना इस वक्त करने के लिए बल्लेबाज
हरिप्रसाद इस वक्त सामना करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट और रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात राउंड द विकेट है ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े और तेजी के साथ 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके अंतिम क्षण में गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी थी और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन प्राप्त कर लिया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर रियाज एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहे एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी अंतिम क्षण में अपने बल्ले को क्रीज पर रखने में सफल इससे पहले कि विकेट कीपर गेंद को फील्ड करने के बाद विकेट चटकाए यहाँ पर और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित था बल्लेबाज के लिए और जहां तक का स्कोर है तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर एक बेहतर ओवर अब तक रियाज का साबित हो चुका है जिसमें सिर्फ 2 रन पहले 3 गेंदों में वो प्रदान कर चुके हैं और अंपायर जो कि विकेटों को सही करते हुए और मैच जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला फैंटास्टिक टूर्नामेंट in the name of Kulai Premier League 2023 Season 5 is now progressing here and the match number 5 of this tournament is now going on here in this beautiful Chandubai Stadium Venkatramana School and the first session of the 5th match of this tournament is now progressing here और इस वक्त मुकाबला जो कि जारी है टीम कोडिकेरे और जय सिद्धांत 11 के बीच में और अंपायर विकेटों को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए एक बार फिर से रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट परिवर्तन के तौर पर लेग स्पिन गेंद थी गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता चूंकि अपील जरूर लेकिन अंपायर ने नकार दिया और इस बीच 1 रन का इजाफा 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट 4 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं रियाज 3 रन प्रदान कर चुके हैं एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद पहुंची 1 रन का इजाफा फिर से हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज रियाज इस वक्त तैयार तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार बेहतर गेंद थी परिवर्तन के तौर पर ऑफ कटर गेंद और गेंद इस वक्त ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं रियाज कुछ हद तक नाखुश दिखाई देते हुए और इससे पहले कि रियाज वापिस अपने नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचे थ्रो उनको पार करके निकल चुकी थी फाइन लेग पर लॉन्ग लेग पर लॉन्ग ऑन पर फलस्वरूप बल्लेबाज दूसरा रन ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं 4 overs completed and after 4 overs they are still progressing along nicely managed to score 30 runs on the board for losing 2 wickets for Jay Siddhant 11 against team Kodikere. So match number 5 of this tournament is now progressing here. Right after this match, the 6th match of this tournament is now coming up loud exclusively right in front of you between Kulai Predators versus VR Warriors, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और जहाँ तक इस मैच का सवाल है तो मुकाबला इस वक्त जारी है टीम कोडिकेरे और जय सिद्धांत 11 के बीच में। निश्चित रूप से क्रिकेट का त्यौहार यहाँ पर इस मैदान पर मनाया जा रहा है KPL सीजन 5 2023 के नाम पर और ये श्रृंखला ये प्रतियोगिता एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है 5वां मैच का प्रथमार्ध इस वक्त प्रगति पर 4 ओवर फेंके जा चुके हैं इस वक्त जय सिद्धांत की पारी में और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ गुरु इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान एक फील्डर तैनात और गुरु इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर 31 for the loss of 2 wicket at the start of the 5th over. In fact, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त मौजूद कवर पॉइंट मिड ऑफ शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त तैनात इंसाद 20 यार्ड सर्कल और
एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक और वाइड, तो 2 लगातार वाइड यहाँ पर फेंक चुके हैं गेंदबाज और स्कोर एक वाइड के रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। हवा काफी तेजी के साथ मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए इस बार गेंद को उछाला है लंबन पर एंड दिस टाइम ही ड्रॉप दैट वन एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। जस्ट वी हैव वेट फॉर द अंपायर सिग्नल, इट्स अ 4 डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। जहां तक सवाल है गेंद को इस वक्त उछाला था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। किस तरीके से देखिए जीत और कोशिश जरूर की थी, अपना एक हाथ जरूर अड़ाया लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटकर एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर। इट्स 36 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बाउलर। 3 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं, जो एकमात्र सही गेंद उन्होंने फेंकी थी उसमें वो चौका प्रदान कर चुके हैं और इस बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, अपील बैक टू द बॉलर के दिशा में लेकिन इस अपील को नकार दिया और फॉलो थ्रू पर गेंद को फील्ड कर लिया गेंदबाज ने। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला इससे पहले कि सीरी मिडाउन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ये गेंद इस बीच ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन विकेट कीपिंग लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित है। लगभग बिजली की रफ्तार में इस वक्त बिल्स उड़ाए थे विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करने के बाद विकेटों के पीछे, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। अब धीरे धीरे अपनी सही रिदम लय को प्राप्त करते हुए गेंदबाजी में गेंदबाज गुरु और अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। दोपहर का वक्त 2:40 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप अभी भी अपना कहर मैदान पर ढा चुका है और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस वक्त करते हुए ये गेंद ड्राइव करना चाह, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट। गेंद पहुंची गली क्षेत्र पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। मैच नंबर 5 इस KPL सीजन 5 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ ड्राइव किया इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नाउ रन्स आर कमिंग क्वाइट फ्री नाउ और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर शफल होते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ा था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, फील्डर वहां पर मौजूद और इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 5 हैज बीन केम्स टू एन एंड 5 ओवर्स कंप्लीटेड एंड आफ्टर 5 ओवर दे आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन नाउ। 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट scored by Jay Siddhant against Team Kodikar in the match number 5 of KPL season 5 2023 और जहाँ तक बचे हुए ओवर्स का सवाल है तो 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में और 6ठा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। काफ़ी तेज़ हवा इस वक्त गुजर रही है और जिस तरीके से मैदान के हमसे दूर वाले छोर पर जो 7-8 झंडे जो कि गाड़े गए रंग बिरंगी झंडे वो इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ लहराते हुए इस हवा के रुख, तेज़ हवा के रफ्तार की वजह से और निस्संदेह जो हवा चल रही है इस भीषण गर्मी से न सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि दर्शकों को भी काफ़ी हद तक राहत दिला रही है और प्रथमार्ध जो कि इस 5वें मैच का इस वक्त प्रगति पर 6ठे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया और इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड का इस बार एक बार फिर से वाइडिश लॉन्ग ऑफ फील्डर भी गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए और इस बार 4था रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, 3 रन मिल चुके हैं। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने इस पूर्वानुमान के साथ गेंद को छोड़ा था कि वहां पर बैकअप आए लेकिन फील्डर काफी
सीधे वहां पर मौजूद थे और दौड़ कर आए गेंद तक लपकने में तो कुछ मिस जजमेंट वाडिस लॉन्गॉफ के फील्डर ने भी की, तो इस वजह से जहां पर सिर्फ एक रन मिलना चाहिए था वहां पर आसानी के साथ 3 रन बल्लेबाज पूरा करते हुए 46 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिना तो बड़ा विकेट, इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लंगोन की दिशा में, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है सीधे विकेट नहीं गेंदबाज के हाथों में और दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, लगभग बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद चंद टिप्पों बाद और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला, हवा में गेंद, एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। हरिप्रसाद की पारी समाप्त। रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में मिडिल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में पहुंचते हुए इसी के साथ तीसरा विकेट गिर चुका है और स्कोर है इस वक्त 47 रन। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ हर्षित और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज अजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार स्वीप करना चाहा, अपील सिर्फ गेंदबाज से इस वक्त और लेग बाई का इशारा अंपायर का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा। 49 for the loss of 3 wickets. 6 overs had been bowled and now just a last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में जय सिद्धांत के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। Jasin, the bowler is now brought into the attack. The last over starts in जय सिद्धांत 11th innings और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार और इस वक्त सामना करते हुए अनूप जो कि एक बेहतर पारी खेलते हैं और पिछले मैच में भी अनूप ने एक बेहतर पारी खेली थी जय सिद्धांत 11 की ओर से और इस मैच में भी उस सफलता के सिलसिले को वो आगे बढ़ाते हुए और एक बार फिर से गेंदबाज ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर जय सिद्धांत and the last over of their innings. 50 for the loss of 3 wicket in exactly 6 overs और गेंदबाज इस बीच जसीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑन साइड पर प्लम इन फ्रंट और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। So at last Anup is now backing to pavilion after being playing a fine knock for their side. Leg before wicket in the face of Jasim and 4th wicket gone for Jay Siddharth now, and now they are 50 for the loss of 4 wicket and Anup scored 20 runs into his credit, and after being playing a fantastic knock for their side of 20 runs he is backing to pavilion. Jay Siddharth are now 50 for the loss of 4 wicket. So Anup out for 20 of 17 balls and a 4th wicket loss for Jay Siddharth. New batsman, number 6 batsman is now coming out to the middle. और 5 गेंदें इस वक्त बाकी उनकी पारी में और निशाद इस वक्त नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। विकेट कीपर कुछ हद तक फील्डिंग में यहाँ पर जमावट करते हुए
और गेंदबाज निशात ऊपर की अगली गेंद लेकर माफ कीजिए, गेंदबाज इस वक्त जासीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंद को ड्राइव किया, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल। स्लिम डाउन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 4 गेंदें बाकी। जासीम निशात के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में अपना विकेट उखाड़े अपने, और इस बार निशाना टकरा चुका है स्ट्राइकर एंड पर। हालांकि नॉन स्ट्राइकर पर अपने हाथों से तीनों विकेटों को उन्होंने उखाड़ा था, लेकिन तुरंत गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो किया इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। इससे पहले कि नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, थ्रो स्टंप्स को बिखेर कर ले जाता हुआ और रनआउट के रूप में 5वां विकेट गिर चुका है। So Newman is now comes out to the middle. 3 balls left in their innings और गेंदबाज जजीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद स्टंप्स पर टकराई और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, इस बार बोल्ड आउट के रूप में। So lefty batsman, the new batsman is now comes out to the middle और गेंदबाज जासीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में, और जासीम अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस, नो बॉल इस वक्त बीमर गेंद थी और गेंद को इस वक्त पुल कर दिया इस वक्त 2 रनों के लिए। The time is out and the stipulated time is now completed और एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा, 20 गज के दायरे के बाहर से, तो उनके निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है इस वक्त और इस गेंदे बाकी हैं 2। 53 for the loss of 6 wickets and just 2 balls left in their innings और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और दूसरी गेंद के लिए इस वक्त अंपायर मांग करते हुए दे आर आस्किंग फॉर द अनदर बॉल और अगली गेंद लेकर इस वक्त जासीम तैयार और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज जेपी का आगमन हो चुका है और अपनी अगली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, वाइड इज लॉन्ग ऑन पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थ्रो केम राइट ओवर द स्टंप्स फॉर विकेट कीपर फ्रॉम द वाइड इज लॉन्ग ऑन फील्डर एंड बिकॉज ऑफ दैट वन मोर विकेट फॉल ऑन इन द फेस ऑफ रन आउट।
So the last ball of their innings is now coming up. 54 for the loss of 7 wicket. The present score now. और इस बार गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, एक रन मिलेगा दूसरे रन के लिए पुकारते हुए इस वक्त नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को, और दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं और तीसरे रन के लिए दौड़ पर, लेकिन रन नहीं मिलेंगे, रन आउट होता हुआ. देयर इनिंग्स इज अप. दे फिनिश्ड विद 56 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द स्टिपुलेटेड 7 overs for Jay Siddhant, and now the target for team Kodikere is 57. They have to score for victory. Just over 8 runs per over they have to score for victory. That means in exactly calculation it's going to be 8.15 runs per over, 8.14.5 runs per over they have to score for victory. 57 the target in 7 overs, and let's see can the batsmen of टीम कोडिकेरे will reach the target or not. 57 the target, 57 रनों का लक्ष्य, और उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब टीम कोडिकेरे की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर. धन्यवाद. तो अब वक्त है एक ब्रेक का, और एक वक्त है इस वक्त डीजे का. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डीजे. थैंक यू. ಅಲ್ಲಿ VR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ VR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you DJ. Welcome back, and welcome back, and 56 going to be target for team Kodikere to win this match. 56 is a very good total score, and score from team Jaya Siddhant 11, especially the thanks to the innings of Anup, who scored 20 valuable runs, and at the same time the batter Hariprasad has contributed well from his bat, and that's one with the partnership they got that much of runs. Now I think Siddhant will go into feel that if they bowl well, field well, they can win this match, but against a strong batting department of team Kodikere, can they able to get this 56? And here is the bowler Kiran going to start the proceedings, and Gitesh, the icon, the batter, will go into face his first delivery. This time lofted at one, straight down the ground, and one bounce into the fence for 4 runs. Just like I raised one question, can it's going to be enough for the formidable batting department of team Kodikere, and Gitesh intention is very clear. He got that one right over the deep long of boundary for 4 runs. So now Zakiran will definitely under pressure because it's not so easy to keep the fielder for the strokes like that. You can't keep the fielder for that kind of cricketing stroke. Absolutely one of the best stroke to watch. Delightful straight drive there from Gitesh. They can drive that one nicely down to deep long off region. Gitesh is technical player. He's playing as per the merit of the delivery. Beautifully plays it down to deep long off for a single. With that single, Skopan moves on to 5 on the board. Intention is very clear from these 2 opening batters that they wanted to take the advantage of the power play. They need to capitalize that power play. Kiran again, right arm over the wicket to Riaz. Riaz improvising that by playing the switch it down to short third man region. But good
fielding by the fielder from third man, just running back and not giving opportunity for the batter to come back for the second. And Riaz completed a single. Is off the mark with a single. 6 on the board without loss of any wicket. Kiran. Right, over the wicket. Jitesh up and over, down to deep cover point region. Fielder behind the ball, but ball winning the race against the fieldsman. The second boundary comes up here for Gitesh. What an outstanding lofted covered right guard from Gitesh. Just like I mentioned earlier, it's not so easy to keep the batsman like Gitesh for a long time. What an outstanding cricketing stroke. 2 boundaries in that over. Thank you. So third value, the boundary number 2 came from the bat of Gitesh. What an outstanding 2 quality cricketing stroke coming from the blade of Gitesh. Kiran again, right arm over the wicket, boundary. Gitesh drives that one. No need to run for that. Ball down, running down to deep square leg boundary for 4 runs. Third boundaries of this over, and Gitesh is on fire. Three quality cricketing stroke came from the bat of Gitesh. 1 down to deep straight long on, 1 at deep cover point, 1 towards a deep backward square leg. Kiran bowls Gitesh again off the back foot, plays it beautifully down to deep long off region for a single. He will going to keep the strike for the next over, but a very expensive first over is comes in, and 14 came from that over. 15 came from that over. After completion of first over, chasing 57 to win this match. Team Kodikere got a flying start through Gitesh. It's a 15 without loss of any wicket. Time for DJ. Thank you, DJ. So 15 came from the first over, and just like what Santoshis did for his team, the first ball he hit the boundary, but Gitesh here is not only stops that with the 1 boundary, but he picked up 3 boundaries in that particular over number 1. The Ashit will go into ball the second over. Right arm over the wicket, going for the drive, chance of run out in the non-strikers, and it's going to be all over. It's going to be all over if Arshit able to hit the stumps in the non-strikers, and Riaz already given up. Have a look at that one. Batsman Gitesh going for the on drive, and on his follow through, but Arshit turns back, try to hit the stumps, but ball misses the stumps, and Riaz is lucky there, still there in the middle. Arshit wanted to put some pressure, wanted to get someone good over for his team. For Jaya Siddhant 11. And Ashit bowling right arm over the wicket to Gitesh. Gitesh nothing much to do with the delivery. Seeing the ball is going down the leg stump. He's left the ball to the hands of wicketkeeper. White call by umpire. With that excess scoreboard Namuzan to 16 on the board. 16 now without loss of any wicket, chasing 57 to win this match. It's one of the highest total of this tournament. I can say that. This is a 57 is a huge total. And wait and see how well this team will go into get the victory in this particular match. The 56 is a huge total, but after getting that much of good start, and I think the match is evenly poised now. Gitesh picked up a single in the previous delivery, and scored Namuzan to 17 on the board without loss of any wicket. That brings Riaz into strike now. Ashit keeping one field and deep long off. And one at the square leg again. Good comeback here by the bowler Ashit. Exactly. After that, a very expensive first over, the need to bounce back with some good deliveries, good over which is badly required. And
altogether the 5 fielders in the onside region, square leg in front and behind the square. One a short mid wicket, one mid on is there. A deep wide long on. This time, nicely driven. What a magnificent slog save shot coming from the blade of Riaz. Ball went like a tracer bullet. Thank you. What a phenomenal cricketing stroke there from Riaz. Absolutely fantastic, isn't it? Striking his front foot and just played that slog sweep shot quite beautifully. Instrumental sound which just came from the bat of Riaz. And the score jumps into 21 on the board for the without loss of any wicket. Ashit right arm over the wicket. Nicely driven ball. This time off. Looks like the bowler's back drive. And Gitesh might be a little bit worried about that run out because he's always started his run. But Ashish not interested to hit the stumps. It's too late when he's seeing that Gitesh is out of the crease. And the bowler's back dry. Again, a pail is gone. A flum in front of wicket. Against the line, he wanted to swing the ball and he pays the penalty for that. The first wicket is back into pavilion. It's a 21 for the loss of 1 wicket. Thank you. After that, the flying start in the first 2 overs, it's going to be an equation. 36 required from 30 balls for Team Kodigere. But that is a power play. We're witnessing to some very good batting performance from Gitesh as well as Riaz. But now after the power play, wait and see how Gitesh and the new batsman will going to get going here. But the first ball is a slower one there from the bowler Darshan in the negation. Bowled a slow leg spin delivery. Geet is just waiting for that one but couldn't manage to get the placement right. This time reverse sweep comes into play. Plays it down to short cow point region for an easy single. With that single scored Namuzan to 22 on the board for the loss of 1 wicket. The wicket of Riaz is back into play in the last delivery of Arshit's over. Arshit has got a very important breakthrough in his final delivery of that over. And this gave some opportunity for team Jaya Siddhant to back into this game. Of course they back into this game because Riaz wicket is always going to be a huge wicket for any opposition. Darshan bowling right arm over the wicket to the new batsman, left-hand batsman is going for the drive but not getting that much of enough bat onto that, but still he managed to get the single Nihal. With that single score Namuzan to 23 on the board for the loss of 1 wicket. Very difficult sometimes the bowlers like Darshan bowling a very slow gentle leg spin deliveries. The batsmen have a little bit patience, isn't it? They need to wait for the ball to coming to the bat. Again went for the reverse sweep. He got the fire placement. Looks like Gitesh wanted a second there, but probably there's opportunities created for the second. But Gitesh already made his mind that he wanted to settle for the single. So with that single score Namuzan to 24 on the board, 24 for the loss of 1 wicket, chasing 57 to win this match. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Darshan again, right arm over the wicket bowls. There's a nicely driven against the line, swings that one down to mid wicket region. Arshit, the fieldsman, has got a very good arm, throwing arms. Fantastic return coming from the field. One more single is added to total. With that single scored Namuzan to quarter century. The 25 comes up in quick times. 25 for the loss of 1 wicket.
Still 32 more runs required for the wicket. Drives a beautiful extra cover drive. But Ashit is there in the deep extra cover. They're going for the second. In comes the throw from the deep. Chance of run out. Oh my goodness. Darshan couldn't manage to collect the throw from the fielder. Ashit has done a good job in the deep in the extra cover. But unfortunately, Darshan fails to collect the throw. Batsman survives. Completion of over number 3. It's a 27 on the board for the loss of 1 wicket. Another 30 runs required for the victory in the remaining 24 deliveries. Thank you, DJ. Thank you. And 2-3 overs, outstanding 3 overs, but an outstanding chasing here from Kulai. Krishna team Kodikere. So far, they are not given up this match. Oh, what a shot! Driven that one, but straight to the hands of Ashit there in the mid-wicket region. Wicket number 3 is back into 2 is back into pavilion. It's a 27 for the loss of 2 wicket team Kodikere. Thank you, DJ. Thank you very much. Some entertainment in left of our commentary box as well. Some interested, very excited spectators having some fun in the music and getting some entertainment for the spectators. Meanwhile, one more single has been taken by the batsman with that singles cover Namuzan to Sunil picked up a single and scored Namuzan to 28 on the board for the loss of 2 wickets. Gitesh, after a long time, back to strike now. And he will go into face Santosh. It's a very good contest between these two. Santosh versus Gitesh. Drives that. What a shot that one. Of course, he will go to get a single for that, but it is a delightful cricketing stroke there from Gitesh down to deep extra coverage. And with that single, score number was on to 29 on the board for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in, 4 is in progress. It's a good comeback here by the bowlers. Ball him, clean him up. This is a Santosh for you. He's a master of doing that one, isn't it? The bowler, the batsman is playing for the leg cutter, but is quickly realizing that is an incoming delivery. And have a look at that one in the replay. It's always going to be dangerous delivery there from Santosh. One more wicket is back into pavilion. And wicket number 3 is back into pavilion. It's at 29. Thank you. So Santosh strikes again in this over and he bowled beautifully and to pick the wicket of Sunil. And the new batsman Jasir is a striker and Santosh the bowler. This time improvising quite nicely by implementing that switch it quite delicately down to backward point region for a single. With that single, Skubna moves on to 30 on the board. Another 27 more runs required for the victory.
The over number 4 is in progress. Santosh again. So far is so good in this over. Item over the wicket and nicely driven down to deep mid wicket region. Protection has been given in the deep so that batsman out to settle for the single. He will going to keep the strike for the next over. Wonderful over which is comes in there from Santosh. After completion of over number 4, chasing 57 to win this match. Team Kodikere are 31 on the board. That means another 26 more runs required for the victory in 18 deliveries. And wait and see how well Team Kodikere will going to get this 26 runs in the remaining 18 deliveries. And before the next over, we're going to start the time to change in commentary boxes. Oh, to Gopi for the further explanation of the match. And Gopi having Gitesh in the middle. Looks like the match is evenly poised. But the problem continues here for Gitesh is that he's not getting support from other end. The one batsman have to give a stand for Gitesh, and he will going to do the job for the team Kodikere. But as far as the team Siddharth is concerned, I think they knows that the wicket of Gitesh is so important for if they wanted to win this match. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा गितेश का विकेट इस वक्त की विकेट है और गितेश का विकेट अगर प्राप्त करते हैं तो निस्संदेह वो इस मैच में वापस आ सकते हैं। फिलहाल जहां तक सवाल है बैटिंग साइड का, तो गितेश का विकेट उनके लिए भी बेहद जरूरी है। गितेश क्रीज पर रुकना इस वक्त जरूरी बन चुका है टीम कोडिकेरे के लिए। और यहाँ पर पहली गेंद को उछाल दिया इस वक्त और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Absolutely fantastic piece of batting performance continuing here from Gitesh. और एक बार फिर से इस बार again, but this time straight into the hands of fielder. तो गितेश का विकेट यहां पर गिर चुका है और मच नीडेड विकेट फॉर जय सिद्धांत। और इस विकेट के पतन के साथ इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा जय सिद्धांत कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। तो टीम कोडिकेरे के लिए गितेश प्लेटफॉर्म तय करने के बाद इस वक्त पेविलियन वापस लौट चुके हैं और 27 रन उन्होंने बनाए। स्कोर 27 रन्स बाय गितेश एंड आफ्टर बीइंग प्लेइंग अ फैंटास्टिक नॉक फॉर देयर साइड ऑफ 27 रन्स ही इज बैक टू पेविलियन। 17 इनफैक्ट इट्स 19 रिक्वायर्ड। और इस बीच गेंद को स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ। गेंद जाते हुए इस वक्त पॉइंट की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर। 18 रन चाहिए विजय के लिए, 15 गेंदें बाकी, 15 balls left and 18 more runs. Now they have to score for victory. Still the match is now evenly poised. और गीतेश का विकेट का पतन निस्संदेह कुछ हद तक यहाँ पर ड्रॉबैक साबित हो सकता है टीम कोडिकेरे के लिए। इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी पार्टनरशिप यहाँ पर। इस बार गेंद को हल्के से पुश कर दिया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए शॉर्ट कवर पर गेंद को खेला था और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर। इट्स 40, 17 रिक्वायर्ड, 14 balls to go in their innings. गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दर्शन दाईनाथ के बल्लेबाज के लिए बेहतर गेंद। इस बार गेंद को खेलने में चूके और विकेट कीपर ने दूसरे प्रयत्न में अपने बाईं ओर जाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया। तो डॉट गेंदों की सख्त जरूरत है इस वक्त जय सिद्धांत 11 को इस मैच में वापसी करने के लिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी। एक बार फिर से डॉट गेंद। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 40 रन, 17 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी, 17 runs to get in remaining 12 balls with a required run rate of exactly 8.5 runs per over for team Kodikere. $17 required in 12 balls.
In fact, it's a 18 रिक्वायर्ड इन 12 बॉल्स और जहां तक सवाल है इस वक्त 18 रन बनाने 12 गेंदों में और देखते हैं यहाँ पर अगली ओवर में क्या होता है। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए मेरे ख्याल से गेंद है इस वक्त संतोष के हाथों में, वो इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करेंगे और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, लॉन्ग ऑफ इस वक्त बिल्कुल सीधा दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद है। 4 खिलाड़ी कुल मिलाकर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ओवर की पहली गेंद लेकर संतोष इस वक्त तैयार। 18 रिक्वायर्ड इन 12 बॉल्स। पहली गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। और जब गीतेश का विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त कुछ हद तक दबाव जरूर बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई देता हुआ, जासीम और अजय के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मौका जरूर है उनको इस मैच में कम बैक करने का। एक करारा प्रहार चौके या छक्के के रूप में परिवर्तित होता है तो निस्संदेह यहाँ पर टीम कोडी करे इस मैच में पूरी तरह वापसी कर सकता है। ये गेंद इस बार विकेट कीपर के हाथों में, गेंद अपील जारी है लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। और अंतिम क्षण में विकेट कीपर कहते हुए कि बल्ले पर गेंद टकराने के बाद बल्लेबाज के फुट पर गेंद टकरा कर उनके हाथों में पहुंची है, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद वहां पर उनके शायद उनके बल्ले पर टकराने के बाद जमीन पर टिप्पा खा चुकी है और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित है। स्कोर रुक चुका है इस वक्त कुल मिलाकर 40 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 10 In fact, it's a 10 balls left and 17 more runs now they have to score for victory. और संतोष इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट। ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी और एक बार फिर से बल्लेबाज को चकमा देने में सफल है। तो आक्रामक का करारा प्रहार इस वक्त करना चाहता, चूंकि गेंद की धीमेपन को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद, फिर से एक बार संतोष तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद पहुंची मिड ऑफ पर, मिस फील्ड इस वक्त, लेकिन बल्लेबाज को दूसरा रन नहीं मिलेगा। बैकअप वहां पर होता हुआ और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 41 रनों पर। 8 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए। 16 runs to get from 8 balls. The asking run rate is now creeping up for team Kodikere. They need at least 1 big strokes to get back into this match in the face of boundary or 6. और इस बीच गेंदबाज रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, चूके पूरी तरह गेंद सीधे विकेट कीपर गया था। मैन, दिस इज टर्निंग आउट टू अ फैंटास्टिक ओवर in Jay Siddhant 11's point of view. 7 balls to go and 16 more runs now they have to score for victory. और अंतिम 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त कमबैक कर चुके हैं जय सिद्धांत के गेंदबाज। खासकर गीतेश का विकेट जब गिरा उसके बाद धीरे धीरे इस वक्त अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गेंदबाज जय सिद्धांत के 7 गेंदें बाकी और रन से चाहिए 16। संतोष अपनी ओर की अंतिम गेंद है, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके थर्डमैन की दिशा में गेंद जाती हुई, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा और इसी के साथ यहाँ पर अंपायर इस वक्त अंपायर बढ़ते हुए स्ट्राइकर की ओर कुछ कहते हुए खिलाड़ियों से, शायद वहां पर बेल से पहले डिस्टर्ब हुए थे या फिर कुछ जरूर हुआ था वहां पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त रन्स का, तो 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज। तो इस वक्त बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 43 नाउ, 14 नीडेड इन लास्ट ओवर।
So 14 रिक्वायर्ड इन द लास्ट ओवर और निशाद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं। निशाद पिछले साल के केपीएल में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था और यहाँ पर देखना है इस मैच में क्या करते हैं। गेंद को उछाला इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के अंदर फील्ड कर ली गई है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर और कम से कम अपनी टीम को 2 रन यहाँ पर बचा चुके हैं। जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे अपनी दाईं ओर से गेंद को ढकेल दिया उन्होंने सीमा रेखा के अंदर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर गेंद को ढकेला था। लुक एट दिस इन द रिप्ले और निस्संदेह इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत बल्लेबाज को और निस्संदेह एक चौके या छक्के की इस वक्त जरूरत इस मैच में वापसी करने के लिए, कमबैक करने के लिए बल्लेबाजों को। अगली गेंद, यह गेंद उछाला था बेहतरीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। He's gone. He's gone and he is backing to pavilion. One more wicket fallen. और जिस समय विकेट चटकाए गए थे तब बल्लेबाज का बल्ला हवे में था. The bat was in the air. और इस वजह से यहाँ पर तृतीय अंपायर ने उन्हें आउट घोषित किया. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 45 रन. 4 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए विजय के लिए. 12 needed in remaining 4 balls now. So 12 needed in 4 balls और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बॉल्ड आउट. One more wicket fallen. Fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowler. और लगातार दूसरा विकेट यहां पर वो प्राप्त कर चुके हैं. Now 12 required in 3 balls. So consecutive wickets for the bowler and the hat-trick ball from him is now coming up. और hat-trick गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. निशाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट. 12 रन चाहिए 3 गेंदों में. ये गेंद इस बार उछाला बैक टू द बॉलर की दिशा में, आसान सा रन आउट और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. And now the last chance in front of the batsman. 2 sixes required in the last 2 deliveries. 2 छक्कों की जरूरत है. 12 रन चाहिए 2 गेंदों में. और इस बीच निशाद गेंदबाजी कर रहे हैं गुरु के लिए. दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद को लपक लिया गया है यहां पर.
So the last ball remaining, and a fantastic catch taken by the deep mid wicket fielder. ऐसा कहना पड़ेगा, just play that one against the wind. और गेंद अपनी रफ्तार को खोकर deep mid wicket fielder द्वारा लपक ली गई. अंतिम गेंद, ये गेंद उछाला और इस बार एक और विकेट. So 4 wickets, 5 wickets fall in the last over. और इसी के साथ ये मैच समाप्त हो चुका. 11 runs victory for Jay Siddhant against Team Kodikere. They registered 11 runs victory, and with that 11 runs victory, they bagged the complete points. Now it's time to announce the man of the match. The man of the match of this match, the award goes to the batsman who batted very well in the innings of Jay Siddhant. He scored 20 runs in 17 balls, came as a and I request Anup, who scored fantastic. Man of the match. I request Mr. Anup of Jay Siddhant to please come on to the stage and receive the man of the match award from Mr. Dikshit. Mr. Anup of Jay Siddhant. So Anup, I request Anup of Jay Siddhant. So match number 5 has been came to an end, and Jay Siddhant 11 registered 11 runs victory against Team Kodikere, and with that victory they back the complete point. Now the 6th match of this tournament is now going to begin between Kulai Predators versus VR Warriors, and in this match Kulai Predators, after won the toss, they elected to field first, and that match is now coming up live and exclusively right in front of you within just a short while. And now it's time for Anup to receive the man of the match award. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿರವರೇ. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದಂಥ ಆಟಗಾರ ಅನೂಪ್ರವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೂಪ್ರವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ? ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಚೇಸ್ ಒನ್ ಪರ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬು ನಂದು ಅಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕಲ್ಡ ಗೈಡ್ಗೆ ತೊಂದು ಇತ್ತ ಗುಬ್ಬಿಯಾರಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಹವಾದ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೇರು ಕುರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹರೀಶರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನೂಪ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ. ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡಿಕೆರೆದ ಗೀತೇಶ್ ಮೇರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗೀತೇಶ್ ದೇಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆತ ಗೀತೇಶ್ ದೇಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಗೋಬಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಗೊಬ್ಬದು ಟೀಮುನು ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಂಚಿ ವಿನ್ ಆಪಿನಂಚಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 27 ರನ್ ಒಟ್ಟು ಪಡೆದು ಟೀಮ್ಗೂ ಆಧಾರವೈನಂಚಿನಾರು ಗೀತೇಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ದ ಓನರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತದೆ ಬಂದ ಓನರ್ ಎಂದೇ ಪನೋಡು ಗೀತೇಶ್ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಮ್ಮಿಂದ ಬಂತು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ್ರಿ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಸೋತ್ರು ಕೂಡ ಆ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಜಯದ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂಡದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ತಾವು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓನರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓನರ್ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದು ಓನರ್ ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ತಾವು ಆದರೆ ತದನಂತರದ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಏನೋ? ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲೇ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಅವಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾಲ ತೂಯರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಷ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಅವಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೀಮಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತೀನಿ, ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಿನ್ ಆದಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇವರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಗೀತೇಶ್ ರವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೀಶ್ ರವರಿಗೆ. ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಸರ್. Thank you very much. Thank you very much, Dikshit, in the presentation ceremony, and we are straight away into the match number 6, and after winning the toss, selected to field first. Kulai Predators, they started their bowling, and Shakir started his first over, and Deepak has got his first run, and altogether the second run came for VR Warriors. So Deepak is in strikers, and again driven that one down to deep square leg region. They're running hard looking for the second, but good piece of fielding there by the fielder in the deep, so that batsman have to settle for the single. So Surendra is also because Deepak has got his second run, and total score now moves on to 3 on the board. So Kulai Predators, they lost their first match against Royal Strikers, and VR Warriors, they won their first match, and they're looking towards the second victory of the league match. Lofted at one, but not quite enough. Oh, drops the catch by the fielder at deeper long off. What could be a certain wicket here for Shakir? And the fielder in the deep long off looks like almost he's got there, and his ball just slipping out of his hand. He dropped the catch. Surendra got a life. The 5 without loss of any wicket in the over number first is in progress. It's not a kind of fielding effort which will going to help the fielder, help the bowler to get the wicket. Again up and over the top of that mid-off fielder. And before the fielder from deep long off to collect that one, ample time for the batter Surendra to collect a couple of runs. With that couple of runs, covered numbers on to 7 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Shakir. Alright, I'm over the wicket balls. Zam trying for the quicker one, but he's just lost his concentration over the line. Ball that is going far away outside the line of leg stump, and wide call by umpire. With that excess cover numbers on to 8 on the board without loss of any wicket. Shakir. Ball's beautifully bowled, perfect one, but ball just going down the leg stump, and leg by call by umpire. One more addition to total. Good over for VR Warriors. VR Warriors got a good start. 9 came from that first over of Shakir. 9 without loss of one wicket. What could be a certain wicket taking over? The drop catch by the fielder, so that it's going to be a good start for Warriors.
Thank you. Welcome. Welcome back. And Prasad has got a ball in his hand. Is a very experienced campaigner. Prasad will going to ball the second over of the power play to Surendra, keeping one fielder in the deep long off and deep long on. And the two fielders outside the circle. Right on the money is possible. Chance of run out in the non-strikers and a throw which is not good enough. And a little bit wide throw for Prasad to collect the throw from that short mid-wicket field. And Surendra completed quick single. With that singles cover numbers on to double figure 10 on the board without loss of any wicket in the over. Number second is in progress. Prasad, the bowling with a short run up, passed on by Arish Padil. Balls this time Deepak drives that one, and a very good stop there by the short mid-on fielder. Yes, the mid-on fielder down at inside the ring. The fields the ball off stop, and the batsman got a single here. With that single score was on to 11 on the board without loss of any wicket. Surendra going for the drive again. The fielder down at short mid wicket fields the ball. Ample time for Surendra to rotate the strikes. Both the batsmen are doing right job, not wasting a single deliveries as far as the rotation of strike is concerned. 12 on the board without loss of any wicket. Prasad. Balls this time Deepak drives that one. Little bit correction. Surendra drives beautifully. Looks like it's going to be a boundary there, but the Deepak is a kind of batsman who loves to play that shot. He knows that the mid on inside the ring there is a mid wicket, and once he defeats that infield, it's going to be a boundary. And that was perfectly struck there by Deepak, and he's got a strong arm, and he's just put that one down to deep mid on deep. Lip correction, long on boundary for 4 runs, and cert value boundary coming up here for Deepak there. Prasad again. This is swings that one, swings it hard, down to deep skylark boundary. Wait for the umpire signal. It's going to be one bounce into the fence. Second consecutive boundary. Thank you. So Deepak is going after Prasad, and the second consecutive boundaries came from the bat of Deepak is on fire. And score jumps into 20 on the board. And line flum in front of wicket. Absolutely perfect comeback here by Prasad. After that, back-to-back 2 wickets. He wanted to swing that one on the onside region, and absolutely is finding right in front of middle stump, and he's back into pavilion. And Arish Padil has got no hesitation in his mind to raise his finger. And wicket number first is gone. It's a 20 for the loss of 1 wicket. Thank you. So 20 runs came from first 2 overs of the power play. That means the 2 overs which belongs to team Warriors are got a valuable 20 runs in 2 overs by losing 1 wicket. Wicket of Deepak, which is back into pavilion. The last delivery of the previous over. Prasad is producing a very vital breakthrough in the form of leg before wicket. The new batsman in his one more master class. Shivaraj came into middle, and he will be in the non-strikers, and Akim brought into attack. Akim, one more very good all-rounder for the side. You know exactly the condition of the game. After that, 2 expensive overs, he need to put some break on the run rate. Of course, after picking a wicket of Deepak, all the chances here for the fielding team, Kulai Predators, to get some good overs so that to put some break on the run rate. Akim, first ball right arm over the wicket, balls, and going to be a wide of the first ball, and is going down the leg stump, and little margin for error. One more addition to total addition of that extra score, Namuzan to 21 on the board for the loss of 1 wicket.
This time nicely turns that one down to square leg region for an easy single. They're looking for the second, and in fact they're coming back for the second. And with that couple of runs, that score now moves on to 23 on the board. The runs are coming very freely for team We Are Warriors. Of course, they got some very big warriors like Deepak is the one warrior. It's back into pavilion, but nothing much worried about that wicket because Shivaraj is replacing that batsman. Hakim again going for the big swing of the bat, missed it completely, but umpire not missing the opportunity to call that wide. One more extra, one more wide. With that extra score, moves on to 24 on the board without loss, for little correction for the loss of one wicket. Hakim again bowling with a short run off. Right arm over the wicket to Surendra. Surendra lofted that one high up in there. Will it go into a chance here for the fielder? Yes, it does. The square leg fielder making no mistake at all. Looks like the Bharat is charging in from the square leg region. Complete the catch in front of square. The wicket number 2 is back into pavilion. It's a 24 for the loss of 2 wickets. Thank you. It's a 24 for the loss of 2 wickets. So that is just now the batsman Surendra is back into pavilion. The both opening batters are back into pavilion. Hakim has got a vital breakthrough for his team. And Anil is a new batsman in. Hakim, right up over the wicket to Anil. Anil this time, ball is just around this playing area. A little bit outside the 9 of leg stamp, but the batsman completely missed out the delivery. Hakim has bowled a quicker one and the faster one, beaten by the pace. And back to bowling mark. Hakim again, right arm over the wicket bounce. This time top edge. Opportunity of the one more wicket here. Opportunity for the one more wicket is Hakim picked up a wicket number 2 in this over. Altogether the wicket number 3 is back into pavilion. It's a 24 for the loss of 3 wicket. Wonderful performance there from Hakim is continues in this over. Thank you very much. And one more wicket is back into pavilion. Hakim picked up wicket number 2 in this over. One more wicket and cotton balled. Anil wanted to get that one over the square leg region, but he got a leading edge. And Hakim completes the catch in his follow through. Pratap is a new batsman in. One more fantastic all rounder. One who got a man of the match award, even the purple cap in his head for this outstanding bowling performance in the previous match. Hakim right arm over the wicket again. Pratap off the back foot turns that one down to mid wicket. He wanted to get the placement, but fielder is so good in relegation down at mid wicket, so there is no chance at all for any run. And score remains on 24. It's Hakim again. Right arm over the wicket. Pratap off the back foot quite nicely driven down to the score cover point region for a single. With that single, one more over completed. After completion of over number 3, it's a 25 for the loss of 3 wicket. The team We Are Warriors. Thank you. So the kind of over which is badly required for the team
Kulai Predators, Akeem produced that over in the previous one, but wait and see how well this bowler will going to continue. The Sukesh is brought into attack. Right above the wicket, Pratap nicely flicks that off his legs there, going for the quick single in that occasion. And opportunity is created for the run out after that. Pratap flicks that and off his legs, but ball is not too far away from the fielder, isn't it? The fielder picks the ball, returns the ball, but ball misses the stumps and Pratap survives from that run out. With that single, Skubal moves on to quarter century. It's 26 on the ball already, 25 past 26 now. And here is again nicely driven down to deep long on region by Sivaraj for a walkable single. With that single, Skubal moves on to 27 on the board. Shivar is a classical batsman. It's very nice to watch whenever he's hitting some traditional cricketing stroke. And here is again right arm over the wicket balls. Pratap, so easy for him to, as far as the rotation of strike is concerned. He's master of doing that, and as always, he do the job. When he wanted to settle down in the middle, he do the same thing, that pushing the ball here and there, rotating the strikes. This time Shivaraj went for the big shot on the onside region, but ball is just going towards the fine leg region after the ball is got a little bit back onto that, and instead of hitting for the slog sweep shot, of course sometimes it's very difficult for a player like Shivaraj to hit the slog sweep shot, and Skubal moves on to 29 on the board. Again Pratap pushes that one down to short mid wicket for an easy single. And with the single, Skubal moves on to 30. This is intelligent cricket from these two batters. They know exactly they got a very good start in the first 2 overs of the power play, so that just the rotation of strike is enough for them to get some good score. Again, these all are the extra runs, extra deliveries will go into a bonus for the opposition team. One more extra, Skubal moves on to 31 on the board for the loss of 3 wicket. Sukesh again. Right, over the wicket balls to Shivaraj. Shivaraj drives that one again, straight to the hands of short mid on, chance of run out there again. The throw which is just misses the stumps. And one more over completed. After completion of over number 4, the team we are Warriors are not that much of worries there for the Warriors as far as the run is concerned. They got a 32 valuable runs in 4 overs, and wait and see how well they will going to continue in the remaining 2 overs. It's going to be a change in commentary box in our commentary box, and I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Indeed, thank you. धन्यवाद सतीश। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बन चुके हैं। 5वें ओवर की पहली गेंद शिवराज के लिए, गेंद को ड्राइव किया इस वक्त तो कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, लेकिन प्लेसमेंट तो कुछ खास सही नहीं, रन से नहीं मिला। मनोज जो गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं और वी आर वॉरियर्स इस वक्त बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ, और मनोज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद उछाला इस वक्त शिवराज ने, लेकिन फील्डर डीप मिड विकेट पर कैच को लपकने में सफल। So Viraj, the new batsman, is now comes out to the middle,
और वो इस वक्त सामना करते हुए मनोज की गेंदों का। दाहिना तो बढ़ता विकेट, मनोज की गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, 33। पिछले गेंद पर शिवराज ने गेंद को स्विंग करना चाहा था, लेकिन गेंद ही जस्ट प्लेड दैट वन अगेंस्ट द विंड एट द लास्ट मोमेंट कहना पड़ेगा, और गेंद को डीप मिड विकेट पर एक बेहतरीन जजमेंट के साथ फील्डर ने लपका और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 33 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार विराज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड नंबर 2 इस ओवर में। अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए मनोज 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद विराज के लिए, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 35 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। मनोज हल्की सी सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल फ्रॉम प्रताप, हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया, बल्ले और पैर के साथ लाते हुए शॉट सिली पॉइंट की दिशा में, और 1 रन तेजी के साथ चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 36 रन बच चुके हैं और मनोज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट चिप किया इस बार, लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में आफ्टर फर्स्ट बाउंस, पहले टिप्पे के बाद, और 1 रन बल्लेबाज इस बीच प्राप्त कर चुके हैं। ओवर नंबर 5 संपन्न हो चुका है, 5 overs completed, 37 on the board, 4 wicket loss. So Hakim, the bowler is now brought into the attack. His second over, और छठा ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर वीआर वॉरियर्स की पारी में प्रताप इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, विराज सामना करने के लिए तैयार, और हकीम अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिना तो बढ़ता विकेट, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, कट करना चाहा बल्लेबाज ने चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेगा। और फिर से एक बार हकीम गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट, ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, मच स्ट्रेट लाइन, और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया स्वयं गेंदबाज हकीम द्वारा, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार गेंदबाज हकीम अपने रनअप में कुछ हद तक इस वक्त बाधा, और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए, 1 रन मिलेगा, 2 फील्डर 3 फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज ने 2 रन दौड़कर पूर्ण कर लिया। एब्सोल्युटली सेंसिबल क्रिकेट, पहले ही भाप लिया था खाली क्षेत्र को, शॉर्ट फाइनल के बीच और शॉर्ट स्क्वायर के बीच में, और वो जानते थे बल्लेबाज की फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर काफी पीछे, हल्के से गेंद की इस वक्त ग्लाइड कर दिया ऑफ द टोज, और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए। चतुर क्रिकेट, क्लेवर क्रिकेट इस गेंद पर अपनाते हुए बल्लेबाज, और एक बार फिर से गेंदबाज हकीम की गेंद बैकफुट पर गए खूबसूरती के साथ, गेंद को एक बार फिर से निकाला है, 2 रन मिलेंगे इस वक्त, काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन न प्राप्त करने का। एक बार फिर से सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अपना इस वक्त बल्लेबाज विराज ने ऑफ साइड पर गेंद को इस वक्त स्क्वायर हाथों विकेट गेंद को पंच किया था 2 रनों के लिए, और स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ पहुंच चुका 41 रनों पर। हकीम इस बार टॉप एज मौका, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए और गेंद को लपकने में सफल, एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। So new batsman
is now comes out to the middle. नंबर 7 बैट्समैन और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार हकीम की गेंदों का ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक लेग से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और आखिरकार गेंद को छोड़ दिया बल्लेबाज ने, गेंद फील्ड कर ली गई विकेट कीपर द्वारा। ओवर की समाप्ति, बेहतर ओवर समाप्त हो चुका है हकीम का और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट स्कोर्ड बाय वीआर वॉरियर्स इन their first 6 overs in the match number 5 of Kulai Premier League 2023 season 5. Cert value जो कि टाइटल स्पॉन्सर है इस श्रृंखला के और इस श्रृंखला के हर मैच में मैन ऑफ द मैच मोबाइल के रूप में उन्होंने प्रदान किया है। हर मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को मोबाइल फोन प्रदान किया जाएगा इनाम के तौर पर, जो कि सर्ट वैल्यू जो कि टाइटल स्पॉन्सर है इस श्रृंखला के उन्होंने इस वक्त घोषित किया है। और जहाँ तक पहले 5 मैचेस का सवाल है, 5 मैचेस में मैन ऑफ द मैच के रूप में मोबाइल फ़ोन प्रदान किए गए और देखते हैं और कितने खिलाड़ी इस मोबाइल फ़ोन के हकदार यहां पर बनते हैं जो कि सर्ट वैल्यू ने घोषित किया है, सर्ट वैल्यू ने घोषित किया है। और यहां पर डेड बॉल और इस बीच अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। प्रसाद गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार प्रताप इस वक्त सामना करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार तैनात ओवर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खेला इस वक्त खूबसूरती के साथ प्रताप ने डीप मिड विकेट पर क्लीन कलेक्शन, इन कम्स द थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ द बॉलर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर। 42 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स in the over number 7 and the last started just short while ago, played that one gently into the hands of short extra cover fielder। जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर अपनी बाईं ओर जाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। गेंदबाज प्रसाद एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद प्रताप के लिए खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन पूर्ण कर दिया। बेहतरीन तरीके से खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट और 2 रन बल्लेबाज इस बीच पूर्ण कर चुके हैं। 45 for 5 और प्रसाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाइनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार टॉप एज लेकिन फील्डर काफी पीछे लॉन्ग ऑन पर 1 रन दूसरे रन के लिए दौड़ पर स्ट्राइकर रन पर थ्रो और इस बार ये विकेट गिर चुका है। यहां पर काफी चतुर सोच यहां पर अपनाई थी, फील्डर ने सीधे स्ट्राइकर रन की ओर थ्रो किया काफी चतुरता के साथ और इस बेहतर सोच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। इट्स 46 for 6। धन्यवाद डीजे। और यहाँ पर अगले मैच के लिए मैं इस वक्त दावत देता हूँ कुलाई सम्राट्स और भगवती फ्रेंड्स कुलाई को कि कृपया उनके खिलाड़ी स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना साइन हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए। दाइनात ओवर द विकेट गेंदबाज किया, गेंद ड्राइव किया इस वक्त तक मिसफील्ड वहां पर शॉट सिली मिड ऑफ फील्डर शाकिर द्वारा और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता स्वयं गेंदबाज द्वारा 1 रन का इजाफा हो चुका है। अंतिम गेंद इस वक्त लेकर तैयार प्रसाद। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी करते प्रताप के लिए ड्राइव किया इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड रन आउट और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। अंतिम गेंद पर प्रताप का विकेट गिरा। सो द इनिंग्स इज अप एंड दे फिनिश्ड विद 47 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द स्टिपुलेटेड 7 overs for VR Warriors and now they set a victory target of 48 for Kulai Predators. Meantime, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಳಾಯಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಳಾಯಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game. 48 the target and in 7 overs they have to score with a required run rate of just under 7 runs per over. और देखते हैं क्या
कुलाई प्रेडेटर्स के बल्लेबाज इस 48 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. 48 द टारगेट फॉर देम. 48 रनों का लक्ष्य और उनकी पारी की शुरुआत होगी चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब कुलाई प्रेडेटर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. एंड नाउ इट्स ऑल्सो टाइम फॉर डीजे. थैंक यू. धन्यवाद. Thank you. Welcome back. And 48 is going to be a target for the team Kulai Predators to win this match. Of course, the Kulai Predators, they wanted to win this match because they lost their first match against the Royal Strikers. And we are Warriors and managed to get 47 runs and they set a target of 48 to win this match. And the highlight of the innings and the highest score from Deepak. Left hand Deepak scored 11 runs after 6 deliveries, and then Pratap scored 9 valuable runs, and Viraj scored some runs in the slog over. So altogether it's a fighting total on the board. 48 is the target, and opening batters Shakir of team Kulai Predators will go into face first ball, and typical Shakir's cricketing stroke, single-handed steer down to short third man region for a single. With that single is off the mark and total off the mark, and one without loss of any wicket. Vinod will be the striker. Vinod will going to take the strike against the bowling of Viraj. Right arm over the wicket, going for the reward sweep, but the ball is going further away, so that no hesitation there from umpire Arish Padil to signal the wide. 2 without loss of any wicket. 42 balls and 48 runs required for the victory. And 7 runs per over, a little bit of correction, 6, almost under 7 runs per over is the required run rate for the team of Predators to win this match. Viraj keeping one fielder out there in the short fine leg, and one fielder at square leg, in front of square and behind the square. The fielder down at deep mid wicket, and one fielder down at deep long off. So meanwhile, for the 7th match, Kulai Samrats takes on Bhagavati Friends Kulai, so that I request two teams captain please be reported for the toss. The signatures procedures is in progress. And one more single is added to total, as Viraj considered single for Vinod. Vinod is off the mark. 3 without loss of any wicket. Viraj. Right arm over the wicket, Shakir went for the same shot, ball is in the hands of the fielder, this time it's gone. Vinod, I think Vinod wants the singles. Shakir has already made his mind that he will not going for the single, because ball went straight to the hands of short fine leg region, but might be there the opportunity of single. And unfortunately, Vinod is back into pavilion.
This is not a kind of start here for the team Predators wanted. It's 3 for the loss of 1 wicket. So thank you very much. There's one more delivery which is completed, and dotted deliveries. Viraj is really doing a good job in this particular over, and the batsman Akim is in non-strikers end. Viraj right arm over the wicket to Shakir. Shakir this time going for the expansive drive. Luckily that ball is just misses the stumps. Looks like Shakir has lost his patience after that consecutive 2-3 dotted deliveries. He wanted to break the shackle, but fortunately for him, that ball just misses the stumps. And good bowling there from Viraj. So far, he's just keeping the batsman very quiet. This time again, that ball is very close to the stumps. The Shakir picked up a single again. Very good over which is considered there from Viraj. He really testing the temperament of Shakir in this over. After completion of over number first, chasing 48 to win this match, Predators are 4 for the loss of 1 wicket. Thank you, DJ. So a lot of cricketing action is coming up, and in the coming Monday, there will be one more big tournament is coming up in UCG Cricket Ground. Sauharda friends presenting Sauharda Trophy 2023. The big tournament open as well as local teams will going to participate in that Sauharda Trophy 2023. Right, over the wicket. Shakir went for the big shot again. He misses the line completely. And the Shakir looks like he's uncomfortable in the middle. And that's what the batsman have to take a little bit time to be relaxed. And it's not an easy condition for the batter. I've already mentioned in this particular cricket ground, you need to be very cool and calm. But no one can question about the talent and the calmness of Shakir. He's a very cool customer. But sometimes the condition of the game is not so easy to handle the pressure. Right arm over the wicket to Shakir. Shakir again misses the line completely, but umpire not missing the opportunity to signal the wide because that ball is far away outside the line of off stump, and with that single scope moves on to 5 on the board without loss of any wicket, loss of 1 wicket. This time Shakir inside out cricketing stroke down to deep cover point region, but the ball will not going to travel towards the boundary. And just inside the boundary line, that fielder from deep long off to run across to his left to field the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. And after a long time, that Shakir has got one confident lofted drive down to deep cover point region. And the score moves on to 7 on the board without loss of any wicket in the over number second is in progress. Shivana. Right, over the wicket balls to Shakir. Shakir again going for the expansive drive. But he couldn't manage to get that one into the mid-wicket region, what he wanted to do. The ball went towards a short mid-on region. Ample time for Shakir to complete the single. With that single, Skobana moves on to 8 on the board without for the loss of 1 wicket. The wicket of Vinod is back into pavilion in the form of run out. Shivanand. Right arm over the wicket. Disarmed. Oh, what a catch! What a catch there from Deepak. Fantastic catch. Unbelievable catch. It was a fantastic reflected catch. I want to see it in the replay. The way that the fielder Deepak has got a catch is unbelievable, because the ball which is struck very quickly. Even Deepak doesn't know that he's got the catch
because he's trying for the run out, but quickly realizing that he's got the catch there. Then he's got a big smile in his face that, oh, they have got a wicket of Hakim, the huge wicket. The wicket number 2, which is back into pavilion. It's 8 for the loss of 2 wickets. Thank you. So Sachin is a new batsman in, just came into middle there, but this is not a good beginning for the team Predators. They lost the wicket of Hakim, which was a really unfortunate dismissal for Hakim there, because he struck the ball very well, firmly, but Deepak has got a magnificent catch down at square, like in front of square. And again the first ball, Sachin nicely plays it down to deep, short extra coverage, and this is the kind of batting you need to implement, especially in this condition. And Sachin will going to keep the strike. No, one delivery remaining in this over. Scoreboard numbers 9 on the board, and one good partnership which is badly required for team of Predators if they wanted to win this match. I request Kulai little corrections, Kulai Samrats as well as Bhagavati friends. Kulai, the captain, please report for the toss this time. A lovely shot over the mid-on region, before the fielder from the long on to cut it, long off to cut it off. Ample time for Shakir to complete that couple of runs. Now I think slowly Shakir is back in his natural batting rhythm, picking up some runs for his team. After completion of over number 2, chasing 48 to win his match, Predators 11 for the loss of 2 wickets. Thank you. Welcome back. And bowling change. The double wicket, double hat-trick holder in the previous match is back into attack. And the first hat-trick getter of this tournament as well. And a double hat-trick, he has got 5 wickets in 5 consecutive deliveries. And he really managed to get one very, very strange record in Underarm cricket. The 5 wickets in 5 consecutive deliveries. And he will go into bowl now. Pratap bowling right arm over the wicket to Sachin. Sachin this time, oh, beautifully bowled, sharp incoming delivery. They're going for the run, chance of run out in the last seconds, and he's gone. Unnecessarily they're going for the single. Sachin is not interested, but Shakir is very much interested. This is a big problem, sometime happens. And Shakir is a very good runner between the wicket, but you need to see that he's playing with some local heroes, but they're not good enough to see that to receive the call from you, and he just pays the penalty for that. The batsman is back into pavilion. Sachin is back into pavilion. The wicket number 3 is back into pavilion. It's 11 for the loss of 3 wickets. Thank you. So just what I'm talking about, sometime it's happening, and even the ICOM players doesn't know that they're playing with some local players. They're thinking that they're playing with the same team players. If it is the KFC Kodikal players against Shakir, definitely they will going for the run. And Shakir this time couldn't manage to get the run, but it's a run out which is taken place, which is not a good sign for Predators. Again, Shakir going for the big swing of the bat, misses the line completely. Then the wicketkeeper behind the stump missed it, but short fine like fielder Deepak fields the ball, the back to bowler. It's
11 on the board for the loss of 3 wicket. Now all up to this man Shakir, how well he managed to control this innings. Again, change of pace and slower one attempted there by Pratap, but negotiated very well there by the last moment. Shakir is waiting for the ball to sweep that one down to fine leg region for a single. With that single, Kuban Muzan to 12 on the board for the loss of 3 wicket. Pratap, right arm over the wicket. Ooh, this is one of his weapon. The Pratap is bowls very well, especially in this condition. I watched him even in the last 2-3 editions of this KPL. He's so good in this condition. One of his hunting ground. This Chandubai Cricket Stadium here in Kulai. It's ball time, clean him up. Just I'm talking about his hunting ground here for Pratap, and he continues his hunting wickets in this particular match as well. One more wicket is back into pavilion. It's 12 for the loss of 4 wickets. Thank you. So now I think it's going to be a condition is not favorable for Predators because wickets are tumbling like a pack of cards, and Pratap once again producing a very important breakthrough. Ashraf is a new batter. Pratap is bowls. Oh, that was very close to the leg stump in relegation. Ashraf wanted to get that one down to fine leg region. Fantastic over which is comes to end after completion of over number 3. Chasing 48 to win this match. Struggle time continues here for the team Predators. 12 for the loss of 4 wickets, and before the next over going to start is the time to change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language. And Gopi, it looks like it's going to be a difficult task but not impossible. 36 more runs required for the victory in the remaining 24 deliveries. Looks like having Shakir in the middle, I think might be a little bit possible, but I think against the strong bowling department of team we are Warriors, it looks like still is a target, looks like a little bit tougher one for Predators. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस बार शाकिर क्रीज पर है. जब तक शाकिर क्रीज पर बरकरार रहेंगे उनके टीम के विजय की उम्मीदें बरकरार है. 24 गेंदों में 36 रन बनाने हैं. तो इस बार शाकिर का स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर और फील्डर वहां पर गेंद का इंतजार करते हैं और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. और इस वक्त कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ कुलाई प्रेडिएटर्स. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज प्रताप इस वक्त ये गेंद उछाला, गेंद को लंगोल पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. यहां पर अशरफ ने गेंद को पुल करना चाहा था, अंतिम क्षण में गेंद को पुल तो जरूर किया लेकिन प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट. और नंबर 7 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज शिवानंदा की ओवर की अगली गेंद का. तो फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए गेंदबाज शिवानंदा और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ. कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर और जब तक लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड करके फील्डर लौटा
1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। तो शाकिर आरंभिक बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, अभी तक क्रीज पर डटे हुए, हालांकि उनके सामने 5 विकेटें जरूर गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी एक छोड़ पर वो इस वक्त दिलेर भरी बल्लेबाजी निभाते हुए ये गेंद इस बार चिप किया है मिड विकेट पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ शाकिर की पारी समाप्त। तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है शाकिर का। तो शाकिर जानते थे इस वक्त उन्हें प्रेशर ऑफ करना है, आक्रामक बल्लेबाजी दिखानी है, क्योंकि उनके सामने 5 विकेट गिर चुके हैं और प्रेशर ऑफ करने के प्रयास में अपना विकेट यहाँ पर कोबेट, इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, मिस फील्ड यहाँ पर होती हुई, बैकअप होता हुआ डीप मिड विकेट पर, बेहतर फील्डिंग वहां पर। इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रन्स आर हार्ड टू कम बाय फॉर कुलाई, ट्राई टू सेट द सिचुएशन। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो ये गेंद इस बार चिप किया लॉन्ग ऑन पर, एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, 1 more विकेट फॉलन, लॉन्ग ऑन फील्डर मेड नो मिस्टेक, एंड नाउ कुलाई प्रेडेटर्स लुकिंग डीप इन ट्रबल। So disaster continuing here for the batsmen of Kulai Predators. 15 for the loss of 7 wicket. और विकेटों के ऊपर विकेट यहाँ पर गिरते हुए और हर विकेट के साथ दबाव उनके ऊपर बढ़ता हुआ। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो मनोज इज नाउ नंबर 9 बैट्समैन कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज प्रताप की गेंद फुल टॉस क्लियर किया, इस वक्त गेंद जाते हुए पॉइंट की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 in progress. In fact, it's a 5th over started just short while ago. और प्रताप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त पॉइंट की दिशा में, चेस फॉर द फील्ड, जस्ट अ सिंगल has got for that stroke, and with that single run scoreboard is now moving up to 17 for the loss of 7 wickets and the over number 5 in progress. एक लंबा सफर तय करना अभी भी बाकी, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद प्रताप के लिए बॉल्ड आउट, 1 more wicket fallen, wicket number 2 for Pratap and wicket number 8 in this tournament for him. और निस्संदेह यहाँ पर ये मैदान बेहतर मैदान साबित होता हुआ इस वक्त प्रताप के लिए। It's 17 for 8 now.
So number 10 batsman Bharat is now comes out to the middle. Just 2 wickets they got. They have to score 31 runs in just 15 delivers. Absolutely a difficult task in front of Kulai Predators. और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रताप ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस गेंद को फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ दीक्षित इवर ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. दीक्षित इस बार गेंद को खेला लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए. गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर. इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया. इस वक्त गेंद पहुंची लंगॉन पर नॉट मोर देन अ सिंगल और फिर से 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रन पर. 19 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स 20 in fact 20 for the loss of 8 wickets and 5 overs completed. Still they have a long way to go. 28 needed in remaining last 2 overs. So 2 overs remaining, 28 to get and a fresh over starts from this side end और इस बीच पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार तैनात ओवर द विकेट. लेग स्पिन गेंदबाजी रिवर्स शॉट गेंद को खेला पॉइंट पर गेंद पहुंची थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो इतना तेज नहीं कि वो बल्लेबाज से पहले क्रीज पर पहुंच सके और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर. 21 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त सिली आउट की दिशा में नॉट फॉर अ रन and a dot ball bowled. So 10 balls remaining in overall calculation. It's 27 more runs now they have to score for victory. इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और अगली गेंद ये गेंद ड्राइव किया इस बार बैक टू द बॉलर एंड ही इज गॉन. One more wicket fallen in the face of run out. So number 11 and the last batsman is now comes out to the middle. मुरली और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 8 गेंदें बाकी 27 रन चाहिए विजय के लिए. गेंदबाज की ओर की अगली गेंद स्वीप किया इस वक्त मुरली ने. गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा. माफ कीजिए मुरली अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं तो भरत ने गेंद को स्वीप किया था और स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है 22 रनों पर. मुरली इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज की गेंद इस बार गेंद को खेल दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में. 1 रन मिलेगा दूसरा रन नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर. 23 and 6 overs has been completed. So 25 to get from last over and just they got last wicket in their hand. So last over starts in their innings. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. 25 to get from last over. Last wicket they got in their hand. ओवर की पहली गेंद दाहिने राउंड द विकेट फुल टॉस और इस बीच नो बॉल का इशारा अंपायर का और बीमर गेंद थी और नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट.
और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. 6 balls 24 runs required. Just last wicket in hand. और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिना ओवर द विकेट. फुल टॉस स्विंग किया इस वक्त गेंद को. गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर. नॉट मोर देन अ सिंगल. और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 9 विकेट के नुकसान पर. तो ऐसा कहना पड़ेगा वी आर वॉरियर्स इस वक्त अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है. एक रन मिला इस बीच. 26 विनोद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट. 22 रिक्वायर्ड इन 4 balls. Wide 21 required. Last chance in front of the batsmen of Kulai Predators now. Off the toes. गेंद को इस वक्त मोड़ दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर. 28 for the loss of 9 wickets. Just 3 balls remaining in their innings. और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद. इस बार फुल टॉस. गेंद को ड्राइव किया सीलिंग मिड ऑफ पर. नॉट मोर देन अ सिंगल. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर. 29 for 9. एंड द सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप. और मैच की दूसरी अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज विनोद इस वक्त तैयार. 19 रन चाहिए 2 गेंदों में. इस बार अपील लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं. 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में. 30 for the loss of 9 wicket. The last ball of the match is now coming up. अंतिम गेंद 18 रन चाहिए. 18 runs to get from last ball. Absolutely impossible task now in front of Kulai Predators. Vinod bowls. The last ball driven down to mid on. That's it. They were bundled out for just 30 runs in their stipulated exactly 7 overs, and they lost the match by 17 runs. So 17 runs, comprehensive victory for VR Warriors against Kulai Predators. And with that 17 runs victory, they back the complete points in fact. And now the next match, the match number 7 of this tournament is now going to start between Kulai Samrats versus Bhagavati Friends Kulai. And that match is now going to start with Rijesh Atwal. And now it's time to announce the man of the match. So man of the match of this match, award goes to the bowler who bowled brilliantly in this match and captured 4 wickets. Shivanand of VR Warriors bagged the man of the match award for his best bowling performance. He captured 9 wickets for just conceding 9 runs. He captured 4 wickets in fact for conceding 9 runs in his 2 overs. I request Mr. Shivanand of VR Warriors, please come on to the stage and receive the man of the match award from with Mr. Raghunath Kotian, the Vice President of Ajay Sports Club Kulai, to distribute the man of the match award to Mr. Shivanand for his best bowling performance. And I also request Mr. Satish to please continue the prize distribution procedure with our honorable guest. Thank you. Welcome back. Thank you, DJ. Welcome back for the presentation ceremony. Now it's time to call the man of the match of the previous match of this Kulai Premier League. And Raghunath Kotian, Vice President of Ajay Sports Club, will go and present the medal for Shivanand for his outstanding bowling performance. 4 wickets taken
for just 6 runs. And yes, congratulations. Of course, Shivananda has got a lot of fans in front of him, the small children's Shivananda, for his outstanding performance. Congratulations, Shivananda. Thank you very much, Raghunath Kotian, the Vice President of Ajay Sports Club, for this presentation ceremony. So that's it in the presentation ceremony. It's over to commentary box. Thank you. Thank you. Thank you, DJ. So welcome back for the match number 7 of the day number 1 of this prestigious Shirt Value Kulai Premier League 2023 season 7 and the cricket tournament, which is well organized in this fantastic and very beautiful Sri Venkatraman School Chandubai Cricket Stadium. All set now for the match number 7. After winning the toss, captain of Kulai Samrat selected to field first, and that means Bhagavati Friends Kulai will go into bat first. So coming back to these two teams, Kulai Samrats playing their second match. The first match they lost against team Kodikere, and even Bhagavati Friends Kulai, they won their first match against Jaya Siddhant 11. So that it's a very important match here for Kulai Samrats, and wait and see how well they're going to take this match against Bhagavati Friends. First ball. And it's Ranjit will start the proceedings, and Atif wanted to get that one down to fine, but missed it completely. The wicketkeeper off stopped. Wicketkeeper Harris behind the stumps, and there is no chance at all for any run. Score remains on a little bit correction. They were yet to open the account, and wait and see how Atif and opening batsman Harris will going to give the start for the team Bhagavati Friends Kulai. Ranjit again, right arm over the wicket, balls beautifully balled, sharp incoming delivery. Again the ball is just little bit going down the leg stump, and sharp incoming delivery there from Ranjit. Ranjit is very much improved bowler as far as his cricket career is concerned. He is a lot more improved in this particular season. He is one of the good bowler as far as the present cricket is concerned. He's got a lot of success, whichever team he represents. He's the one who produced a lot of a vital breakthrough whenever the team is required. But in this particular match, his team is desperately wanted his good performance because they lost their first match in the league stage. Again, Ranjit, right arm over the wicket, tried to york the batsman, but batsman negotiated very well. Atif leaning into the drive, taking that one in the full, and he just plays it down to deep, wideish long off for an easy single. With that single, score now started to move. One without loss of any wicket in the over number first is in progress.
Once again, back to match, and again that dotted delivery is a perfect start there from Ranjit in this first over. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗೇಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ K19M 6729 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರ್ನ ಮಾಲಕರು ಆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಂಸಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದರ ಬಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. K19M 6729 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This time nicely plays it down to short mid wicket region. They got a single for that. With that single, the scoreboard numbers on to 3 on the board. A very good start there from Ranjit. It's a 3 without loss of any wicket. And ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲಾಯ್ ಇವರು MSEZ ಕಾಲೋನಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕುಲಾಯ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Harris will go into ball the second over of the innings of team Bhagavati Friends Kulai, and Atif wait and see after that. A slow start from these two opening batters. How well they will going to manage to get some acceleration. Right arm over the wicket. One more dotted delivery. ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲಾಯ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕುಲಾಯ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಸೀಸನ್ 5ಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕುಲಾಯ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಸೀಸನ್ 5. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. The 5 on the board. Harris third time in this over. Right arm over the wicket, balls to Atif. Atif this time wanted to swing that one, missed it completely. But ball is just missing the bat of Atif. But even that ball missing the wicket. Very lucky indeed. So Atif wanted to break the shackle but couldn't manage to get that one from the middle of the bat. And because there is encouragement when the field said there is no fielder in the deep in the square leg and fine leg region. Again outside the line of off and too far, so that white call by umpire rightly so. One more addition in the form of extra scoreboard numbers on to 6 on the board without loss of any wicket in the over. Number second is in progress. Harris again with a short run off. Right arm over the wicket to Atif. Atif this time wanted to reach that delivery, which is again going further away outside the line of off stump, and consecutive 2 wide deliveries ball there by Harris. With that couple of wides, runs are a little bit ticking. Is a scoreboard ticking here. 7 on the board without loss of any wicket. Harris, after they got a very good start and a little bit struggling to get his line and length in this particular over. Harris again. Right arm over the wicket, going for the expansive drive, but didn't got enough timing in that strokes. Again, he wanted to post the ball, wanted to get that one into mid-wicket region. But again, he's not having enough timing in that strokes. He's a little bit early into the stroke. Maybe Harris just changed his pace, about the slower one. And there is no chance at all for any. This time appeal for leg before wicket. Umpire Suresh Mudabidri saying that Harris, you are just in front of me. How can I give the leg before wicket for you? And that's the problem for the bowlers. Some bowlers, they're coming right in front of umpires after the follow through. After delivering the ball, the follow through is very important. You need to go to your left, not to right. Sometime if he comes in your right side, you're right in front of umpires. That's what you need to avoid that if you want to get the result. Harris again balls. Atif again going for the drive with the appeal for caught behind, going up.
Loud appeal for caught behind. Now umpire Suresh Modibidre walking towards the square leg umpire. Now it's going to be very interesting. Atif going for the expansive drive outside the line of off stamp. Something is hard about, but umpire Mohan Ayad and Suresh Modibidre might be. They're asking for the third umpire. Umpire Arish Padil will be going to be the third umpire, going to check what really happened and appeal for caught behind. So not out came from umpire, the decision which is a not out, and batsman is safe there. And after completion of over number 2, and scoreboard is 7 on the board without loss of any wicket. And the might be ball is just grounded before just after that ball is left the bat of Atif, then ball carried to the wicket keeper. So 2 overs completed, slow start from opening batters of Bhagavati Friends. It's 7 on the board without loss of any wicket. Irfan brought into attack to bowl the third over of their innings, of Bhagavati Friends. Kulai Samrats winning the toss, selected to field first. Irfan. And the fielding restriction is off, so that long off is there, deep extra cover is there, long on is there, mid wicket, and one at the deep square leg. Going for the drive, beautifully bowled there by Irfan. Harris wanted to get that one into extra cover region, but misses the line completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. Irfan balls far outside the line of off stump. The very interesting bowling action there from Irfan. Is bowling some loose deliveries, toss-up deliveries to invite the batsman to go for the big shots. Along the carpet, chip that one, but towards the mid-wicket region, and they're coming back for the second before the throw coming from the deep. The both batsmen are so good as far as the running between the wicket is concerned. Atif is the one who is running towards the danger end, so that he is so confident after that ball is placed very well towards wideish long on between mid-wicket and long on, and before the captain to collect that one, ample time for the batter to complete that couple of runs. Again outside the leg stump, going to be a wide, second wide of this over. It's 11 on the board, 11 for the loss of, without loss of any wicket. Nicely driven down to deep long off, lofted off drive. Long off fielder Ranjit fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. It's a 12 on the board without loss of any wicket in the over number 3 is in progress. Irfan. Pass umpire Mohan Ayadi. This is the ball name, clean him up. Huge wicket, absolutely huge wicket for Irfan. Atif departs, is not impressed with himself, wanted to go for the reverse sweep, misses the line completely. The wicket number first is back into pavilion. It's a 12 for the loss of 1 wicket.
So Irfan strikes in his first over. The huge wicket for Irfan. Atif, the icon player, is back into pavilion for that gentle leg spin delivery, but batsman went for the reverse sweep, misses the line completely, ball hitting the stumps. And Pratish Achar is the one more, the good player, is just replacing the Atif, the place of Atif. He will going to take the strike. Beautifully bowled and equally played there, well played there by Pratish, just stretching his front foot and plays it down to deep long off region for a single. And with that single, Skobana moves on to 13 on the board for the loss of 1 wicket. Irfan again, back to his bowling mark. Right arm over with wicket, balls. This time Harris drives straight as a fielder, chance of, oh my goodness, the end of the throw which is into the striker's end, but he returns the ball into the non-striker's end, so that batsman survives from the run out. Harris survives, 3 over gone after completion of over number 3. Searching for the right track. It's a 13 for the loss of 1 wicket. Team Bhagavati Friends Kulai. Thank you, DJ. And all looks like it's one of the most prestigious and very disciplined cricket tournament is in progress. Kulai Premier League under the presidency of Gangadhar Banjan and Honorable President Varun Chauta and Secretary Sushant Kumar and Sudhir Shanai, Treasurer, all that, and with the support of all the committee members, they're organizing such a wonderful cricket tournament. And so far it's outstanding. Day number 1 is in progress. And first ball of the over number 4th starts with a wide and wild call by umpire. And with that excess cover, Namuzan to 15 on the board. 15 for the loss of 1 wicket. The captain of the side, Charan, brought into attack. Charan bowling around the wicket. Again, loose delivery indeed. Again, the batsman hits that one, but lack of placement. Ball went towards the square leg region. And one more addition to total. With the addition of that single, scope number on 16 on the board. Charan a little bit finding difficult to get his line and length. First ball, which is far outside the line of off stamp. Second one is a short pitch delivery. Pratish Achar not satisfied with his bat, so he certainly wanted to change his bat. Charan once again back to his bowling mark. His bowling is the second delivery of this over. Balls, this time a nice looking drive there from Pratish down to extra coverage for a single. So with that single, scope moves on to 17 on the board. And perfect orthodox extra cover drive there from the bat of Pratish Achar. And the scope numbers 17 on the board for the loss of 1 wicket. That brings Harrison to strike now. Charan bowls. This time tip that one. It is a really very poor strokes from Harris. He's just pays the penalty for that. And wicket number 2, which is back into pavilion. Bhagavati Friends has lost their second wicket at the score of 17. It's a 17 for the loss of 2 wicket. And half-hearted chips, and the fielder is waiting for the catch and completed that catch comfortably.
So Harris departs for that half-hearted chip into the mid-wicket region, and Ashwin is a new batter replacing the place of Harris. And Charan balls right arm over the wicket, around the wicket, and wide outside the leg stump. And Ashwin is not interested to get any kind of cricketing stroke, seeing the ball is going further away outside the line of leg stump. And wide call by umpire with that extra scope moves on to 18 on the board. This time Ashwin swings it hard, and oh my goodness, looks like it's going to be a 6. Oh my goodness, can you believe this? The total misjudgment by the fielder. He thought the ball will go into travel into the declared area. That is a couple of runs, but ball is landed into the deep fine leg region for a 6, and score jumps into 24 on the board. Nicely driven down to short period without a chance of run out. They're appealing for the run out, but I think it's going to be a, looks like Ashwin is safe here, but is referred for the third umpire. And the third umpire, Arish Padil, will go in to see that run out, whether the batsman is out of the crease or not. And it's all now up to the third umpire to give the decision here. And we will take a short break, the break of DJ. The out, which is a call from umpire, is a batsman is a short of his crease. Once this looks like it's going to be the batsman is a safe in a naked eye, but in our third umpire, I think it's a right decision coming from umpire Arish Padil, and a right decision there from Suresh Mudabide, straight away they're calling that close one for the third umpire to see. And Ashwin is, after hitting a 6, unfortunately is back into pavilion. And total score now is 24 on the board, but they lost 3 valuable wickets. The last delivery remaining in this over. New batsman in is Masood. Walking towards the middle. The 25, which is the total score so far. 24, little bit correction, 24 on the board. Little bit expensive over there from Charan. Again, one more extra, a lot of extras conceded. 1-6 which is conceded. Altogether, the much required productive over coming in favor of team. This time, loose strokes. Oh, what an attempt there from the fielder. Excellent effort. They're appealing for the run out, but this time batsman Pratish Achar is safe. And good attempt there from the fielder at a short mid-off region. But I think ball just slipped out of his hands. The great attempt, one more over completed after completion of over number 4. And the team Bhagavati friends are looking so good in this particular over. They got some runs and 26 on the board for the loss of 3 wickets. And before the next over going to start here, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद भगवती फ्रेंड्स 26 रन जोड़ चुका है इस वक्त 3 विकेट के नुकसान पर। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। 26 रन दे मैनेज टू स्कोर राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर 4 overs एंड स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 3 overs रिमाइनिंग। और 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस बार स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में कहना पड़ेगा। गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर। इट्स 27 now for the loss of 3 wickets, 5th over in progress। और गेंदबाज इरफान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार ड्राइव किया, गेंद को शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। तो उदय is number 6 batsman. He now comes out to the middle for Bhagwati Friends. At situation, Bhagwati Friends badly need a partnership if they have to post a good total in front of कुलाई सम्राट्स। और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार, लेग से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर। 5वां ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर, लेकिन काफी बाहर नहीं थी, कुछ ज्यादा बाहर की ओर निकलती हुई। और इस बीच सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। और इस बीच इरफान एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद प्रतीश के लिए, गेंद को चिप कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और इरफान एक धीमी रफ्तार के साथ इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त करते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। In fact, over completed. So 5 overs completed and 30 runs on the board. 4 wickets lost in overall calculation. It's going to be 2 overs remaining in the innings. 2 ओवर का खेल बाकी है और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में भगवती फ्रेंड्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल 7वां मैच यहाँ पर खेला जाता है कुलाई सम्राट्स और भगवती फ्रेंड्स कुलाई के बीच में। रॉयल स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा श्री हरि फ्रेंड्स के साथ अगले मैच में। और जहाँ तक इस मैच का सवाल है, प्रथमार्ध इस मैच का प्रगति पर, 2 ओवर का खेल बाकी। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए रंजीत नया ओवर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, अपना दूसरा ओवर की पहली गेंद। और सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज उदय और ओवर की पहली गेंद फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को विकेट से हटते हुए इस वक्त कुछ हद तक इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहता, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं पहुंच पाए और गेंद इस वक्त फील्ड कर ली गई विकेटों के पीछे विकेट कीपर द्वारा, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रंजीत दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद शॉर्ट गली पर पहुंची, जहां पर तो
एक रन का इजाफा, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। एंड तो इस बीच गेंदबाज रंजीत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को चिप कर दिया इस वक्त। जस्ट चेक द शॉट एट द लास्ट मोमेंट जॉन टू लॉन्ग ऑफ, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर, जबकि छठा ओवर उनके पारी का प्रगति पर। और फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑफ साइड, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा तेजी के साथ रन के लिए दो, इस बार निशाना लग चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ फील्डिंग परफॉर्मेंस मेड बाय द शॉर्ट मिड विकेट फील्डर, डायरेक्ट हिट एंड द बैट्समैन इज नाउ बैकिंग टू पवेलियन। For the loss of 5 wicket, and this is the over number 6 in progress. 32 for the loss of 5 wickets, और इस बीच नए बल्लेबाज अरविंद का आगमन यहाँ पर होता हुआ और नॉन स्ट्राइकर पर वो मौजूद, और रंजीत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। प्रतीश इस वक्त गेंद को ठीक तरह से समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रंजीत अपनी अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला लेकिन फील्डर गेंद का इंतजार करते हैं वहां पर, शायद कोशिश वहां पर कर सकते थे कैच आउट का, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने गेंद का इंतजार करना मुनासिब समझा और यहाँ पर बल्लेबाज इस बीच 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। मौका जरूर था उनके लिए, लेकिन थोड़ा सा क्विक मूवमेंट अंतिम क्षण में करना चाहिए था उनको, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई प्रयत्न ही नहीं किया और गेंद का इंतजार करते रहे और इस बीच बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। It's 33 now for the loss of 5 wickets. 6 overs completed and just a last over remaining in their innings. तो अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ गौतम की गेंद, पहली गेंद बेहतर गेंद थी खेलने में, चूंकि इस वक्त प्रतीश, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 22 का इशारा अंपायर का। अरविंद स्ट्राइक पर आ चुका है, अरविंद के लिए एक इनाम इस वक्त घोषित किया गया है। अरविंद विल गेट 500 रुपीज कैश प्राइज इफ ही हिट 1-6 फ्रॉम मिस्टर सुजय तोकूर, और देखते हैं 500 रुपए का नगद पुरस्कार वो प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। लेग स्टंप से बाहर गेंद निकल चुकी है फाइन लेग की दिशा में और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज यहां पर दौड़ पड़े। दूसरा रन पूर्ण करते हुए वाइड का इशारा, 2+1, 3 runs now added to the total. That was an absolutely sloppy piece of bowling bowled by the bowler in this delivery, और 3 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर चुका है भगवती फ्रेंड्स, एंड विद दैट 3 runs the scoreboard moving up to 37 now. और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गौतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विम कर दिया, ओ मिड विकेट पर, मेरे ख्याल से वहां पर फील्डर अपना संतुलन खो बैठे थे। 6 रन इस वक्त घोषित और 500 रुपए
और 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर अरविंद प्राप्त कर चुके हैं। और वहां पर देखिए जीत और कोशिश जरूर की थी गेंद तक पहुंचने के फील्डर ने, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और छक्का इस वक्त अरविंद और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 43 नाउ। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार था, तो ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, वाइड अगेन। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल 45 नाउ। और this is turning out to be a fantastic over in Bhagwati Friends' point of view. 12 runs already scored in this over in the first two deliveries. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गौतम गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े इस बीच प्रतीश, रन पूर्ण कर चुके हैं, वाइड के जा रहा है एक बार फिर से और 2 रन फिर से उनके खाते में जुड़ता हुआ 47 नाउ। 14 runs already scored in this over in the first two deliveries. Absolutely fantastic over progressing here in Bhagwati Friends' point of view. Still 4 balls left in overall calculation in their innings. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, तो इस वक्त टाइम उनका करते हुए 2 रन फिर से बल्लेबाज को यहां पर प्राप्त होंगे। 2 runs once again added to the total. It's 49 now. So 16 runs already scored in the first 3 deliveries. और काफी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में गेंदबाज गौतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, ना तो ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। सो 50 comes up for Bhagwati Friends now. 50 for the loss of 5 wickets in the over number 7th and the last in progress in their innings. 2 balls now remaining in their innings. गेंदबाज गौतम इस बार ड्राइव किया, मिड ऑन पर सपोर्ट करते हुए निकले थे, गेंद जब तक पहुंचे बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। 51 लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद इस वक्त तैयार लेकर गेंदबाज गौतम दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद उछाला है अरविंद ने, इस वक्त कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिला, दूसरा रन भी मिला, ओवर थ्रो इस वक्त नहीं। 2 रनों के साथ द इनिंग्स इज दैट दे फिनिश्ड वेरी वेल बिकॉज ऑफ दिस लास्ट ओवर व्हिच कॉस्ट 20 रन्स फ्रॉम गौतम। दे फिनिश्ड वेल विथ 53 for the loss of 5 wicket, and now the target for Kulai Samrats is 54. 20 runs scored in the last over from Gautam, and because of this over Bhagwati Friends started slowly but finished well at last in their innings. So 54 the target for Kulai Samrat, and as far as the required run rate is concerned, just under 8 runs per over they have to score for victory. Just over 7.5 runs per over they have to score for victory. 54 the target for them in 7 overs, and their innings now going to start within just short while. तो 54 रनों का लक्ष्य, 54 द टारगेट, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब कुलाई सम्राट की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर। तो अब वक्त है डीजे का। नाउ इट्स टाइम फॉर डीजे। Thank you.
Thank you, Vijay. So I request the captain of Royal Strikers as well as captain of Sri Hari Friends, please be reported here immediately. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. The first ball, right arm over the wicket, and Harris just picked up a single. The full toss delivery, the batsman not expecting full toss from Atif there, but he picked up a single down to backward point region. One without loss of any wicket. Ashok is a striker now, and 54 is the target. And at last, once again, team Bhagavati Friends, they started slowly. But they finished well, and especially in the last over, Arvind has played a small cameo of some quick fired runs from his bat. This time, it's going to be a fast wicket. It's going to be a fast wicket. Oh my goodness, the fielder is a long off. Looks like he's once he's missed the ball, but he's just held the ball very properly. And wicket number first is back into pavilion. And it's a one for the loss of one wicket. Ali Daimadi, Royal Strikers ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. The new batsman in is Pawan. Atif. Balls to Pawan. Pawan just wanted to dry the ball. Ball missing it completely. Ball going down the leg stump. They're going for the extra runs. And 3 extras. 1+2. And with that 3 valuable runs, Koban moves on to 4 on the board without loss of any wicket. A little correction for the loss of 1 wicket. The wicket of Ashok is back into pavilion. He's out for Golden Duck. The first ball he wanted to go for the big shot, pays the penalty for that. Atif again back to his bowling mark. Right arm over the wicket. Balls and Pawan drives that one down to mid-on region for an easy single. So with that single, Koban moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. Second, and Atif, being the icon player of the side. Again, Harris checking the stroke in the last moment. He wanted to go for the slog sweep shot, but realizing that very difficult to play the slog sweep shot, adjusting the stroke in the last moment, plays it down to short to mid-on region for a single. With that single, Koban moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. Long way to go. 54 in this condition is not an easy one, but not impossible. Especially the Harris is the one is need to play the responsible innings, because the Pawan is the kind of batsman who can be the very handy for any players to get going, because he is was the master of rotation of strike. And again, nicely placed the ball down to cover point region. Atif looking for the run out by clipping the ball back and cliff, but ball misses the stumps. And Pawan completes the single. With that single, Koban moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Atif. Final time in this over. Atif again. Slower one, full toss, lofted that one out just over the top of the infield. But ball will going to not travel quickly. The fielder looks like is a little bit the absence of mind. What could be a couple of runs because of that fielder is
Looks like he's saving the boundary, and 3 valuable runs taken there by the batters. So completion of first over. It's a 10 runs came from the first over. A very good start for team Kulai Samrat, chasing 54 to win this match. 10 for the loss of 1 wicket. Thank you very much, and we are coming back to this over number second, and over number second, Pratish Achar will going to start a beautiful off-cutter, but going away from the line, which is far outside the line of stump, and the white call by umpire. Scoreboard numbers on to 11 on the board. Pratish again. This time it's going to be a chance here for the fielder. At cow point is gone. Harris back into pavilion, and Pratish Achar produced a vital breakthrough for the team. It's a 10-11 for the loss of 2 wickets. Thank you. So one more wicket is back into pavilion, and it's a huge wicket for Pratish Achar, because the wicket of Harris is back into pavilion. This time captain of the side came into middle and straight away is off the mark by pushing the ball down to short point region for a single. With that single score Namuzan to 12 on the board, 12 on the board, 12 for the loss of 2 wickets. There's a long way to go. The one good partnership is badly required. But after losing a wicket of Harris, wicket of Ashok in a very quick time, it looks like target is looking very tougher and stiffer. Pratish again just arranging the field set here. To Pawan. Pawan, technically very sound player. Again leading into the right, like a placement, chance of run out. Wide throw coming from Pratish Achar. Of course, the Pawan wanted to get that one into extra cover region, but mistimed the ball. And the bowler on his follow through, Pratish Achar, fields the ball, try to make the run out in the striker's end, and ball just misses the stumps. Pratish to Pawan. Pawan this time just going over the top of the infield before the backward point fielder to run back to field the ball. Ample time for Pawan to complete that couple of runs. Good placement, even he couldn't manage to control that stroke. But it's a quite useful cricketing stroke to get the couple of runs. With that couple of runs, score numbers on to 14 on the board. 14 for the loss of 2 wicket in the over number second innings is in progress. Pratish bowls to, and again nice looking drive there from Pawan. With that single score numbers on to 15 on the board. 15 for the loss of 2 wickets in the over number second is in progress. Pratish again. Right arm over the wicket, bowls, and Charan as always. This time it's not a absolutely poor piece of thinking there by the Charan. Tapping the ball into the hands of bowler and himself going for the run. And that means it's a suicider. Hitting the stumps. The wicket number 3 is back into pavilion. Disaster continues here for team Kulai Samrat. Lost their 3rd wicket. It's 15 for the loss of 3 wicket.
Thank you. Welcome back, and a friendly atmosphere out here in our commentary box. Some dignitaries enjoying the game of cricket, and we have a scorer, Mr. Kishore, is a very good scorer. So far, did a great job. But we have a special attraction in our commentary box. Is a very young scorer, online scorer. Razik is doing a job in online scoring department. Just 12 or 13 years old. Is studying in a high standard, but is very much interested in that scoring department. This time it looks like it's gone. Ashwin picked up a wicket. Ranjit is back into pavilion. Absolutely fantastic sportsman spirit shown there by Ranjit. Immediately after he's seeing the ball, he's got edge. And then he's, without waiting for the umpire decision, he's walking towards the pavilion, and appreciation coming from the teammates, the opposition teammates, for his wonderful gesture of walking towards the pavilion. It's an absolutely good sign of a good sportsman spirit there from Ranjit. He's, of course, he's got out, but he won the heart of cricket lovers. So wicket number 3 is back, 4 is back into pavilion. It's 15 for the loss of 4 wicket. Thank you. Karthik is a new batter in. Ashwin picked up his first wicket with absolutely perfect leg cutter in the occasion to receive the wicket of Ranjit. This time we're going for the on drive. Not quite getting hold of that one properly, but still he managed to get the single. Karthik is off the mark with a single, and total score now moves on to 16 on the board for the loss of 4 wickets. Absolutely, they're really looking in a deep trouble, team Kulai Samrats, and now all up to this man Pawan. How well, this time he is also gone. Ashwin celebrates. He picked up his second wicket. Absolutely huge wicket. It's not so easy to defeat the defense of technically sound player Pawan, but Ashwin's magical leg cutter and some half cutter is always going to be difficult for any technical sound player. I'll have a look at that one. Absolutely nowhere near the pitch of the delivery. The wicket number 5 is back in the pavilion. It's 16 for the loss of 5 wickets. I request 2 teams captain, please be reported immediately. Royal Strikers ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. Thank you. Ashwin is getting his rhythm. Once he gets his rhythm, it's going to be dangerous for opposition team. Again, batsman wanted to sweep the ball, misses the line completely, and there is no chance at all for any run. Irfan is the batter. Ashwin the bowler. Right arm over the wicket delivers. This time again beautifully bowled. This time they were attempting for the run out. Atif, he wanted to get the run out, and no one there to get the backup. And the scoreboard now moves on to 17 on the board. ಅಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. Ashwin to Karthik again. Quicker one, faster one, beaten by the pace. He won the wicket keeper, and the short fine leg fielder fails to collect the ball. By call by umpire, and the batsman cross off for a couple of runs. So good over there from Ashwin. Wicket taking over after completion of over number 3, chasing a huge total of 54 to win this match. Just struggling in the middle. It's 19 for the loss of 5 wicket. And before the next over going to start here, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language indeed. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್.
Captains, Royal Strikers, Sri Hari friends. धन्यवाद सतीश। तो 3 ओवर की समाप्ति 20 रन बन चुके हैं और इस बीच पहली गेंद थी और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। Just gone for the stroke at the last moment, can't succeeded. And one more wicket fallen. They are looking deep in trouble now. Kulai Samrat are 20 for the loss of 6 wickets. Royal Strikers, Tandada Nayaka. Royal Strikers, captain. Please come immediately. New batsman Gautam is now comes out to the middle. और निस्संदेह यहाँ पर विकेट के ऊपर विकेट गिरते हुए 20 रनों पर 6 विकेट गिर चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ड्राइव किया इस वक्त स्ट्राइक इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर वन मोर विकेट फॉलन wicket number 7 now they are looking deep in trouble it's 20 for the loss of 7 wickets. और यहाँ पर एक इनाम घोषित किया गया है हैरिस अगर हैट्रिक विकेट प्राप्त करते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें घोषित किया गया है और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त हैरिस तैयार इफ हैरिस विल गेट हैट्रिक he'll rewarded ₹500 कैश प्राइज एंड नाउ द हैट्रिक बॉल कम्स फ्रॉम हैरिस और देखते हैं वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को हल्के से पुश कर दिया गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर शॉट पॉइंट पर और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं थ्रो इस वक्त विकेट कीपर की काफी दूरी से निकली थी और 2 रन यहाँ पर जुड़ चुका है 22 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स गेंदबाज हैरिस एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में रन नहीं मिलेंगे बेहतरीन गेंदबाजी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर हैरिस इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त स्टीयर किया गेंद पहुंची सिली पॉइंट पर 1 रन का इजाफा 4 overs completed and 23 runs on the board for losing 7 wickets and exactly 31 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs that means in 12 delivers with a required run rate of exactly 15 and a half runs per over ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು So 5th over starts Ashwin इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद दाहिना तो बढ़ता विकेट गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता गेंद कहीं ऑफ साइड पर बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है 24 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट 5th ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट फाइन लेग और अगली गेंद इस बार बेहतर रिवर्स शॉट खेलना चाहा शॉट फाइन लेग पर गेंद थी अश्विन की रन्स यहां पर नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है इस वक्त कुल मिलाकर 24 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर 24 for the loss of 7 wickets in the over number 5th in progress Ashwin दाहिना तो बढ़ता विकेट ये गेंद जब किया and this is could be gone all the way and no in fact brilliantly taken just inside the fence by the fielder absolutely brilliant catch taken by the deep backward square leg fielder just inside the fence and because of that 8 wicket fallen for Kulai Samrat. So 24 for the loss of 8 wickets and number 10 batsman is now coming out to the middle for Kulai Samrat
एंड दिस इज द 5th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अश्विन पिछले गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को हल्के से इस वक्त चिप कर दिया था, ऑफसाइड पर गेंद जाती हुई। एक रन मिला, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। 28 more runs now they have to score for victory in remaining 14 balls। अश्विन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और इस बार कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, रन से स्पीड नहीं मिला। फिर से एक बार अश्विन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार रन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 27 नाउ एंड 5 overs completed। 27 more they have to score for victory in 2 overs. That means 13.5 runs per over, the required run rate for them at this situation. It's 27 for 8. So 6th over starts and the first ball of the 6th over is now coming up। right arm over the wicket। बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त खेलना चाहता, ठीक तरह से खेल नहीं पाया, पैरों पर गेंद टकराई थी। 1 रन का इजाफा। 28 for the loss of 8 wickets now। 11 balls remaining and 26 more runs now they have to score for victory। और फिर से एक बार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद इस वक्त पहुंची सिली में डाउन पर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 29 for 7 now। और कुल मिलाकर 10 गेंदें अब बाकी है उनकी पारी में, 25 रन चाहिए। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रतीश, ये गेंद इस वक्त गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 30 द स्कोर नाउ। 30 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। इस बार चिप किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 31 रनों पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, शॉट फाइन लेग पर गेंद, वाइड का इशारा पर और 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में, रन नहीं मिलेगा। ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। This time driven that one down to point for a single and now it's 32 now। ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। 6 overs completed, last over remaining, 21 to get। So last over starts in their innings। first ball और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी, पहली गेंद बॉल्ड आउट, 1 more wicket fallen, 9th wicket gone। 33 for 9 and now just last batsman is now remaining and we are just waiting for the number 11 batsman। So 5 balls now left in their innings and 21 runs more now they have to score for victory। It looks like just a formalities now remaining in this match if any miracle things will not happen। और नंबर 11 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इस वक्त बल्लेबाज Rajat, the number 11 batsman is now comes out to the middle। 5 balls left। इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, गेंद का ऑफ साइड पर 1 रन का इजाफा। इट्स 34 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 4 balls now remaining in their innings, 20 runs required, almost a last chance in front of the batsmen of Kulai सम्राट। और गेंदबाजी इस वक्त मसूद, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को खूबसूरती के साथ और 1 रन का इजाफा। और
स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर. श्रीहरि क्रिकेटर्स आर won the toss in the next match and what the decision they will take, just we have to wait and see. और इस बीच मसूद अगली गेंद लेकर तैयार था. इन्हें तो ऊपर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, स्लिप डाउन की दिशा में गेंद पहुंची. अश्विन वहां पर स्टंप्सों पर निशाना दागा था लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे. 36 for the loss of 9 wickets. 2 balls left in this match. So Masood bowls second last ball of the match. पुश किया, पॉइंट पर रन से मिलेंगे एक. 37 लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप. 17 रिक्वायर्ड इन लास्ट बॉल. और मसूद गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट. इस बार ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त चिप कर दिया, मिड विकेट पर एक रन मिलेगा. एंड 38 for 9 द फाइनल स्कोर. एंड भगवती फ्रेंड्स आर won the match by 15 runs, defeating Kulai Samrat in the match number 7 of this tournament, and with this 15 runs victory they back the complete point. Next match I request the fielders of Royal Strikers please go for field immediately. Royal Strikers ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು immediately. And the match number 8 is now going to start between Royal Strikers versus Srihari Friends, and that match starts. I request all the players of the last match of today please start the match immediately. और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है इस दिन के अंतिम मैच में. तो इस वक्त so man of the match of this match award goes to the batsman who performed very well at this bat. Scored unbeaten 11 runs in just 40 overs with a strike rate of 275. Arvind of Bhagwati Friends adjudged man of the match for his quick firing knock of 11 runs in just 40 overs. I request Mr. Arvind please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers, and also request Mr. Satish to please continue the prize distribution procedure in front of the stage. Thank you. And we'll be back right after the short break with prize distribution procedure. Man of the match prize distribution procedure with Satish when the last match will going to start between Royal Strikers and Srihari Friends. Thank you. Over to Satish. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. So Arvind getting the man of the match award from Rotarian Arish Shetty, and thank you very much Rotarian Arish Shetty for your presence in the presentation ceremony, and congratulations Arvind for your quick fired 12 runs with a strike rate of 250, and that's it in the presentation ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ set value Kulai Premier League season 5 2023, and all we are looking towards the last match of the day number 1, the successful day number 1
is in progress. I request the opening batters to please go for bat immediately because you are having a shortage of time. ಶ್ರೀಹರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಾನ್ ದ ಟಾಸ್. So captain of Shri Hari Friends on the toss selected to bat first. I request the opening batsmen to go for bat immediately. So here we go, the opening batters, Arshad and Dinesh. Arshad, icon player, Arshad, and so far in this particular tournament, he fails to talk with his bat, and wait and see in this particular match, can he able to talk with his bat? The most important for his team that he need to come back to his natural rhythm, natural form if he wanted to get a victory here for the team Shri Hari Friends, because Shri Hari Friends they lost their first match against we are Warriors, and so that very important for the team Shri Hari Friends to get their the first victory. The Royal Strikers, they won the first match, and the first ball nicely swept down to square leg boundary for 4 runs. Just like I mentioned, Arshad Bajal need to talk with his bat, and first ball itself, his intention is very clear that he wanted to take this match very seriously, and he plays it quite beautifully down to deep back of square leg boundary for 4 runs. Nothing much wrong with the line of the delivery, but he's just stretching his front foot towards the line of the ball. You know exactly where the fielder is in the deep. It's one is a mid wicket and one is deep long on, so he's just got the placement right. Again now foul. Right arm balls, the improvisation nicely down to square leg region for a single. Arshad picked up a single. With that single, Kabanna moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the O number. First is in progress in this particular tournament. Just saying that is getting a big score is not easy, and need to be a little bit cool and calm. Need to spend time a little bit in the middle if you wanted to get your natural stroke making. And here is the bowler bowling right arm. Now fall balls, beautiful delivery, and batsman going for the front foot push on the offside region. Dinesh misses the line completely, and the wicketkeeper behind the stump did the job, and Tanveer behind the stump collects the ball back to bowler, and Arshad has got a little bit word with this partner. Slower one, nicely plays it down to mid-on region for a single. Along the stroke, he went for the quick single. So with that single, Kabanna moves on to 6 on the board without loss of any wicket. And Arshad back on strike now. Arshad, the 4 fielders in the offside region, 5 in the onside. Fine leg, square leg, deep square leg, mid-on and deep. The mid wicket again nicely swept that one down to fine leg region for a single. With that single, Kabanna moves on to 7 on the board without loss of any wicket. Good start and for Arshad Bajal in this first match in the first over. He's now in the non-strikers end. Oh, going for this time I think he's gone. He won a little bit fumble from the wicketkeeper Tanveer behind the stump, but that time I think the batsman again Dinesh misses the line completely, but his back foot is just lifting up, and the wicketkeeper behind the stump Tanveer did the job. First wicket is back into pavilion. It's 7 for the loss of 1 wicket.
So new batsman in is Latish. Latish in the previous match has played a very good game of cricket for this team, and along with Arshad Bajal, wait and see how well they're going to continue this start what they got in the first over. Now first over completed, so Tanveer is back into attack, and the batter Arshad Bajal will going to be the striker. Second over of the power play, in the last over of the power play. So long on is there, square leg is there. 7 for the loss of 1 wicket. This time up and over the head of the extra cover region for 4 runs. This is the Arshad Bajal for you. You can't give the width for the batsman like Arshad Bajal. Off the back foot, you know exactly the fielder is not there in the deep extra cover. Just over the top of the infield for 4 runs. Thank you. Short value boundary number second came from the bat of Arshad Bajal. Now there's a frustration and the pressure straight away there for the bowler. Tanveer is bowled outside the line of leg stump and white call by umpire. With that extra score, Namazan to 12 on the ball. This time Arshad lofted that one. A chance here for the fielder to take the catch. Again Arshad Bajal, he's got the start but fails to continue that start. Again he's disappointed. Wicket number 2 which is back into pavilion of Sri Hari friends. It's 12 for the loss of 2 wickets. Thank you. Tanveer strikes a good comeback as far as the bowler's point of view after that boundary which just came from the bat of Arshad, and immediately very next ball. It's a nice looking drive, nothing much wrong with the stroke, but something wrong with that placement where the fielder is just standing in the deep long on region, almost running towards his left to complete that very good catch, running catch. This time Tazuddin looking for the big swing of the bat, misses it completely, but ball is going down the leg stump further away. White signal umpire with that excess cover Namuzan to 13 on the board for the loss of 2 wicket. Tanveer bowls Tazuddin. Tazuddin played it defensively. Maybe Tazuddin looking for some soft hand push down to short cover point region to back the single, but the placement is not perfect. Again Tanveer. Right arm over the wicket to Tazuddin. Tazuddin looking for the expansive drive. No which is called from umpire from the batsman Tazuddin, and Latish almost started his run to get that single there. Luckily, and right time he's just seeing his partner not responding for the run. Nice looking drive again. Excellent field placement by Tanveer for that strokes. And good comeback in this over from Tanveer. So far he bowled a very good over. First run, first ball it's a boundary, then a wicket, then 3 dotted deliveries. Again this time wicketkeeper fails to collect the ball. Just wait for the umpire signal. Will they come back for the second? No. They can only settle for the single. By call by umpire. The wicketkeeper misses it. Good over there from Tanveer. After completion of over number 2, searching for the right track. Team Sri Hari friends are 14 for the loss of 2 wickets. They're going exactly 7 runs per over. Thank you. Welcome back. And 14 runs. The equal battle is on because the run rate is concerned. I think
It's a good run rate which is maintained in the first 2 overs for team Bhagavati Friends Srihari Friends scoring 14 runs, but they lost two valuable wickets, and nicely flicks it off his legs down to square leg region for a single by Tazuddin. So Tazuddin is one more icon player after losing a wicket of the icon player Ashad Bajal. All the responsibility in the shoulder of Tazuddin to anchor the innings for his team. It's 15 already on the board for the loss of 2 wickets. Naufal, icon player for Royal Strikers, bowls beautifully awkward and delivery, a little bit outside the line of leg stump, but by call by umpire, wicket keeper Tanvir fails to collect the ball, and one more addition to total addition of that single score, but Numazan to 16 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. Fantastic day for cricket. Of course, today morning it's a cloudy weather condition, but time progresses, it's a very hot condition. But still now it's going to be a very cool condition out here. They're coming back for the second. In comes the throw from the fielder. And a little bit fumble from the fielder, searching for the ball. The batsman grabbing the opportunity to converting that single into couple. With that couple, score numbers on to 18 on the board for the loss of 1 wicket. And now it's a last match of day number 1. Time is exactly 6 o'clock of the evening. Slower one, but negotiated very well. Tazuddin judging that slow ball very well, and maybe Naufal wanted to get that slower one to get the Yorker line delivery, but negotiated very well by Tazuddin for the last moment, and he picked up a single. This time lofted, but not quite enough, and the fielder Charan Raj is stationed in the right position down at mid-wicket region. Latish departs. Latish departs. It's 19 for the loss of 3 wickets. So Suresh is a new batsman in Latish is back into pavilion. It's an absolutely fantastic stroke there with the timing, but as I already mentioned, the ball which is not hard enough to get the distance, and he got the fielder for that shot. And first run comes up for the new batsman Suresh. 1 more over completed up. Completion of over number 3. And completion of over number 2. Searching for 3. Searching for the right track. It's 20 on the board for the loss of 3 wicket. 20 for the loss of 3 wicket after completion of over number 3. Srihari Friends. Thank you. Welcome back. Avinash brought into attack the ball, the 4th over of the innings of Srihari Friends. Right arm over the wicket. Swept that one nicely down to square leg region for a single by Suresh. And with that single, score moves on to 21 on the board for the loss of 3 wickets, which is back into pavilion of Srihari Friends. Srihari Friends starts well in the first over with some boundaries which came from the bat of Ashad Bajal. But they lost the wickets, the 2 big wickets back into pavilion. And Tazuddin now taking initiative along with the Suresh. 1 more single is taken there by Taju. With that single, score moves on to 22 on the board for the loss of 3 wicket. Avinash. This time again, ball is in the air. Chance here for the fielder to take the catch. Very good catch taken in the square leg region. Kiran, the fielder, then the square leg, completes a wonderful running catch. And it's a very good catch actually. Judgment is so good there from the square leg fielder Kiran.
And the wicket number 4, which is back into pavilion of Shri Hari Friends. It's a very good running catch. It's a 22 for the loss of 4 wickets. New batsman Asif came into middle. Runs are coming at the same time. Wickets are tumbling. Avinash bowls and bowlers back drive. A lot of support coming for Royal Strikers. Royal Strikers Kulai. Right over the wicket bowls and outside an like stamp, and batsman missed it completely. The golden opportunity which is missed out. Tossed up delivery. The batsman Asif not tried for any stroke there. Left the ball into the hands of wicket keeper. A good, nice placement down to cover point region for a single. With that single score now moving after a long time, it's a 23 after completion of over number 4. 4 gone, it's a 23 for the loss of 4 wicket. 3 overs remaining, and for that 3 overs I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 4 ओवर के बाद 23 रन बन चुके हैं। 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। गेंद को इस वक्त खेल दिया पॉइंट की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। इनफैक्ट मैच नंबर 8 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता वह कुलाई प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत। यह गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पैडल स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ। गेंद जब तक फील्ड और शॉर्ट फाइल लेग पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 25 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। और 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। गणेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार गेंद को खेलना चाहा, फॉलो थ्रू में दूसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने इस वक्त कलेक्ट कर लिया, और आखिरकार बल्लेबाज को रन से नहीं मिला। इस वक्त कुछ हद तक तेज तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है श्री हरि फ्रेंड्स को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और गेंदबाज की ओर के अगली गेंद गणेश दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद को खेलना चाहा, थोड़ी सी मिसफील्ड, और बल्लेबाज इस भी दूसरा रन लेना चाहते, थ्रो पहुंचा, नजदीकी मामला, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। So a difficult time continuing for the batsmen of Sri Hari Friends at the situation. They are 26 for the loss of 5 wickets. और जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। सर्ट वैल्यू टाइटल स्पॉन्सर इस श्रृंखला के, और इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के हर मैन ऑफ द मैच का खिताब मोबाइल के रूप में उन्होंने प्रदान किया। हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच के इनाम के रूप में मोबाइल दिया जाएगा। सर्ट वैल्यू जो कि टाइटल स्पॉन्सर हैं इस श्रृंखला के, इनकी ओर से। और एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला KPL सीजन 5 कुलाई प्रीमियर लीग सीजन 5 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए इस सुंदर से चंदूभाई क्रिकेट मैदान श्री वेंकटरमणा स्कूल के। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है बालाकृष्णा, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद, ये गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को इस वक्त खेला इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, और इससे पहले की गेंद को वहां पर वाइड स्लग ऑफ पर जब तक फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5
in progress in their innings. Is baat drive kiya, better, absolutely brilliant on his follow through. He stopped the certain single at the situation, and good over came to an end in Royal Strikers' point of view. Just 4 runs came in this over from Ganesh, and after 5 overs, still the batsmen of Sri Hari Friends just switching for the right track. It's 27 for 5 after completion of 5 overs. लिखित नया ओवर प्रारंभ करते हुए इस वक्त बालाकृष्ण सामना करने के लिए तैयार, और ओवर की पहली गेंद द विकेट टॉप एज, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन्स। कैच को तो लपक लिया, लेकिन सीधे सीमा रेखा के ऊपर उन्होंने अपना पैर रख दिया, तो इस वजह से यह छक्का घोषित किया जाएगा। कैच एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैच, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। कैच को उन्होंने लपक लिया शानदार तरीके से, लेकिन अपना फुट जो है कैच को लपकते ही उन्होंने सीमा रेखा के लाइन पर रख दिया, तो इस वजह से छक्का इस वक्त घोषित। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला, गेंद जाते हुए गली की दिशा में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, नजदीकी मामला नहीं हो सकता है कि बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर, जबकि उनकी पारी का 6वां ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस वक्त बालाकृष्णा का छक्का उनके लिए कुछ हद तक आत्मविश्वास का ऑक्सीजन भर चुका है। ये गेंद रिवर्स शॉट, इस वक्त गेंद को खेल दिया इनटू द गैप एज वेल, डीप कवर पॉइंट पर, जब तक इनको फील्डर थोड़ी सी मिस गेंद को इस वक्त टटोलते हुए, लेकिन वहां पर गेंद को टटोल कर वो तेजी के साथ फेंकने में सफल, सो सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, और 6वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। लिखित गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद स्वीप करना चाहा, घुटनों के बल बैठते हुए, जस्ट ट्राइंग टू स्वीप दैट वन, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आया और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार लिखित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर, क्लीन कलेक्शन, बेहतर फील्डिंग, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर, 37 नाउ। और इस ओवर में अंतिम बार लिखित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, एक बार फिर से बालाकृष्णा क्रीज से आगे निकलते हुए गेंद को उन्होंने खेला, इस वक्त डीप मिड विकेट पर गेंद जाते हुए सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा। 38 now, so a good over in Sri Hari Friends. The first good over in Sri Hari Friends point of view came to an end. 11 runs came from this over. 11 रन इस ओवर में बने, और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा श्री हरि फ्रेंड्स कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। They are back in the game a little bit. Still in overall calculation, it's going to be last over remaining in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में इस वक्त उनके इस अंतिम ओवर में और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते देखना पड़ेगा। रॉयल स्ट्राइकर्स, माफ कीजिए, श्री हरि फ्रेंड्स के बल्लेबाज। कल सुबह पहला मैच शुरू होगा टीम कोडिकेरे और भगवती फ्रेंड्स कुलाई के बीच में। सुबह ठीक 7:30 को मैच खेला जाएगा। द फर्स्ट मैच ऑफ टुमारो विल बी स्टार्ट्स एट एग्जैक्टली 7:30 AM बिटवीन टीम कोडिकेरे वर्सेस भगवती फ्रेंड्स कुलाई। और इस बार गेंद को खेल दिया था, गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑन पर, मिड ऑन पर 1 रन का हिसाब, 39। ನಾಳಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಳಾಯಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಳಾಯಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15ಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 7:30ಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಳಾಯಿ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. इस बीच गेंदबाज की गेंद इस बार डाउन द ट्रैक, लॉफ्टेड बट स्ट्रेट टू फील्डर एट लॉन्ग ऑन, वाइड इज लॉन्ग ऑन इन फैक्ट.
तो बालाकृष्ण की पारी पर बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। 12 रन 7 गेंदों पर सिर्फ उन्होंने बनाए और एक बेहतर पारी खेलने के बाद वो पेवलियन वापस लौट चुके हैं। और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, इस बार गेंद को उछालना इस बार गेंद को उछालना चाहता, चूंकि जैसे विकेट कीपर ने थ्रो करना चाहा नॉन स्ट्राइक रेंज पर, बल्लेबाज रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई और आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर विकेट कीपर करते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। 40 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। So new batsman is now comes out to the middle. Shravan, just 2 balls now left in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गणेश इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेला स्लिप डाउन पर, फील्डर बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। आई थिंक द बैट्समैन शुड बी इन ट्रबल। तो देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं, लेकिन बेहतर इस वक्त प्रयत्न किया था सिलिमिडॉन के फील्डर। ना सिर्फ उन्होंने गेंद को फील्ड किया बल्कि तुरंत इस वक्त स्टंप्सों पर उन्होंने शाइन किया और आखिरकार यहाँ पर देखना यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं जब बेल्स डिस्टर्ब हुए थे। I request the captains of team Kodikere and Bhagavati Friends Kulai please to be reported here to contact the organizers. Bhagavati Friends Kulai ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟೀಮ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಳಾಯಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So no doubt the decision came from the third umpire. पहले यहाँ पर गेंदबाज का पैर टकरा कर यहाँ पर बेल्स डिस्टर्ब हुए थे और यहाँ पर बल्लेबाज पेविलियन की ओर पधारने लगे कि वो आउट है। अगर गेंद पहले लगा होता पैर से पहले स्टंप्स पर, तो शायद बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन पैर पहले गेंदबाज का टकराया था स्टंप्स पर, बाद में गेंद वहां पर टकराई थी और यहाँ पर ये विकेट अब गिर चुका है। So the innings is up and they finished with the 41 for the loss of 7 wickets and after the completion of 7 overs, and now they set a victory target of 42 for Royal Strikers. Exactly 6 runs per over they have to score for victory for Royal Strikers. 42 of 42 stipulated dealers they have to score with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी 42 रनों का लक्ष्य, 42 the target for Royal Strikers और देखते हैं वो लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं नहीं। और एक छोटे से ब्रेक हम लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आज अंतिम बार हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब रॉयल स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डीजे एंड टाइम फॉर ऑल्सो अ ब्रेक।
Thank you, DJ. Welcome back. And the final innings of the day number one will going to begin. And the target for team Royal Strikers 42, just a 42 runs required at the rate of exactly 6 runs per over. The signal straight away came from umpire Harish Padil. And Tanvir is the man, he's got a fantastic tournament. Will be the striker. And of course, the all-rounder, one more all-rounder in the non-strikers, and Naufal. And the two icon players straight away, they're going to open the innings. And icon player of Sri Hari Friends, Ashad Bajal, will go into starts the proceedings. Left arm round the wicket. First ball is right on the money, right on the target. He got the wicket. This is what the kind of start badly required for Sri Hari Friends. Tanvir departs. It's a 0 for the loss of 1 wicket. So new batsman Kitty is back. Kitty replacing Tanvir is out for Golden Duck. The first ball of the innings is back into pavilion, and Arshad strikes with this fantastic delivery. And a ball, second ball. Oh, again, that was a flum in front of wicket. What a delivery that one there from Arshad Bajal. Magnificently bowled. This is unbelievable delivery, isn't it? Just looks like it's a simple tossed up delivery, but it's a Yorker line delivery. Have a look at it, a slow Yorker line delivery. Slow Yorker line delivery. The batsman thought it going to be a quicker one, misjudging that one completely from his bat, finding himself right in front of the middle stump. 2 wickets back into pavilion. It's a 0 for 2. Thank you. So 0 for 2. It's been a shackling start for team strikers, Royal Strikers, and Ashad Bajal is on hat-trick. So far, the one hat-trick in this tournament, which is in the name of Pratap, and can he able to get the second hat-trick of this tournament? This time on him! Oh, he got the hat-trick! The second hat-trick of the tournament, Ashad Bajal, re-registering the name. After that, the wicket, Pratap picked up a hat-trick. Now, Ashad Bajal is the second bowler, picking up a hat-trick. Ganesh is cleaning up the beauty of the delivery. 3 wickets in the 3 deliveries. It's going to be a shackling start here for Kulai Strikers, Royal Strikers, 0 for 3. So 1,000 rupees, which is announced by the owner of Sri Hari Friends, Nikhil Shetty, for Arshad Bajal for the hat-trick. Again, driven that one misfield, but they're going for the single, and they made it quite easily in the end. The first run of the over, and hat-trick from Arshad Bajal, absolutely fantastic. And why not? The owner must be pleased with the performance of
the player Arshad Bajal being the icon player of the side, picking up the hat-trick. It means a great achievement, and already 1,000 rupees in the pocket of Arshad Bajal. Left arm bounce. This time he lofted that one beautifully down to mid-wicket boundary. Good piece of fielding there by the fielder. In comes the throw. The batsman converting that one into the couple of runs. Excellent piece of fielding there by Yogesh in the mid-wicket region. And what could be a certain boundary because of the great effort there from the fielder. They completed a couple of runs. With that couple of runs, Kobarna moves on to 3 on the board for the loss of 3 wicket. Naufal is a very, very experienced campaigner for the side. You know exactly the kind of batting required. Even they lost the wicket. This full toss delivery, lofted that one down to deep backward square. A fielder behind the ball. I don't think we're going to win the race, but the ball which is winning the race against the fieldsman. He won the hat trick, but the Naufal is really breaking that the hat trick by hitting the boundaries there. But he won the 3 wickets which has fallen, but nothing wrong with that run rate for team Royal Strikers. There are now 7 for the loss of 3 wickets. Good comeback here by the batsman Naufal with the boundary, with a couple of runs, and it's going to be a good comeback. And what could be the better over because of last 2 deliveries. Naufal picked up a valuable 6 runs for his team, and because of that, its match is still is in balance. 42 is the target, 7 deducted. And that means another 35 runs required for the victory, remaining 36 balls. Tazuddin brought on the attack. Prakash is the striker. Needed one partnership badly for team Royal Strikers. At the same time, Tazuddin need to produce 1 good over. After that, 3 wickets in the first over, but they got a run. That's very important in limited over matches. Even they lost the wicket, 3 wickets in that first over. The 7 valuable runs came in that over. Tazuddin. Right above the wicket, lofted that one beautifully over the deep long off region. The ball will go into cut it off just inside the fence, but ample time for the batter to complete that couple of runs. So with that couple of runs, Kobarna moves on to 9 on the board, and again the confidence level you need to appreciate, isn't it? The batters of the Royal Strikers, even the 3 wickets are back into pavilion in the first over itself, but they know exactly the power play over is on. They need to get some runs in that power play over. And again, scoreboard is 9 on the board. Prakash, we're going to face Tazuddin. Right arm over the wicket, balls this time, drives that one side to the hands of short Kekshakawa. Misfield there by the fielder. Batsman completed a single. Scoreboard moves on to double figure 10. 32 more runs required for the victory. The over number, just the second is in progress. The match is evenly poised. This is going to be anybody's game. Last match of the day, number 1 of this prestigious Kulai Premier League 2023 Season 5. Tazuddin again. Right arm over the wicket, dead goes. This time nicely driven there by Naufal. Naufal looking so confident, of course. It's really the brave and gutsy batsman. Any condition is never looks like what the condition is in the middle, but he will go into play his own natural stroke making. The fearless, absolutely fearless batting. 11 on the board. Tazuddin. Right arm over the wicket bounce. This time again pushes the ball, allow the ball to coming into his bat, and a straight bat. Both the batsmen are implementing that straight bat very well. Because knows that Tazuddin has got ability of bringing the ball from outside the line of off stump. And so far, both the batsmen are doing a good job in the second over as well. And scoreboard is 12 on the board for the loss of 3 wickets back into pavilion. 3 wickets in 1 over. This time is gone, bowled him. There's a huge wicket for Tazuddin. Naufal departs. Because of that wicket, I think the team Sri Hari friends are back into this game.
Thank you. Tazuddin really got a huge wicket. Wicket of Naufal is back into pavilion. He wanted to play the slog sweep shot against the turning delivery. Pays the penalty for that. And Tazuddin hits the stumps. Oh, one more good delivery indeed. Posting the batsman onto the back foot. Lick it off the back foot. Plays it down region for a single. Overs completed. Completion of over number 2. Chasing total score of 42 to win this match. And looks like Royal Strikers are right track of winning this match. 13 for the loss of 4 wickets. The problem here for them is they lost 4 wickets, but they got good runs on the board. So in remaining 5 overs, I want to see how many runs they wanted to get. 29 to get in the remaining 30 balls. That means match is evenly poised. This is going to be a very crucial moment for the match because Bajal will go to ball his last over of his quarter after picking up 3 valuable wickets in his first over. Can he able to produce 1 or 2 breakthroughs in this over? If he able to produce a breakthrough, then I think it's going to be a Sri Hari friends opportunity to win this match because in this condition, scoring run is not so easy and the light condition is slowly. Looking on, it's gone, it's gone. That's what I mentioned about. This is going to be a crucial over. And Arshad Bajal picked up his 4th wicket. The 5 wickets back into pavilion. It's a 13 for the loss of 5 wicket. Strikers are looking in a deep, deep trouble. So Bajal is having a good time here. Another 1,000 rupees which is announced for Arshad Bajal. Total 2,000 into the pocket of Arshad Bajal. He's on fire this time again. Ball is looking like a chance of run out into the seconds and umpire says not out, rightly so. Leg by call by umpire. So Nikhil Shetty, the owner of Sri Hari Friends, announcing another 1,000 rupees for Arshad Bajal. So 2,000 already into the pocket, but more than anything else, I think Arshad Bajal wanted to win the match for his team. The 5 wickets which is back into pavilion, and Arshad Bajal is in looking in attacking mood as far as the bowling is concerned. This is some attacking the wicket of their opposition. Arshad again in this particular over to Prakash. This time one more ball, cleaned him up, drags the ball into the stumps. 5th wicket is back into pavilion. 5th wicket for Arshad Bajal, and he is looking completely control over in this particular over. 5 wickets for Arshad Bajal. So 14 for the loss of 6 wicket. Out of that 6 wickets, 5 wickets for Arshad Bajal. 3 wickets in the first over, 2 wickets in the second over. And looks like he's wanted to complete the job for this team. And the team owner must be pleased with the performance of Arshad Bajal because a 5 wickets hold is always going to be a great achievement. The Pratap is the one who got 6 wickets in one match. And can he able to level the records here of getting 6 wickets in one match? And Arshad Bajal still they got opportunity because another 2 deliveries to spare.
Again, driven that one nicely down to deep long on region for a single by Kiran. So with that single, Skobana moves on to 15 on the board. 15 for the loss of 6 wickets. Back into pavilion, the over number 3 is in progress. Still, it's a long way to go. The 42 runs is going to be a target. 15 runs on the board, but nothing much worried about the run rate. But they lost 6 valuable wickets back into pavilion. Ashad, left arm, round the wicket, defensively played. That was a good thinking by the batter's point of view, seeing that Ashad Bajal has got only one deliveries to spare. Why not to play that defensively? And now Lokesh and Lekak and Kiran have to anchor the innings. Again, one more sharp incoming delivery and defended very well. Fantastic over is comes in and 2 wickets in that over. After completion of over number 3, chasing 42 to win this match. Still Royal Strikers are struggling in the middle. It's a 15 for the loss of 6 wicket. 4 overs remaining and wait and see. And in this 4 overs, 24 deliveries remaining. They have to get another 27 more runs required for the victory in remaining 4 overs, having just 4 wickets in hand before the next over going to start. It's going to be a change in committee box. It's over to Gopi. Final time in the day number 1 of this prestigious Kulai Premier League Season 5. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त absolutely a struggling time continuing here for the batsmen of Royal Strikers. They managed to score only 15 runs on the board in their first 3 overs. 3.1 overs gone in fact. और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो ये गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई 22 गेंदें बाकी हैं, 27 रन चाहिए. 27 more to get in remaining 22 deliveries and just they got 4 wickets kept intact. So that is the main problem for them at this situation. और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त. गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद निकली मिड ऑफ की दिशा में और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा हो चुका है. 16 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड 26 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 21 डिलीवरीज. फील्डिंग में जमावट यहाँ पर कुछ हद तक करने के बाद गेंदबाज लतीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल. गेंद पहुंची स्लिप डाउन पर, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन हर्षद बजाल ने दिया. 5 विकेटें उन्होंने प्राप्त किया और उसकी बदौलत इस वक्त रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करता हुआ रॉयल स्ट्राइकर्स. ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऑन इस फॉलो थ्रू, लेकिन बल्लेबाज इससे पहले अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे इससे पहले कि विकेट चटकाए जाते गेंदबाज द्वारा बेहतर तरीके से. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रन. बेहतरीन तरीके से विकेट इस वक्त चटकाए थे गेंदबाज ने. अगली गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को खेला इस वक्त, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की दिशा में. 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. दूसरा रन भी पूरा यहाँ पर कर चुके हैं और इस बीच 1 शॉट का इशारा अंपायर द्वारा. सिर्फ 1 रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर और कुल मिलाकर ओवर नंबर 4 की संपूर्णति हो चुकी है. 4 overs completed, 17 runs on the board, 6 wicket lost and 25 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs and the asking run rate is now gone up to exactly 8.33 runs per over at this situation. Quite difficult but not impossible and they got just 4 wickets in their hand at this situation. तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज बालाकृष्णा और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. मैच नंबर 8 केपीएल कुलाई प्रीमियर लीग सीजन 5 2023 के अंतर्गत खेला जाता हुआ सेट वैल्यू टाइटल स्पॉन्सर इस श्रृंखला के हर मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए इस वक्त मोबाइल के रूप में हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का इनाम उन्होंने दिया है. तो इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त बॉडी स्लॉन्ग ऑफ की दिशा में. रिटायर्ड हर्ट के रूप में यहाँ पर एक बल्लेबाज इस वक्त
पेविलियन वापस लौट चुके हैं। तो यहाँ पर बल्लेबाज लेखक जो कि रिटायर्ड हर्ट के रूप में पेविलियन वापस लौट चुके हैं और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार था। हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी, गेंद को इस वक्त ड्राइव किया लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट। गेंद पहुंचे बैक टू द बॉलर के दिशा में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। 18 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, चूंकि एक बार फिर से गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। एब्सोल्युटली गुड पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम बालाकृष्णा। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर ऑफ, नॉट सक्सीडेड, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला। इस बीच बल्ले के भीतरी किनारे पर गेंद टकराई थी, एक रन का इजाफा। रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए 19 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और 23 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 14 डिलीवरीज। इस बार गेंद को खेलना चाहता लेकिन गेंद को खेला इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर और एक रन के साथ फिर से बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 20 नाउ द स्कोर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। गेंदबाज बालाकृष्णा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद उछाला खूबसूरती के साथ लेकिन गेंद डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में चंद टिप्पों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसेस वो गेंद को फील्ड करते हुए और सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, 21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 overs for Royal Strikers. Still 21 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs and the required run rate is now gone up to exactly 10.5 runs per over at this situation for Royal Strikers. और इस वक्त ऐसा एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन श्रीहरि के गेंदबाज अब तक उन्होंने दिया है पहले 5 ओवर में और उस 41 रन जो उनके बल्लेबाजों ने बनाए थे उस स्कोर का समर्थन करते हुए इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी पहले 5 ओवर में की है। लेकिन अभी भी उनका काम तमाम नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है। 2 ओवर का खेल बाकी है और 2 ओवर में देखते हैं गेंदबाज उस सफलता के सिलसिले को वो बरकरार रख पाएंगे जो उन्होंने अपने 5 ओवर में पहले 5 ओवर में किया है। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिना तो द विकेट उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, चूंकि इस वक्त अपील जरूर लेकिन अंपायर ने नकार दिया क्योंकि गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती है और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 22 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड 20 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 10 deliveries. Quite in fact the equation seems to be more difficult now. और छक्के और चौकों की इस वक्त सख्त जरूरत इस मैच में कम बैक करने के लिए। चिप किया इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन यहाँ पर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 19 मोर रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 9 deliveries. और गेंदबाज अपने और की अगली गेंद लेकर तैयार, लतेश, ये गेंद ड्राइव किया, इस बार स्ट्रोक में रफ्तार जरूर था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं है। सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है, गेंद का पीछा करते हुए इस वक्त फील्डर 1 रन मिलेगा और दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल सकेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। तो कुल मिलाकर 7 गेंदें बाकी हैं अब और रन्स चाहिए 17 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 7 deliveries. इस ओवर में अंतिम बार लतेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव, नॉट सक्सीडेड, इन फैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल थ्रो केम फ्रॉम अर्शद लेकिन इस बार इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो यहां पर देखना यह है कि जब विकेटें चटकाए गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो देखते हैं तृतीय अंपायर यहां पर क्या निर्धार देते हैं।
Not out is the call from the third umpire and the batsman survived. Single run added to the total in the face of leg by. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर. Sixth over has been came to an end. 16 runs required in the last over. लगभग अंधेरा सा यहाँ पर छाता हुआ और शाम के 6:45 बज चुके. ऑलरेडी 6 इन द इवनिंग और अंतिम ओवर आज का यहाँ पर शुरू होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. इस बार गेंद को उछाला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं रॉयल स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज. तो चरण के बल्ले से यह छक्का लग चुका है और इस छक्के के साथ वो इस वक्त रॉयल स्ट्राइकर्स के आशाओं को बरकरार रख चुके. 10 रन चाहिए, अब गेंदें बाकी है 5 और स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर. रोशन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद पर ड्राइव करने में चूके. इस बार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन भी नहीं मिलेगा. एक और छक्का निस्संदेह यहाँ पर रॉयल स्ट्राइकर्स को पूरी तरह इस मैच में वापिस ला सकता है. फिलहाल डॉट गेंदों की सख्त जरूरत है गेंदबाज के लिए. दाहिना तो बढ़ता विकेट. यह गेंद इस बार टॉप गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. बेहतरीन कमबैक कर चुके इस वक्त तक गेंदबाज. तो 3 गेंदें बाकी और रन चाहिए 10. एक बेहतर पारी, छोटी मगर बेहतर पारी की समाप्ति हो चुकी है चरण की और 10 रन उन्होंने बनाए और 3 गेंदों में 10 रन चाहिए. अब ऐसा कहना पड़ेगा छक्के या चौके ही रॉयल स्ट्राइकर्स को इस मैच में वापस ला सकता है. ये गेंद बॉल्ड आउट. फैंटास्टिक कमबैक आफ्टर बीइंग कंसीडिंग a 6. द बॉलर bowled 3 consecutive dot deliveries and he's got 2 wickets for that. Absolutely fantastic comeback from the bowler and now 10 required of 2 balls. All the committee members. So 2 balls 10 runs. I request all the committee members of Kulai Premier League please to be reported here to contact the organizers. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನ वालंटियर्स दयविಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ संपर्किसಬೇಕಾಗಿ विनंती. इस बार गेंद को खेला विकेट चटकाए गए लेकिन बल्लेबाज इस बीच 2 रन प्राप्त कर चुके हैं. So a couple of runs now added to their total. 34 the score, 8 required. और अगर अंतिम गेंद में गेंदबाज कोई चौका या छक्का ना फेंकते हैं, गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना प्रदान करते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर उनकी विजय यहाँ पर निश्चित है. तो यहाँ पर अंतिम गेंद में गेंदबाज को कोई वाइड या नो बॉल ना फेंकना होगा. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का रॉयल स्ट्राइकर्स का, तो इस वक्त वो उम्मीद कर रहे हैं कि गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड यहाँ पर फेंके. देखते हैं इस अंतिम गेंद पर क्या होता है. लास्ट बॉल 8 रन, 7 for tie, 8 for victory. Just gone for love, not succeeded, not quite middling it, just a single. That's it. 6 runs, thrilling victory for Sri Hari friends against Royal Strikers in the 8th and final match of the day number 1 of Kulai Premier League 2023. I request man of the match of this match, Arshad Bajal, who picked up 5 wickets in his bowling and also he contributed 9 runs from the bat and 10 runs he scored from 5 deliveries and because of this all-rounding performance he bagged the man of the match award. I request Arshad Bajal to please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. So all the matches of day number 1 has been over. Day number 2